What a start! What a start! My mute में था मैं. Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. और वही कॉमेडी के साथ भाई हमें लेना पड़ेगा because I know it is kind of heartbreaking for of course Asian fans. जो देखिए अभी we all know that Japan is out of the World Cup. Yes, Japan is out. बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था बट यार होप्स विद साउथ कोरिया और यू वुड से नहीं यार कम ऑन ब्राजील तो और होना चाहिए. इट वाज द लाटर स्टेज ऑफ द वर्ल्ड कप. तो इट्स काइंड ऑफ मिक्स्ड फीलिंग्स. आई डोंट नो अभी व्हाट डू यू ऑल आई नो क्या बोल रहे हो. डेफिनेटली बताना यार आपको क्या लग रहा है कि यार एशिया से दो बार हो गए. नॉर्थ अमेरिका से आई थिंक देयर इज नो टीम लेफ्ट. अफ्रीका से जहां तक मुझे याद है मोरक्को इज ओनली टीम लेफ्ट. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. प्रीटी श्योर आई एम करेक्ट. लेकिन anyway unless I'm missing something. लेकिन हाँ पुदिन हेलो यार कैसे हो. नाइस टू सी अगेन ऑलवेज भाई. मच लव टू ऑल द मेंबर्स एंड मॉड्स जर स्पेशली जो हमें ज्वाइन करते हैं फॉर unginet number of streams यार. Again for me it's like you guys are my friends and it's an almighty fam. Or we got to discuss a lot of things. ब्राजील बोल रहे हैं 100% यार. लेकिन क्या बोल रहे हो यार साउथ कोरिया भी बाहर चल जाए तो एशिया का हाउ विल एशियन फुटबॉल गो टू द नेक्स्ट लेवल. एक होता है ना किक मिलता है विद अस गोइंग टू क्वार्टर फाइनल्स अगेन. बट आई एम जस्ट सेइंग लाइक ब्राजील ऑल्सो डीप डाउन मैं ये भी बोलना चाहूंगा. देखिए आई एम ऑल्सो नेदरलैंड्स फैन. यू ऑल नो दैट. एवरीवन हु वॉचेस द चैनल रेगुलरली नो दैट आई एम अ नेदरलैंड्स फैन. और कहीं ना कहीं मुझे लगता है दैट बाई चांस अगर हम अर्जेंटीना को बीट कर लेते हैं देन वी विल गो एंड बीट ब्राजील. एंड दैट इज व्हाई आई वोंट माइंड अगर ब्राजील नहीं करती. दैट्स जस्ट मी. बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट ब्राजील्स लाइनअप. बिकॉज ब्रेकिंग न्यूज. और हाँ भाई अभी तक पता रहेगा आप लोगों को लेकिन प्रिटी श्योर भाई नेमार स्टार्टिंग. मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन यार इसलिए हमने डाला है नेमार को थंबनेल में. योर थॉट्स ऑन जिल्बर्टो सिल्वा. उस पर डिटेल में भी आएंगे. ऑनेस्टली जिल्बर्टो सिल्वा was that kind of guy जो he did the simple things very well. ऐसा कोई फ्लैशी नहीं था. सिंपल थिंग्स वेरी वेल. और वो बहुत ही डिफिकल्ट है समटाइम्स टू फाइंड इन द मिडफील्डर. आज के दिन में पीपल वांट फ्लैशी, पीपल वांट दैट हॉलीवुड पास, बट ही वाज अ ग्रेट प्लेयर इन टर्म्स ऑफ हिज एफिशिएंसी. इट्स स्टूपिड टू प्ले नेमार एंड रिस्क हिम अभी वर्सेस साउथ कोरिया. बट मुझे पता नहीं मे बी इट्स अ लार्जर प्लान. हो सकता है नेमार वाज बेटर. हु नोज. हमने देखा था फोटोग्राफ दैट वाज अबाउट अ वीक अगो. मे बी ही इज बेटर नाउ. आई डोंट नो. आई एम जस्ट सेइंग आई नो काफी ज्यादा रिकवरी है if that's the case. बट और अदर वे अराउंड टीटे सोच रहे हैं एंड नेमार सोच रहे हैं दैट व्हाई डोंट वी गिव पॉजिटिविटी टू आवर टीम. स्टार्ट नेमार, गेट हिम ऑफ आफ्टर 60 मिनट्स आफ्टर गेटिंग अ 2 गोल लीड. आई एम जस्ट सेइंग there are two ways of looking at it. Although मैं अग्री करता हूँ वर्ल्ड कप में why would you risk in a round of 16 if you're Brazil. I don't know. Especially नेमार जो मिस कर चुके हैं इन द पास्ट मेजर सेमीफाइनल. जापान एंड कोरिया सेम. दे हैव पेस बट एक्सपीरियंस नॉट. भाई लेकिन आई थिंक कोरिया में एक मतलब वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप 30 में टॉप 20 में बोलूंगा यार. बैलन दो नॉमिनेशन तो थे यार. ह्यूमिन सॉन. Is it not a major difference? I think it may just be because remember right back. I know Brazil play in the system जहां पर 3 the back हो जाते हैं auxiliary आपके right wing back होते हैं but कहीं ना कहीं वो स्पेस क्रिएट हो सकता है फॉर ऑन. जस्ट सेइंग. हेलो ईशान कैसे हो भाई. एक एशियन टीम क्वार्टर रीच कर दे तो मजा आ सकता है. नाउ दैट गैब्रियल हेसुस इज इंजर्ड ब्राजील विल मिस फर्मिनो इवन मोर. मानव बिल्कुल. आई थिंक एज मच एज पेड्रो हैज बीन स्कोरिंग गोल्स आई बिलीव यार वो जो एक्सपीरियंस आता है ना फर्मिनो के साथ और ऑफ कोर्स एक एडेप्टेबिलिटी आता है फॉर हिम टू प्ले इन द नंबर 10 रोल एज वेल एज एग्जैक्टली. बहुत ही बढ़िया पॉइंट है मानव का. as always Manav, again great to see you bro. Always kind of supporting the channel. I hope you do so always and everyone else as well. भाई सब लोग साथ साथ में लाइक भी दबा दीजिए. मैं यहाँ पर लाइनअप डाल रहा हूँ ऑन स्क्रीन. बाई चांस आपने नहीं चेक किया है बिकॉज यस भाई बवाल तो मचा है भाई. वैंग इज स्टार्टिंग. वैंग आफ्टर लास्ट गेम सबको पता है ही गॉट द विनर अगेंस्ट पोर्चुगल which has gotten them to this point. South Korea in the round of 16 और Wang of Wolves is starting. लेकिन breaking news obviously is this guy Neymar भाई. Neymar is starting और Richarlison, Rafinha, Vinicius, Casemiro, Paqueta very much expected. बहुत ही settled lineup है. Marquinhos, Silva, Danilo और Militao. हाँ मे बी आप बोल सकते थे कि यार बिकॉज इट्स अ सॉन वन ऑन वन में करते ज्यादा अच्छा तो मे बी आप लेते रेगुलर फुल बैक. लेकिन डानी एल्वेज ज्यादा अटैकिंग हो जाते हुए स्पेस देता सॉन को. अभी देखते हैं मिलिटाओ माइट बी स्टेइंग बैक और दनीलो को बोला गया यू गो फॉरवर्ड. अगेन अलेक्जेंडर नॉट 100% फिट इसलिए वो नहीं खेल रहे बट ऑब्वियस है. लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है दैट South Korea have not really changed but have they in terms of the formation. Again 5 games. Cho, Son, Lee, Wang is the only change that I'm seeing. Again bench में देखा तो किसका bench strong है. No competition at all.
और वहीं पर मुझे लगता है ब्राजील ले लेगी. आई थिंक सेकंड हाफ में यू विल गेट अ विनर फ्रॉम ब्राजील. अगेन मैं स्कोर में आऊंगा व्हेन इट्स क्लोजर टू द किक ऑफ टाइम. आप लोग बोलिए मीनवाइल क्या लग रहा है आप लोग को. आज आज इस वर्ल्ड का अच्छा मैच होगा. वर्ल्ड कप का यू मीन. ओके, Danilo playing left back, right back? I'm confused. He's playing left back, bro. He's playing left back. Definitely there is a possibility that they go through the back with maybe Silva, Marquinhos and Militao. Rafinha playing wing back, Danilo playing wing back. वो possibility है in between the game based on the position, based on the lack of creation. थोड़ा change कर सकते हैं. लेकिन I think they'll start as मैंने दिखाया था पुदिन. Prediction League भाई, प्रेडिक्शन लीग मानव. मानव एक्चुअली आपने मिस कर दिया क्या? पता नहीं आपने मिस कर दिया कि नहीं. प्रेडिक्टर कॉन्टेस्ट हो रहा है भाई, गिव अवे हो रहा है. मानव ने नहीं किया भाई. अगेन मैं यहाँ पर जो भी लोग है ना भाई, प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. ठीक है, मैंने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट डाला है इन एसोसिएशन sportshub.in और इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. नो इन्वेस्टमेंट. आपको क्या क्या करना है, खाली आपके जिंदगी का 30 सेकंड देना है आपको. और ये आप लोग के लिए भाई, आप लोग गिव अवे चाह रहे थे. एंड इसलिए मैं इंस्टेड ऑफ अ प्रेडिक्शन लीग फॉर द वर्ल्ड कप, I have gotten someone who's agreed to get a predictors contest. तो भाई I was hoping for a lot of entries. वहां पर बहुत ही कम entries है as of now. तो I don't know. I know I've got some feedback, but meanwhile भाई बाकी लोग, ये एक पोस्ट है इंस्टाग्राम में मैंने किया था 2 दिन पहले. आप लोग देखिए. आप बहुत ही सिंपल प्रोसीजर. ऑल यू हैव टू डू इज विद दिस पोस्ट. मैं आपको शेयर नहीं कर रहा और अपने आप बोल रहा हूँ वापस से. लेट मी जस्ट शेयर इट. तो ये वाला पोस्ट है भाई, आप देखिए. एक्चुअली ये वाला देखिए पोस्ट ऐसा दिखेगा आपको. तो ये वाला पोस्ट में ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गो एंड लुक एट द सेकंड पिक्चर. 2 ही पिक्चर्स है और यू हैव टू ऐड दिस टू योर स्टोरी और पुट इन, जस्ट टाइप इन योर विनर, रनर अप एंड थर्ड प्रेडिक्शन इन द वर्ल्ड कप. ठीक है, वो एंट्री शुड बी गोइंग आइडियली इन दिस वीक. क्योंकि ऑब्वियसली बिफोर द फाइनल विल ट्राई एंड अनाउंस दैट. तो भाई क्या बोलते हो, और रादर आफ्टर द फाइनल. लेकिन उससे पहले सब लोग कर लीजिए भाई. आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, मानव एंड एवरीवन यार जो है, इन्वॉल्व करिए अपने आप को. डेफिनेटली it will help me as well as you to get a jersey. Look at the front three. Oof. Anmoldeep, bilkul. Do you expect absolute domination today? No, I don't. I don't expect absolute domination in any game. मतलब, would you say England absolutely dominated Senegal? I don't think so. 15 minute पहला में it was a 50-50 and then England dominated Senegal. So I would say that knowing that जो हुआ था Senegal के साथ, knowing that जो हुआ था USA के साथ, especially towards that middle part of the match, मुझे लगता है that South Korea will be better prepared. Also अब knowing कि जापान बाहर है, प्रेशर तो है यार एशिया कंट्री के लिए. प्रेशर तो है, लेकिन मेरे ख्याल से रहेगा. अगेन साउथ कोरिया याद रखिए, दे हैव डन वेल प्रीवियसली इन 2002. So maybe some inspiration from there. Goose Hiddink, of course, Eric's Chelsea manager and Dutch manager as well. आपके हिसाब से फ्रंट थ्री क्या है? भाई जो दिखाया था वही है. अगेन मैं दिखा लेता हूँ यहाँ पर क्लियरली. To be honest, I can see Richarlison, Vinicius and Rafinha there. Neymar kind of being the floater behind. यही लग रहा है मुझे. Brazil, yes, France also. Okay, if Brazil are 2-0 up in the 60th minute, Bruno Guimaraes or Rodrigo should be tried as the number 10, subbing Neymar off. In fact, हाँ 100%. मैं तो बोलता हूँ 60 minutes भी क्यों. अगर by chance 2-0 है and half time, I would consider taking off Neymar because you don't want to risk Neymar. Honestly, as much as आप बोलोगे यार you can do without Neymar, you definitely want Neymar. Again, by everyone watching, please hit that like button. मैंने एक्चुअली शेयर किया कम्युनिटी पोस्ट ऑफ ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस. तो अगर आप वो चैनल में सब्सक्राइब भी कर सके, अगर नहीं किया, और वो लाइक कर सके तो बढ़िया है. एज वेल एज भाई इंस्टाग्राम पोस्ट. हाँ भाई मानव कर देना यार. भाई सब लोग do put in that story यार. It's just a prediction. Come on, you can do that for me. Absolutely नहीं. And of course for yourself to get a jersey. More than anything. There's no investment. जापान टीम नर्वस हो गई पेनल्टी में, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं शूट लिया, ना प्लेसमेंट ना पावर. इनफैक्ट मैं बोलना चाहूंगा दैट कहीं ना एक सेकेंड, मैं क्या कर दिया, एक सेकेंड रुकिए. बट मैं गलती से लीव स्टूडियो करने वाला था. ये हो गया भाई जापान का नर्वस एनर्जी मेरे पर आ रही है, बट कोई नहीं. यहाँ पर देखिए जापान का मैं देखना चाहूंगा. Again, for people who missed it, it was obviously 1-3 in penalties, 1-1 in normal time and extra time as well. देखो मिनामिनो मिटोमा मिसिंग, substitute missing for attackers who naturally, मतलब आप बोलोगे that you would expect them, लेकिन that is what you say. Sometimes I know it's a long game, tired legs थे, जापान टायर्ड लग रहे थे, लेकिन आप टायर्ड नहीं बोल सकते हो. मिनामिनो मिटोमा असानो तीनों ही आए थे, जस्ट योशिदा मे बी. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है that is always better to have people who are fit and fresh in the starting 11 on the pitch already. जो है वो लोग
खेले, दैट इज ऑलवेज माय ओपिनियन। आई नो दैट मिनो मिटोमा असानो जस्ट अबाउट नहीं आए थे, वो खेले थे कुछ मिनट्स, बट आई थिंक मे बी दे वर नॉट इवन इन दैट एक फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं थे। लेकिन हाँ, क्रोएशिया मैन बोलना पड़ेगा, व्लासिच, ब्रोजोविच, लिवाजा, पैसेलिच, भाई दे आर प्रॉब्ली एक्सपीरियंस्ड एट द बिगर स्टेज इन द टॉप मोस्ट से प्रेशर लेवल नहीं। अभी मानव, ओके, आई थिंक कोरिया इज गोइंग टू लूज हेवीली 3-0। ओके, बेस्ट फ्रंट थ्री, ओके, बेस्ट फ्रंट थ्री ऑफ दिस वर्ल्ड कप क्या है? ओके, नाउ आई गॉट इट। अनमोलदीप क्या पूछ रहे हो? मैं बोला यार लाइनअप तो वही है, कुछ चेंज नहीं करेंगे, लेकिन बेस्ट फ्रंट थ्री ऑफ दिस वर्ल्ड कप, तो आई वुड हैव टू गो विद, मतलब अगर आप सब टीम जुड़ा जुड़ा के बोल रहे हो, तो आई थिंक प्रॉब्ली एम्बापे, गैक्पो एंड मे बी आई डोंट नो हु इज द थर्ड, मे बी जिरू। मैं तो बोलता हूँ व्हाई नॉट। लेकिन ऑनेस्टली अगर आप खाली कंट्री के एक कंट्री का पिक करने को बोल रहे हो, मैं तो बोल रहा हूँ फ्रांस। फ्रांस हैज टू बेस्ट फ्रंट थ्री, डेम्बेले, जिरू एंड एम्बापे। आई बिलीव सो दे आर द फ्रंट, एज मच एज इंग्लैंड भी काफी अच्छी है, लेकिन आई थिंक आई विल गो विद फ्रांस। अर्जेंटीना फ्रंट थ्री भाई नॉट रियली सो कन्विंसिंग। सेम थिंग ब्राजील का, रिचार्लिसन बहुत बढ़िया गोल था भाई, गोल ऑफ द टूर्नामेंट यू कैन ऑलमोस्ट से, लेकिन अगेन हैज रफीनिया रियली लिट अप? कुछ भी नहीं, नॉट रियली फॉर मी। विनिशियस जूनियर अच्छा रहे। 5-1 बोल रहे हैं वन बस, 3-0 बोल रहे हैं पुदिन, 3-2 बोल रहे हैं अरिजीत। अभिजीत नाइस टू सी यार, बारसा ब्रोज हाउ आर यू? 3-1 ब्राजील, ब्राजील 2-1 जोहेब, मानव 3-1 बोल रहे थे, ठीक है। एम्बापे, मोराटा एंड मेसी। हाँ मोराटा, वाओ भाई, मेसी को तो होल में डालेंगे ना नीचे पीछे। आई आई वोंट पुट हिम ऑन टॉप यार, मतलब मेसी इज ऑब्वियसली इंक्लूडेड फॉर मी आल्सो, कम ऑन। हाँ, नहीं, लेकिन वो ही मस्ट बी इन द होल, ही मस्ट बी इन द नेमार रोल ऑफ ब्राजील, नो? वो रोल इज बेस्ट फॉर हिम राइट नाउ इन माय ओपिनियन, बट एनीवे, एम्बापे, राशफोर्ड एंड मेसी। ओके, आप मेसी को डाल रहे हो फ्रंट थ्री में, चलो। मैं तो मेसी को डालूंगा गोल्डन बॉल कॉन्वर्सेशन में, आई डोंट नो, लेट्स सी भाई, लेट मी सी, आई थिंक वी आर हैविंग, ओके, let me just message me my panel members, no problem, let me see, एक सेकंड, एक सेकंड दीजिए मुझे, मैसेज करो भाई। चलो, वो लोग ज्वाइन ही कर रहे हैं, आई बिलीव सो। Japanese manager confirms the players watched Lionel Messi's penalties before the penalty shootout. नेमार जूनियर बहुत ही नॉटी हो आप, बहुत ही नॉटी हो। दैट वाज नॉट दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, बट एनीवे कोई नहीं, दैट इज व्हाट इट इज एब्सोल्युटली। बट लेट्स सी, भैया मस्त होकर आया, लास्ट गेम तो बेकार हो गया हर्षल। ऑनेस्टली एक मोमेंट था ना फर्स्ट हाफ के, लाइक टुवर्ड्स द एंड, जब गोल हुआ उसके जस्ट पहले से, एंड सेकंड हाफ में जब गोल हुआ उसके जस्ट 10 मिनट बाद में, वो एक समय था ना हाफ एन आवर का, जो बहुत ही अच्छा गेम था वो। लेकिन उसके अलावा फिनिशिंग क्वालिटी प्रॉब्लम थी यार। मतलब मैं तो बोलता हूँ दैट जापान शुड हैव गॉन थ्रू, क्रोएशिया यार जो भी इस गेम में जीतेगा ना, वो क्वार्टर फाइनल भी जीतेगा मेरे ख्याल से। आई एम टेलिंग यू, एंड ऑब्वियसली इट लुक्स लाइक ब्राजील इटसेल्फ। मेसी की बेइज्जती है या तारीफ थी यार, ये इट वाज अ पन इंटेंडेड पुदिन बट कोई नहीं। बट अगेन यार, मतलब आप लोग क्या बोलोगे इन टर्म्स ऑफ एशियन फुटबॉल, लाइक व्हाट इज मिसिंग, व्हाट इज मिसिंग? क्योंकि जापान का टीम मैं देख रहा हूँ, आई नो हम ब्राजील का हम बात करेंगे और इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स एंड व्हाट नॉट, जस्ट गिव मी अ कपल ऑफ मिनट। लेकिन जापान का अगर मैं क्विकली में दिखाता हूँ, आई जस्ट शो यू द स्टार्टिंग लाइनअप, मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्यों बोल रहा हूँ, मतलब व्हाट इज मिसिंग? एक्सपीरियंस, आई डोंट नो भाई। सेल्टिक, ठीक है, फ्रैंकफर्ट, ठीक है, स्पोर्टिंग, स्टुटगार्ट, फ्राइबर्ग, रेम्स, आर्सेनल, शाल्का, भाई ओनली वन नाउ जापानीज लीग, टू, ये भी नागाटामो वाज अ इंटर मिलान लेजेंड ब्रो, यू कैन से गोंडा, भाई ओनली दो लोग हैं भाई जो जापानीज लीग में खेल रहे हो, वो भी इतना बुरा नहीं है compared to even Croatia. I know they are playing either in Croatia or maybe in other parts of Europe, और चैंपियंस लीग खेलने को मिल रहा है। दैट इज मे बी द डिफरेंस between Croatia and Japan. बट पेरिसिच, भाई पेरिसिच becomes I think डावर सुकर को, भाई ही इज रिकॉर्ड स्कोरर नाउ, पेरिसिच फॉर क्रोएशिया इन वर्ल्ड कप्स, दैट्स ग्रेट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट दैट। नेमार इज द न्यू हेयरकट, ओके। अल्वारेज, साका, एम्बापे बेस्ट यंग फ्रंट थ्री, okay, Saka, yeah, high pressure Japan, great team. Ronaldo, Mbappe, Vinicius Junior. एक सेकेंड, जोहेब आप रोनाल्डो को डालो? रोनाल्डो ने क्या किया है भाई? ऑल ऑल लव एंड रेस्पेक्ट यू ब्रो, रोनाल्डो ने क्या किया इस वर्ल्ड कप में? प्लीज रिमाइंड मी।
I don't know, maybe it's just love for Ronaldo, maybe, or I miss something. As much as I would, मैं खुद बोला हूँ कि Portugal, मेरा gut feeling है they might go on to the win the World Cup. But again, I would want him to do well. I don't think he's done well. That's the truth. Uh, नहीं तो टाइपो है तो बोल दीजिए यार. Finishing and pressure taking is missing. ओके, जापान इनएक्सपीरियंस पेनल्टीज, हाँ वही है. आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है दे डिड नॉट मेंटली प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर पेनल्टीज. वो लग रहा था दो चांसेस मिल रहे थे फर्स्ट हाफ में. दे डिड नॉट प्लान वेल फॉर द पेनल्टीज, इवन द सब्स्टिट्यूशंस, द वे इट हैज नॉट वर्क फॉर जापान वर्सेस द वे इट हैज वर्क क्रोएशिया के लिए. यू हैव टू गिव इट टू क्रोएशिया कोच कहीं ना कहीं. और वही है, प्रेशर मोमेंट्स में ज्यादा एक्सपीरियंस है उनको क्रोएशिया का वर्सेस मे बी अ जापान. बट अगेन कमिंग टू ब्राजील एंड कोरिया, भाई अगेन भाई जो भी लोग देख रहे हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट for watching, because you believe that I know at least a little bit of football, having seen 28 years of football. That's great to know. And at the same time भाई अच्छा लगता है जब आप लोग हमसे बात करते हैं. एब्सोल्युटली. एंड अगेन हमारे पास कितने 6400 सब्सक्राइबर्स है. होपफुली हमारे पास 7000 भी हो जाए, और उन 7000 सब्सक्राइबर्स जो होंगे, आई होप दैट इन फ्यूचर स्ट्रीम्स इवन यूट्यूब हेल्प्स अस, एंड यू गाइस कैन हेल्प अस बाय लाइकिंग द स्ट्रीम एंड शेयरिंग इट, सो दैट हमें भी वॉचिंग मिले यार. व्हाई नॉट, एज इन मे बी 700 लोग साथ में देख रहे हैं, because I believe so that I definitely know so much of football, as even if I don't know, the fact is यार we have subscribers who believe in me, hopeful. वो आप definitely share करिए feedback. Meanwhile, do let me know about this Brazil side यार, for people who are joining late. आपके thoughts क्या है? Let me know on that. चलो, I'm just seeing यहाँ पर my guests are going to come in any moment. ओके, इसको बेस्ट पेनल्टी इन वर्ल्ड कप एंड अदर साइड मेसी मिस पेनल्टी. यार नेमार जूनियर भाई, पेनल्टीज खाली नहीं होती भाई फुटबॉल. आप, आई नो दैट यू आर कम हियर बेसिकली टू गिव सम हेट टू मेसी, बट इट्स नॉट गोना वर्क लाइक दैट. यार मैं आई एम नॉट अ मेसी स्टैन, ठीक है, एंड आई वेलकम एवरीवन द स्ट्रीम. इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी. बट आप आकर बेसिकली यार ये बैंटर करेंगे. बैंटर इज फाइन, जबरदस्ती वाला बैंटर ना. आप मेसी का मिस पेनल्टी देख रहे हो, आप मेसी का परफॉर्मेंस देखे हो? प्लीज टेल मी, कोई भी है, आप मेरे को बोले यार. एक तो आपके ना, मतलब नकली नाम से और आपके कमेंट से मुझे नहीं लग रहा कि यार आप बेसिकली फुटबॉल देखे भी हो थोड़ा बहुत, ठीक है. अगर आप देखे हो तब बेसिकली आई डोंट थिंक यू हैव इवन सीन द गोट्स, ठीक है, लाइव एज मच एज पॉसिबल. और मुझे मालूम है दैट ये जो कमेंट आ रहा है ना अभी, ये जबरदस्ती इज नेक पिकिंग. इट्स नॉट रिक्वायर्ड दीज थिंग्स आर विच वो हेट को बढ़ावा देती है. तो ये सब चीज जरूरत नहीं है भाई. अभी बैंटर इज फाइन. ऐसा परफॉर्मेंस जो मेसी ने किया भाई, मैं मेस्मराइज हो गया था, इवन नॉट बीइंग अ मेसी स्टैन. सो यू हैव टू गिव इट टू द गाय, कम ऑन. ही हैज बीन द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड कप पीरियड, ठीक है. आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट, नेमार जूनियर. लेट्स गेट इट राइट. Croatia weren't convincing at all. They have not been creating enough chances. Neither they were able to score goals. In fact, if it wasn't for Lukaku's poor show, Croatia would have been eliminated in group stage. Um, Croatia honestly बहुत, मतलब लकी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन it's just the fact that they know how to win matches ugly. और कभी ना कभी in tournament football it's not too bad. I can remember of Greece winning the 2004 Euros. That is something that I really believe. Pritam in the house, love and respect to you as well. Much love to you. But हाँ, going by this lineup, आपको क्या लग रहा है यार, व्हाट इज द बेस्ट वे भाई साउथ कोरिया ब्लॉक कर सके ब्राजील को? मतलब प्रिटी श्योर यहाँ पर वैंग जो खेल रहे हैं, अटैकिंग माइंडसेट से खेल रहे हैं. आई बिलीव सो. डिस्पाइट ब्राजील लेफ्ट विंग में ना फाड़ देगी भाई विनिशियस जूनियर के साथ, क्योंकि दनीलो है. तो दनीलो है तो वैंग माइट एक्चुअली बी यूजफुल to hit a goal in the counter. On the other hand, you have Son against Militao. वहां पर Son's directness will help. Militao's clearance, old school defending will help. तो वहां पर बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलने वाला है. ऑफ कोर्स राफिनिया को करना पड़ेगा थोड़ा डिफेंसिव वर्क वहां पर, इन माय पर्सनल ओपिनियन. अंकित भाई, आप भी बाबा के स्ट्रीम में आया करो. सब बड़े जनरली नहीं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट सब यार. बाबा के स्ट्रीम में जो है, पता नहीं आप कब से देखते हो यार. मैं तो मतलब 1.5 साल से बाबा के साथ लॉट ऑफ स्ट्रीम्स वी हैव डन यार टुगेदर. यू नो इट वेरी वेल इफ यू नो. लेकिन बिग अप टू बाबा, एब्सोल्युटली यार, लव इज वर्क, यू नो दैट. लेकिन एट द सेम टाइम यार, देखो यार, इट्स नॉट अबाउट जस्ट इंक्रीजिंग द सब्स, इट्स अबाउट आल्सो एज इन हैविंग एक ऑब्जेक्टिव. मेरा भी एक क्या बोल सकते हैं, मतलब लाइफ का विषय यार. हम एक वर्ल्ड कप कवर करें, और दिस इज समथिंग दैट आई एम डूइंग. आई एम लिविंग माय ड्रीम. एट द सेम टाइम यार, दिस इज समथिंग प्रोफेशनल आल्सो, राइट, बिकॉज इट्स माय चैनल. आई हैव टू रन इट फॉर मेजर मैचेस. मेरे भी काफी सब्सक्राइबर्स चाहते हैं कि मैं हूँ, बट आई अंडरस्टैंड सम स्ट्रीट्स में आऊँ. तो अगर बुलाएंगे बाबा तो डेफिनेटली जाऊंगा यार, 100%. आप बोलिए बाबा को बुलाएंगे. आई विल ट्राई एंड डू दैट एज वेल.
because of the fact that I was unwell previous days. Maybe यार इसलिए maybe he felt that I'm unwell. Fair enough. लेकिन कोई नहीं. Baba comes on my channel as well as all the other creators come on my channel. There's nothing against them, and I would love to work with them. You know it very well. It's not now. वो ये people judge it by just one week or 2 weeks. भाई हम कर रहे हैं videos from 1.5 साल और हम collab कर रहे हैं 1.5 साल से. मैंने उनको recommend भी किया. In fact, it will be great if they call me as well. Brilliant. But anyway, having said that, the mentality against European and American teams that African countries have developed that Asian teams need to improve. Yeah, mentality is the key. Exactly. Neymar जल्दी कर रहा है. पता नहीं यार, अब वो एक assumption है हमारा. Maybe it is actually a recovery. Who knows? It is a proper recovery. अब मेडिकल से बता सकते हैं यार. हम तो है नहीं. मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं. लेट्स सी. और मैं डॉक्टर भी होता तो आई हैव नॉट सीन हिम. सो लेट्स सी एग्जैक्टली इफ आई स्टार्ट काउंटिंग मेसी क्वालिटी देन आई हैव सो मच टू. एग्जैक्टली यार, अनमोलदीप. वो तो यार कोई नहीं. मैंने बता दिया. आई होप दैट वाज क्लियर. भाई बेटर बेटर तो एम्बापे सुपर. लेकिन यार कम ऑन, लेट्स इग्नोर दैट पार्ट. एम्बापे सुपर. मैंने खुद वीडियो किया है. नेमार जूनियर प्लीज चेक आउट माय वीडियो इन द मॉर्निंग यार. चेक करिए, आपको पता लग जाएगा मेरा व्यूज. इट बी ग्रेट टू एक्चुअली इफ आप देखो तो फिर कमेंट करो. ब्राजील विल विन इजीली. नेमार विनिशियस जूनियर शो. भाई विनिशियस जूनियर मैंने बोला था गोल्डन बॉल के लिए बिफोर द टूर्नामेंट. हु फॉलोड मी. भाई दिखा दो यार आज थोड़ा सा. ब्राजील ये तो ले लिया था. टू ऑल दीज फोर्स बैंटर्स प्लीज वॉच फुटबॉल फॉर एटलीस्ट 3. एग्जैक्टली. बिल्कुल. साउथ कोरिया बेटर इन काउंटर्स बट ब्राजील डिफेंस हैज एक्सपीरियंस. ब्राजील विन इजीली. स्पैम मत करिए आबाश कुमार. मच लव टू यू. कंपेयर करने वाले खुद के गिरेवान में जाको. बिल्कुल. जापान का बहुत अच्छा वर्ल्ड कप था ये. हाँ बिल्कुल. मतलब वो ये बुलाएंगे तो आएंगे यार. क्यों नहीं आएंगे. बुलाएंगे तो आएंगे. मतलब आई कैन नॉट सेल्फ इनवाइट माई सेल्फ ना. जोएब जस्ट टू लेट यू नो. बुलाएंगे तो डेफिनेटली आएंगे यार. मैं यू नो इट. एंड पहले बहुत बार गया भी. यू नो दैट इवन रिसेंटली लोग आए भी है. हम भी गए. इट्स जस्ट अबाउट दैट. बुलाएंगे तो आएंगे यार डेफिनेटली. अंकित भाई, जॉ फिलिक्स और रफाएल लियाओ फॉर चेल्सी. ऑफ टॉपिक है थोड़ा पर. भाई आई वुड से रफाएल लियाओ एज मच एज जॉ फिलिक्स. फॉर्म में लग रहा है ज्यादा. आई थिंक रफाएल लियाओ दोनों में. लेकिन दोनों में थोड़ी कमी भी है. आई विल कम टू दैट लेटर. भाई इट इज टाइम टू प्रेडिक्ट. इट्स टाइम टू प्रेडिक्ट द स्कोर्स. क्या बोल रहे हो आप लोग. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी I think it's going to be a 2-1. Let's go for a 2-1. 2-1 to Brazil. Everyone 2-1 to Brazil. और मुझे लग रहा है नॉर्मल टाइम में ही होगा. और आई थिंक 2-0 ब्राजील लीड लेगी और फिर साउथ कोरिया एक मार देगी. दिल बी कॉन्सलेशन. तो मुझे ये लग रहा है. और विनिशियस जूनियर ब्रेस. चलो बोल दिया मैंने. आई लाइक विनिशियस गेम प्ले वेरी वेरी मच. जापान डिड वे मोर देन एक्सपेक्टेड. गुड पॉइंट. लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट यू हिट. वाई पोर्चुगल अगर स्विट्जरलैंड को हराएगी तो सामने वाले ओपोनेंट कौन कौन होंगे. चलो वो भी देख लेते हैं यार एक बार. एक सेकंड देखते हैं. भाई स्पेन और मोरक्को में होगी. सिंपल. मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को. भाई ये है देखिए. अभी ब्राजील और कोरिया से देख रहे हैं. लेफ्ट बॉटम देखिए. राइट बॉटम में पोर्चुगल स्विट्जरलैंड है कल. तो दे विल प्ले अगेंस्ट स्पेन और मोरक्को. वो भी है कल. ठीक है. तो वो दोनों खेलेंगे. तो पोटेंशियली स्पेन और पोर्चुगल हो सकता है. मोरक्को स्विट्जरलैंड हु नोस. राइट. दैट हैपेंस एंड देन दे प्ले इंग्लैंड और फ्रांस का विनर. दैट्स व्हाट हैपेंस. ठीक है. आई होप दैट्स क्लियर. आई थिंक आशीष ने पूछा था. हाँ बिल्कुल यार जोएब. चैनल कब ओपन किया था. इट्स योर पैशन और जस्ट फॉर फन. इट्स डेफिनेटली बोथ. आप अगर पैशन नहीं रखते तो साथ में फन भी इंपॉर्टेंट है यार. हम काफी सारे फन सीरीज भी किए हैं. वी डू अ लॉट ऑफ वेरिड कंटेंट. डू चेक इट आउट आबाश. आबाश, जोहेब एंड एवरीवन. भाई आई वुड रिक्वेस्ट टेक अ मिनट जब भी आप फ्री हो. चेक आउट आवर सीरीज प्लेलिस्ट जो टैब होता है उसमें आपको पता लग जाएगा क्या क्या डिफरेंट कंटेंट हमने किया है, कब से किया है. quizzes है. We have a lot of watch along. We have a lot of review shows, the preview shows. Then of course we have something other games as well. हमने बहुत सारा चीज किया है. Nostalgic preview क्योंकि मैं 28 साल से फुटबॉल देखा हूँ. तो there's a lot that I can share with you all. तो लास्ट 20 इयर्स का मैंने एक सीरीज किया है. लॉट ऑफ इट. एनीवे लेट्स गेट बैक टू द फुटबॉल. तो अभी यार टेक्निकली 1.5 साल हो गए. बट लाइव एक्सेट्रा मैंने 1 साल से शुरू किया था. Brazil 3-1, 3-0. Neymar had to score. Come on, 75 goals and 55 assists in 155 matches. Amazing record. अरे मनराज अच्छा हो यार. अच्छा हो. Aditya, big up. How are you doing? World Cup night matches being too hectic with job early morning. उठा. Imagine content creators, bro. Aditya.
Fun, did anyone call me MJ? Yes, of course we did. Of course we did. चलो भाई, नाइस होल्ड अप प्ले बाय रिचार्लिसन और नेमार लूजिंग इट। नेमार लगा उस सेकंड में, ऑल्दो मैं जज नहीं करना चाह रहा कि वही है, कमिंग बैक फ्रॉम फिटनेस ना, इट्स नेवर इजी मिडवे थ्रू टूर्नामेंट, और वो उन्होंने किया है। तो होपफुली भाई सॉन विद द बॉल, सॉन, लेट्स सी अगेन पीपल, इफ यू, इट बी ब्रिलियंट इफ यू कैन लाइक द स्ट्रीम, यू कैन शेयर इट, बहुत ही अच्छा रहेगा यार। मैं वापस से आई कैन शेयर इट, बट मे बी इफ यू कैन हेल्प मी। पोर्चुगल मैनेजर फर्नांडो सैंटोस इन एंग्री, आप पढ़ा था मनदीप ये वाला। भाई नाइस होल्ड अप प्ले, नाइस 1-2 बाय बिटवीन नेमार एंड रिचार्लिसन। एक तो भाई ये लोग हेयर स्टाइल सेम क्यों कर लिया यार, सिमिलर, नेमार और रिचार्लिसन। डेरेन ब्रो, मच लव ब्रो, डेरेन वाज वेटिंग फॉर योरसेल्फ। साउथ कोरिया लीड पहले लेगी, फिर ब्राजील आउट ऑफ द बॉक्स स्कोर करेगी, फिर इन बॉक्स पिंग पोंग होगा और ब्राजील स्कोर करेगी 80-90 मिनट में, साउथ कोरिया लीड लेगी। आई एम विद साउथ कोरिया विन। वाओ आशीष भाई, 3-1 और 2-1 टू ब्राजील, साउथ कोरिया टू स्कोर फर्स्ट। इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग है यार, काफी इंटरेस्टिंग बोल रहा आप। चलो आई थिंक फतेह इज जॉइनिंग, आई जस्ट ऐड फतेह यहाँ पर। फतेह ब्रो, व्हाट्स अप, नाइस टू सी यू यार, क्या हाल है? What's up, Ankit, man? What's up? Who are you rooting for today? भाई मैं तो आई एम रूटिंग फॉर ऑब्वियसली द अंडरडॉग्स हियर व्हिच इज कोरिया, बिकॉज ऑफ नॉट ओनली एशिया एलिमेंट, लेकिन भाई ब्राजील विनिंग सो मेनी वर्ल्ड कप्स विल बी लाइक कम ऑन ब्रो, एज इन आई नो 20 साल हो गए, लेकिन आई डोंट वांट देम, प्लस नेदरलैंड्स के साइड में है ना इन टर्म्स ऑफ द Yeah, ब्रैकेट, तो yeah, नो हेट, बट साउथ कोरिया भाई, जापान बहुत ही सैडनिंग टू yeah, सी जापान गो द वे दे येट अगेन, बाय द वे। yeah, yet again, yeah. I think they've never gone past the round of 16. I think 2002 they lost to Turkey, 2010 Never. Paraguay, and now Yeah. Croatia. In fact, वही है ना, only South Korea, North Korea have gone to Yeah, quarters from semi-finals. Asia. Yeah, semis, I think. हाँ मतलब पास्ट राउंड ऑफ 16 आई थिंक ओनली 2 हैव गॉन, Yeah, और वो yeah, सेमीज था। 3-0 टू ब्राजील, मोस्ट टू गो फॉर Fateh's another birthday. Yes, by the way, Fateh, I hope your birthday went well, bro, yesterday. yeah, man. Yeah, thank you. And it was fun, like coming here. A core memory that you know, Putin is like, you yeah, reminded him of Torres, I Fernando think. Torres. That one season at Liverpool, I think they knocked out Inter Milan in the round of 16, and Torres scored. Yeah, Yeah, but yeah. So what's your prediction? I do think that Brazil have too much quality. Like I'm again rooting. That's why I wore the red, not for Liverpool, but for Korea. Like I'm totally rooting for Dae Hai Min Cook and Go Pils in Korea, the two chants from I think the World Cup 2002. But I somehow just don't think that they have it. But then stranger things have happened in football. And look, in the round of 16, we've had no upsets. Like it's gone to plan. You know Hmm. so there has to be one. I think there has to be one dark horse, like somebody. So it's either today or tomorrow. So I don't know. I have a feeling that Switzerland will be that dark horse, but okay, let's see. So my prediction for this game would be, I think a 4-2 win for Brazil. ओके, इंटरेस्टिंग। 4-2 फॉर ब्राजील, मतलब थोड़ा ड्रामा एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई फतेह, मतलब आर यू कॉलिंग इट 2-2 एंड देन 4-2, और 2-1 और देन 4-2 लाइक Calling it अर्जेंटीना और 3-1. Yeah, no, I आई थिंक think Brazil अर्जेंटीना। will always be up by 2 goals. अच्छा, नहीं लेकिन लास्ट याद है, लास्ट वर्ल्ड कप में जो हुआ था राउंड ऑफ 16 मैच बिटवीन अर्जेंटीना एंड फ्रांस, समथिंग लाइक दैट। Ah, yes, the 4-3. हाँ, द वन वेयर पवार्ड गॉट द बेल्टर ऑफ अ गोल। Oh, yeah, 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 yeah. What a goal that was. Yeah, yeah. Yeah, I think, see, दैट इज look, सम। Brazil already very comfortable. And somehow I think Japan are a notch above Korea, though. Although I was very impressed with the way the Koreans played against Uruguay. राफिनिया इज डूइंग वेल। Yeah. कोरिया कोरिया का एक चीज है ना, दे हैव दिस प्लान बी, द वे दे डू। अरे भाई ब्राजील का डेफिनेटली गोल है, Goal. विनिशियस गोल यार। भाई दिस इज लाइक, दिस इज गोना बी इजी मैन। भाई विनिशियस गोल मैन, मैंने विनिशियस का ब्रेस बोला था बाय द वे, विनिशियस गोल पीपल। ब्राजील हैव स्कोर्ड अर्ली, एंड रफीनिया को बहुत क्रेडिट देना चाहिए, रफीनिया डिड सम ब्रिलियंट वर्क ऑन द राइट हैंड साइड, और आई नो काफी सारे पासेस हुए थे बीच में, एंड ऑफ कोर्स कोरिया वर लाइक लिटरली, बेंटो इज ऑन द बेंच, यस इस बार वो सस्पेंडेड नहीं है, बट विनिशियस जूनियर भाई, मैंने बोला था दैट दिस गाय विल रॉक टुडे बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट
वो लगेगा ना naturally कि Neymar is coming back, so they might focus on the central area. But Vinicius, man, and the way they're celebrating here, Fateh, they're really looking like a team. I'm telling They're you, this looking like a Brazil team team. is difficult to beat. Yeah, I mean, I think Korea now having to go and attack. Look at the dance. Look at the dance. Why Vinicius Junior, Paqueta, Neymar, and I think it was Rafinha. What I think dance, they're yeah. too strong. They're too strong for Korea. But I that mean, was just like way too early, bro. That was way too yeah, early. Come on. They committed now. So Korea defenders committed. I don't know why they committed. They should have just. yeah. All the mins. देखो basically Neymar sucked in all the players, all the Yeah, defenders. Neymar exactly. sucked in. तो वही हुआ ना. And then there was no one. Like हम लोग स्कूल में जैसे करते थे ना डिफेंडिंग. सब लोग Yeah, जाओ yeah. बॉल के पास. जैसे Yes, चेल्सी I करती है think so. आजकल. Yes, yes, श्रेय yes, क्या हाल है? yes. बहुत बढ़िया. Hi, कैसे हो फतेह भैया? how are you, man? आई एम वेरी वेरी गुड. एंड जैसे ही आया गोल, लाइक फैंटास्टिक यार, गुड. स्ट्रेट अवे अपीयरेंस एंड स्ट्रेट अवे गोल. एंड लाइक वही है अंकित भाई, मैं पूरा एग्री करता हूँ फतेह भाई से कि यही है कि सैडली ना ये लेवल ऑफ द अपोनेंट कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया. लाइक ब्राजील एंड साउथ कोरिया का मुश्किल ही था. लाइक Hmm. ब्राजील इज वन ऑफ द कंटेंडर्स ऑफ द टूर्नामेंट, तो इनका आई थिंक दूसरी टीम का कंपैरिजन नहीं है. बट अभी मैं कहते बदला नहीं. उस दिन हम अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रीम पे बैठे थे, अर्ली गोल हुआ था, तो आपने मैंने दोनों ने सोचा था कंफर्टेबल नहीं होगी, लेकिन वो भी एंड तक चले गया था. तो जितनी देर तक ये हाँ 1-0 रहेगा. हाँ मतलब it's not over, obviously it's not over, And लेकिन Korea conceded first. They conceded two to Ghana, and then they also conceded an early goal to Portugal. Portugal exactly. Yeah, so they better not go 2-0 down. I think keep it for as long as this stays on. And मेमशे बोल रहे मैच का लिंक भी नहीं मिला, फिर भी पहले ही उससे पहले ही कोरिया कंसीड कर दी. दैट्स हाउ इट इज. बोथ विंगर्स आर पेसी. विनिशियस यार आई थिंक वही इंग्लैंड और ब्राजील के विंगर्स ना, मतलब आर एंड ऑफ कोर्स फ्रांस एज वेल, तीनों के विंगर्स आर लाइक क्रेजी गुड यार. तो यू हैव टू गिव इट दैट विंग प्ले ना उनका जो है. व्हाट अ स्लो शॉट बाय विनी. the placement, the fact that everybody went to him, but he was very calm. I mean, he just otherwise, I think like we saw. लेट्स ऑल होप दिस कोरिया स्कोर यार. मतलब ये मैच नहीं तो कम ऑन, आई डोंट वांट वन साइडेड. Yeah, बट no, yeah, मतलब इवन इफ दे कीप वन, लाइक श्रेय सेड ना, जैसे 1-0 रहा ना हाफ टाइम तक कहीं ना कहीं, आई डोंट माइंड दैट. यू नेवर नो. जैसे जापान ने किया था अगेंस्ट जर्मनी, जापान ने किया था अगेंस्ट yeah, स्पेन टू exactly, सम yeah. एक्सटेंट, और क्रोएशिया ने पूरे टूर्नामेंट में किया है. बट आई डोंट नो यार. मतलब भाई कोवाचिच गेटिंग टू प्ले वन मोर मैच हैप्पी, और यू वुड हैव रादर होप्ड ही गॉट रेस्ट. श्रेय पेनल्टी Penalty. भाई हो गया. पेनल्टी. What चलो the भाई hell? कल्याण, ये हो गया भाई मैच पहले शुरू होने से खत्म. व्हाट शिट मैन. ए डेफिनेट पेनल्टी है. आई थिंक द स्टेज इज टू बिग यार. मतलब आई वुड, मैं वही बोल रहा था ना, आई थिंक गाना वाज द बेटर टीम यार ओवरऑल. लेकिन वही है, दे आल्सो नहीं, डिफेंसिवली वर क्लियर पेन वेरी है, वीक. क्लियर पेनल्टी है, क्लियर पेन है. हाँ मतलब बट क्रेडिट रिचार्लिसन पे, मतलब जिस तरह रन मारा ना रिचार्लिसन ने, लाइक डिफेंडर एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होगा लाइक ही विल इमीडिएटली कम देयर टू रिसीव द बॉल. भाई पहले बता देते कि पहले 10 मिनट में 2 गोल हो रहे, आराम से हम डिनर करते. अंकित भाई, पर वही है ना, ब्राजील ने भी दिखाया, लाइक ब्राजील हैव नॉट कम, लाइक पोर्टुगल आई थी थोड़ा स्लो स्टार्ट करा था, गोल भी मार दिया था. दे हैव कम फुल गन ब्लेजिंग, लाइक दे हैव कम टू मेक अ स्टेटमेंट टुडे, लाइक फॉर हाँ द नेक्स्ट बिल्कुल अपोनेंट एज वेल. बिल्कुल. और एक लग रहा है ना, टीम स्पिरिट इज वेरी हाई, द चार्ज. मतलब एक बोलता है ना हाई ऑन एनर्जी. तो नेमार, और आई थिंक बहुत ही मेजर फैक्टर मेरे लिए क्या है, आई डोंट नो फतेह व्हाट वुड यू से, बट आई थिंक नेमार नाउ ही इज टेकिंग द पेनल्टी. द फैक्ट दैट ही मेड हिमसेल्फ अवेलेबल इज अ स्टेटमेंट बाय इटसेल्फ. आई नो इट्स अ रिस्क, यू कैन आर्ग्यू, लेकिन अगेन वी Yeah, आर नॉट मेडिक्स टू कमेंट ऑन दैट, राइट. तो मुझे लगता है दैट दैट इज द स्टेटमेंट टू द टीम, एंड लाइक दे आर लाइक वाओ, दे आर लाइक totally charged. And opposite to Korea. yeah. I mean, I Korea. think Hmm. I would have, like maybe now if they go 2-0 up, then maybe Neymar is taken off early. But yeah, a massive statement for him to be playing. Um, yeah, I'm very disappointed with the start, but okay, maybe he'll miss. Do you think? I know Neymar fans will not like it. I hope he misses, but करेगा नहीं, वो विल बी स्कोर गुड फॉर द करेगा. मैच. मतलब
कॉन्टेस्ट Yeah, में Yeah, देखा I yeah. होगा। mean, भाई, I'm a at least neutral bro. have some contest, you know, like अरे पहले कीपर कहाँ कर रहे थे? कीपर को देखो, बीच में नहीं है। अच्छा चलो अभी आ गया। अबे यार गोल, पीपल 2-0। भाई इतना ज्यादा डांस किया, कुछ डाइव भी नहीं मारा लास्ट में। तो डाइव तो कर, इतना क्या कंफ्यूज हो गया? वापस से डांस आएगा अब। मैन, एज मच एज दिस डांस इज ग्रेट मैन, भाई कुछ ज्यादा कर ही क्या रहा है कीपर? खुश, लाइक मेरे भी पीछे रिवाइंड भी चल रहा है ना। माय गॉड। कुछ ज्यादा ही खुश मिजाज you know that ब्राजील की dialogue टीम लग रही picture है। abhi baki hai mere dost, that sometimes comes true, like it's great नहीं, that they're dancing the when they're match is playing, never but over till it's over. Of course, yeah, craziness happens. यार बारसा मैड्रिड कहाँ से आ गया भाई यहाँ पे, यहाँ पर? मैंने कहा क्रेडिट टू ब्राजील यार, जिस तरह आई है ना ब्राजील, स्टेटमेंट से आ रही है, पूरा इंटेंसिटी से खेल रही है। लाइक चांस ही नहीं दी उन्होंने कोरिया को, लाइक ब्रीथ करने की भी चांस नहीं दी मैच में, लाइक टू मेक अ पास। प्रेसिंग इतनी इंटेंस रही है। यहाँ पे उनके बीच, जैसे आप कह रहे हो, अभी भी चांस है कमबैक की, या आज ही शायद वन ऑफ द बिगेस्ट बैटरी ना हो जाए, लाइक एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट ना चले जाए। आई डोंट नो, लाइक वही है जैसे मैंने कल बोला था ना अबाउट लेवेंडोव्स्की, इफ यू रिमेंबर यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग, एंड मैंने बोला था लेवेंडोव्स्की ने स्टेटमेंट दिया दैट ऑलरेडी अचीव माय ड्रीम व्हेन ही स्कोर्ड अगेंस्ट सऊदी। यार मैंने वर्ल्ड कप गोल मार दिया। कहीं ना कहीं बोले सॉन, इफ यू रिमेंबर द काइंड ऑफ इमोशन दैट सॉन शोड, that was yeah, also telling, yeah, that's a fact for South Korea and for Son, like dream come true where coming to the round of 16. yeah, I So it's mean like I don't know, 8-2 MC is saying. nahi nahi Acha, nahi Vinicius or Rafinha? Bhai, you guys should have been for the first match, man. First match में there was a period, I don't know if you guys saw the full match, एक I period था जहां पर इतना basically end to end हो रहा था, इतने chances मिस किए ना दोनों teams ने, जापान ने but I और think क्रोएशिया ने। Japan played very well, and I think somebody was mentioning somewhere that they have a very good generation coming up, so it's not as if, you know, like it's the end. हाँ, हाँ, Uh, जापान का तो वेरी वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर है ना। इट्स वन ऑफ दोज एग्जांपल्स इन एशिया। लेकिन अंकल साथ मैं साथ ये में भी सुना था, लाइक इनका कुछ 100 फिनिशिंग, ईयर प्लान है। लाइक कई मैंने या पढ़ा था 100 ईयर कि प्लान 100 ईयर एग्जैक्टली, प्लान है जापान का। या दैट्स लाइक व्हाट इट्स, दे आर इंसेन, लाइक जिस मतलब तरह दे उन्होंने से बनाई इट है लाइक ना। दैट, आई डोंट नो व्हेदर दे मीन इट, बट इट्स दे नेम्ड इट लाइक दैट आई गेस। बट ऑनेस्टली यार फिनिशिंग ना अभी भी यार नहीं है, मतलब दे डोंट hmm, हैव दैट। yeah, that striker that I think they had that one guy Takahara who played in Germany who हाँ used बट to score, but even he was not नहीं, as एंड देयर talented. वाज But अ पीरियड जब दे हैड इवन होंडा एंड नाकामुरा वर वेरी गुड। yeah, but I think they need that one striker. I was very disappointed with Minamino's penalty also. पेनल्टी, Like his body language, his सी दैट इज द डिबेट। आप सब्स्टिट्यूट्स को ना आप uh, नहीं बेसिकली मतलब आई एम हेजिटेंट जनरली टू गेट योर सब्स्टिट्यूट जस्ट फॉर पेनल्टीज और रादर जस्ट बिफोर पेनल्टीज। आई नो दे प्लेड अ फ्यू मिनट्स, लेकिन आई एम लाइक यू रादर हैव पीपल, आई नो टायर्ड लेग्स होते हैं फॉर आफ्टर 120 मिनट्स, बट आई थिंक यू रादर हैव जो एक एकदम फ्रेम ऑफ माइंड वैसे रहे ना। आई नो देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट। मगर उनका नहीं यही था, एक्सपीरियंस नहीं था। लाइक अगर मीना मीनो लेता भी, कोई और भी लेता, लाइक इतनी सारी पेनल्टीज मैंने भी मिस होते हुए देखी है। लाइक मैंने बहुत सारे शूट आउट देखे हैं, लेकिन इससे गंदा शूट आउट लाइक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। इससे गंदा शूट, लाइक जो क्वालिटी ऑफ किक्स थी। पर वही अंकित भाई, लाइक जापान अरे नहीं, मैं बहुत मैं नर्वस। याद दिलाता हूँ, मतलब इट वाज बेसिकली देयर वाज अ कम्युनिटी शील्ड मैच बिटवीन चेल्सी एंड लिवरपूल, वाज इट अंडर Mourinho? We नहीं, मैनचेस्टर यूनाइटेड, वैन डर सार लिटरली सेव द फर्स्ट 3 पेनल्टीज। चाहिए नहीं आता। तो देखना, एंड देन Mourinho से लाइक भाई इट इज एनीवे चैरिटी, व्हिच इज प्रोबब्ली अ फैक्ट, इट वाज कम्युनिटी शील्ड इज बट चैरिटी। अंकल भाई चक्कर ये भी है ना, एटलीस्ट वो चैरिटी शील्ड है। लाइक एक मैच बहुत कम मैग्नीट्यूड का, ये वर्ल्ड कप एक वर्ल्ड स्टेज पे है। एंड आई थिंक पेनल्टीज बहुत पुअर थी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ, नर्व्स भी है, मतलब वो स्टेज पे दे पहुंची वरंट नहीं। मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट, ऐसे ही लगा मुझे तो। व्हाट अ गोल! ओ नहीं यार, कम ऑन मैन, एलिसन यार ऐसा नहीं कर यार, एलिसन छोड़ना था गोल। व्हाट एन अटेम्प्ट यार, दैट वाज अ सुपर्ब अटेम्प्ट बाय सॉन, आई गेस। वाज इट सॉन और वाज इट no. वैंग? वैंग था भाई, वैंग नहीं मारा था लास्ट विनर, रिमेंबर अगेंस्ट पोर्चुगल? भाई वैंग इज अ गुड प्लेयर, आई एम टेलिंग यू। They need a goal though ओहो, before half time. and that is what you get from Brazil यार। मतलब देखो, Alisson had no right to kind of be on point there, but he was there, no overconfidence, nothing. It is 2-0, I don't care, I am doing my job. That is what this Brazil side are looking good, and I'm bloody jealous right now, honestly. लेकिन इट इज व्हाट इज। भाई जोहेब पूछ रहे हैं अंकित भाई ये पेनल्टी थी क्या? रिचार्लिसन बैक से 100% थी यार, बैक से फ्रंट से डजंट मैटर।
the guy went for a kick, defender that is, and he took off Richarlison. वो and at some point you can say it's unfair from behind आया है, दिखा नहीं है, but from an attacking perspective, he clearly took Never. you down. Yeah. Correct. ब्राजील वर्सेस नेदरलैंड्स होगा या अर्जेंटीना, पता नहीं यार. ब्राजील फाइनल में होगा नेमार होने से. यार ब्राजील तो जीत रही है either ways. That's my prediction. But अंकित भाई, सेमीफाइनल ब्राजील अर्जेंटीना लाइक और ब्राजील नेदरलैंड्स लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, स्पेशली अगर अर्जेंटीना हो. लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं है, वो ब्राजील तो में है आज लाइक भी बोला अंकित भाई, ये था. कोरिया है. लाइक मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट कंपैरिजन उसमें जाके फुल बैक्स में अभी भी है प्रॉब्लम. लाइक ब्राजील के जो फुल बैक्स है ना, वो एरिया है जो टारगेट हो सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से. तो प्रॉब्लम्स है. नेमर अभी फुली फिट नहीं है, तो भगवान ना करे अभी भी पूरा टूर्नामेंट खेल पाए ना खेल पाए. मिनट्स मैनेजमेंट. हाँ मतलब यू कैन से दैट, लेकिन ब्राजील जैसे खेलती है ना, दे डोंट इवन गेट लेट द बॉल कम नियर द फुल बैक्स यार. मतलब अब देखो, मतलब आप That's देखो अभी लूज के पोजीशन, रिचार्लिसन केम बैक एंड ही वन द बॉल. relax, guys. Modric, Brozovic, Perisic, Kovacic. It's going to be an upset. Brazil 2006 against France quarterfinals. They were good till then. You know, they thrashed Ghana in the round of 16 just like this. To 2010, they were cruising 65 minutes, and then Snyder happened and Netherlands went through. 2014 again at home, we know, like let's not say 7-1, whatever. Yeah. 2018, exactly. I think Things they were happen. cruising till they played. And look, I mean, I know that we hate on Lukaku, but they were cruising till Lukaku just ran through them. So, and that also happened in the quarterfinals. And I don't look, this is a good team. But again, when I look at this team, I don't see that, that they're going to be world champions. Like, नहीं, मेरा फतेह, मेरा एक क्वेश्चन है, when things are going bad in the match, how will they react? Yeah, that how is my will they biggest react? question. And that has always happened to them since 2006. Like, if you look at it, the moment adversity comes, something happens, with Brazil. So I'm not. But again, we still can not only convinced. compare with other teams which are in front of us. Honestly, like Yeah. same thing can be said about Netherlands. Same thing can be said about Argentina, because Argentina last But I year think, में but not but lost. you guys are almost assuming that Croatia will. I mean, look, today, हाँ, okay, Croatia वाला Japan मैंने वही कहा है, क्रोशिया. बट क्रोशिया के सिर्फ फतेह भाई, मुझे सिर्फ प्रॉब्लम ये रहती है क्रोशिया की, लाइक गोल्स है. सिर्फ प्रॉब्लम ये है क्रोशिया गोल्स है सिर्फ. लाइक 1-0 हार जाएगी ब्राजील से, दे कैन टेक इट टू द एंड, लेकिन गोल्स नहीं है टीम में. Yeah, goals They're नहीं too है, बिल्कुल dependent on goals तो Perisic, बिल्कुल नहीं है. bro. They Perisic miss बहुत ही important है. Mandzukic. They miss Mandzukic a lot, and they don't have a striker. Yeah, they don't exactly. आज भी, और आज मतलब बहुत shocking, क्या आज बोलूं तो- मैं, Orsic came on in like literally in the last minutes of extra time, bro. मतलब Orsic was supposed to be along with Petkovic, एक understanding है, both play for Zagreb. It is so shocking by the Croatian manager वहां पर. मैं पे But समझ नहीं anyway, पा they रहा हूँ. लाइक got. ऑर्सिच को मैंने देखा हुआ है, लाइक हमारे खिलाफ खेलते हुए. ऑर्सिच इज बहुत मतलब बेटर है, कमारिक And से it's not बेटर a है मेरे one-off पॉइंट ऑफ व्यू play. से. It's not a one-off. Orsic last Euros से अच्छा करते आ रहा है यार. He's an impact player, I know. He's not like a starting वाला जो 120 minutes खेलता, क्योंकि plays of the left hand side and Perisic is obviously better ज्यादा. लेकिन This is a Perisic can good also play off the moment right, for- थोड़ा different. Yeah, this is a good moment for Korea. Korea. Like they had possession, they had. मतलब Yeah, so they need to do something about it. no, but I still think that the way we think about Brazil, every time in the last 4 World Cups, I think they've been very good till the quarterfinals, and the moment that first big wall comes, they crumble. No, I'll be very happy if that happens. No, I know you'll be very happy. I mean, Ankit, you'll be very happy if if that happens to Argentina, to England, to France, to everybody but Holland. But again, with Holland also, the problem- Argentina के लिए मैं बोलूंगा that the way Messi Yeah. has played in this World Cup ना, it gives me the vibes of how Zidane was playing in the 2006 World Cup. वो vibes मुझे मिल रहा है. Messi 2006 literally doing by World Cup, himself. he had these other guys like you mentioned Ribery. Remember in that post show, हाँ, I was exactly. seeing that goal against Spain that he scored. Like I was just seeing it today when that pass came. Henry was offside, but Ribery took it, and then they had other players also around Zidane, like Thierry Henry and whatnot. भाई Paqueta, man, Paqueta with a dummy. Yeah. Paqueta ब्राजील में क्या हो रहा है उसको? He plays next level, bro, in Brazil. Yeah. No, people say that he didn't do well at Milan, but then he's been very good for Lyon. He actually was very good for Lyon. Yeah, you're right. Yeah. I think France, England, Netherlands, Argentina look sorted. पता नहीं यार. Soft penalty. मैं यार, एक चीज पूछना चाहूँ, जैसे ब्राजील की हाइप बहुत हो रही है, इंग्लैंड की हाइप डिजर्व्ड है, फिर भी फ्रांस की
आर पीपल नॉट ओवरलुकिंग डाउन लुकिंग कर रहे हैं पोर्टुगल को? लाइक एटलीस्ट हाँ. पेपर में मैनेजर बेकार है बट स्क्वाड इज वेरी गुड. Yeah, I हाँ don't even agree with manager Bekar hai. Like I don't agree with this because you don't win Euro 2016 and defensively the manager is good. Like how are we saying manager Bekar hai? Like how many managers are नहीं there नहीं who यार, have won मतलब a फतेह Euro? देखो नहीं नहीं, बट मैं पता है भाई प्रॉब्लम पता है क्या एग्जैक्ट है? मैंने जैसे पोर्टुगल के मैचेस पे देखे ना, कहीं ना कहीं जब मैं देखता हूँ ना उस टीम हाँ को, हाँ टैक्टिकली लगता है कि मैनेजर पुल डाउन कर रहा है. लाइक जो साइड कर हाँ सकती है ना डिफेंसिवली पुल हाँ डाउन कर रहा है. एग्जैक्टली बट मैं आपसे भी एग्री करता हूँ. नहीं, मैं पर्सनल का बोलता हूँ फतेह, श्रेय का जो पॉइंट है मैं एग्जांपल देता हूँ. तो बेसिकली दे हैव एन एंटोनियो, यंग एंटोनियो सिल्वा इन द स्क्वाड, ठीक है. yeah फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई मैनेजर इज नॉट गुड बिकॉज़ एंटोनियो सिल्वा इज नॉट born yesterday. Antonio yeah Silva was already there doing well for Benfica an entire season. In the two say international friendlies or what do you say, the Nations League match, he could have blooded Antonio Silva. He did not. ठीक है. hmm. फर्स्ट वो. सेकंड, आप खेल रहे हो, चलो एंटोनी सेंटर नहीं खेल रहे हो, आई अंडरस्टैंड पेपे अभी, ही इज नॉट द पेपे ऑफ द ओल्ड. यू प्ले दनीलो परेरा, आई नो ही प्ले सेंटर बैक पीएसजी के लिए, भाई वो एक बैक थ्री सिस्टम में खेलता है, यहाँ पर आप बैक फोर में Yeah आप खेल रहे हो, एंड yeah वो भी लेफ्ट साइड. आप hmm. दनीलो परेरा डज नॉट हैव, ही इज नॉट born with the left foot. yeah ठीक है. that I तो दैट agree इज like लाइक वेरी बेसिक स्टफ. yeah that I agree that I think defensively I would have expected him to be very good defensively. If he's making defensive errors then एक और हो that's गया, a अरे बच गया भाई. yeah कोरिया का गोलकीपर नॉट नॉट डूइंग बैडली दिस मोमेंट. साउथ कोरिया की पोजीशन, आई नीड नेदरलैंड्स आर बेटर देन अर्जेंटीना बट इफ मेसी डज दिस, एग्जैक्टली मेसी इज द फैक्टर ब्रो. और मैं बोल रहा हूँ, पीपल सेइंग दैट वन मैन कैन नॉट विन. भाई आई एम टेलिंग यू अगेन, मैंने लाइव नहीं देखा है फतेह, मे बी आई हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ क्लिप्स एज वेल. भाई व्हाट मैराडोना डिड इन I don't know, in 86 80s, would you say that, that was yeah, a of one course it's a man team thing. Yeah game, but he was the talisman in yeah he 2006. was the Zidane, talisman. Zidane was the talisman. Yeah, Zidane was the 98, talisman 98 it 2006. was a team. 98 उतनी बोलूंगा, it was all Zidane. It was probably a team, but अगर मैं तो बल्कि इवन हैजार्ड का बेल्जियम वाला मेरे को याद आता है 2018 वाला वर्ल्ड कप, लाइक वो भी वन मैन कैरी जॉब था, लाइक पूरा कैरी Yeah, जॉब था. तो वन मैन भी कर सकता है. लाइक अगर मेसी अपने हाँ. बेस्ट में खेला, इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप हिम. अंकित भैया पूरी so, स्ट्रीम मेरे को याद है अर्जेंटीना वाली, यार ये क्या कर दिया मेसी ने, यार ये क्या कर रहा है. no मैं 2014 उसमें also था. it was basically Messi and Mascherano. Like all Argentina did was defend. I think they beat Netherlands on penalties. They beat Switzerland on penalties, or was it extra time that Shaqiri goal? You're talking Argentina about कौन सा 20? 2014 when they reached the final. It was, but they had great leadership in हाँ, Mascherano. स्विट्जरलैंड. Switzerland and then Belgium in the quarterfinals. I don't know. बेल्जियम That स्विट्जरलैंड was थी. also penalties, I think. हाँ नहीं, एक गोल था आई थिंक, एक गोल किसने मारा था भाई वो याद नहीं आ रहा, लेकिन एक गोल 1-1 था बेसिकली. Yeah, so I mean एक्स्ट्रा that टाइम ही was था also. शायद. But having said that, the problem for me for Argentina this time around is nobody around him is stepping up. ओहो, Like एलिसन, नाइस कैच. या एज एन आई हियर यू, बट पता नहीं यार, मुझे लगता है वो एक, लेट्स सी, मतलब थोड़ा सा है ना. मैं कल परसों के स्ट्रीम में 2 बार बोल दिया, पता नहीं इसके लिए मैं बोला यार, यार भगवान अब बोरिंग बना दो भाई जिंदगी. क्योंकि इतना ज्यादा ड्रामा भी नहीं चाहिए. आई नो, आई लव ड्रामा, वो पीपल नो दैट अंडरडॉग्स, हम हमेशा मोस्ट ऑफ अस डू दैट. लेकिन ये वर्ल्ड कप वाज गोइंग मैड राइट इन टर्म्स ऑफ ग्रुप स्टेज. सो आई एम लाइक भाई बोरिंग बना दो थोड़ा सा. वो वाला आज और कल यू कैन आर्ग्यू वो हुआ है, मतलब. बट अगेन आई थिंक यस्टरडे डिड वी गेट टू स्पीक अबाउट फ्रांस फतेह? yeah, we हमने we बात did की speak about France. We saw the तो. match together, so हाँ, तो वी आर लाइक, आई नो दैट वी आर टॉकिंग इंग्लैंड अप भाई, लेकिन आफ्टर यस्टरडेज परफॉर्मेंस फ्रांस भी लग रही है यार. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वन टू कॉल. yeah, no, I think France were very good. England were also very good though. जोएब, इंग्लैंड की हाइप कहाँ से डिजर्व है? आप नहीं बोले इतनी ये डिजर्व मेरे ख्याल नहीं से ना है. मेरा वाला पॉइंट बोल रहे, जो मैंने कहा था ना कि इंग्लैंड की हाइप भी डिजर्व्ड है. मैं इसमें जोहिब सर, मैं इसमें यही कहूंगा क्यों हाइप डिजर्व्ड है. क्योंकि अभी तक अगर आप देखोगे ना कि परफॉर्मेंस, लास्ट वर्ल्ड कप मेरे को याद है जब मैं देख रहा था ना वर्ल्ड कप, मैं खुद सोच रहा था यार ये टीम ही जीतेगी. लाइक ड्रॉज है, पेनल्टीज पे कोलंबिया से भी पेनल्टीज पे जीते थे इंग्लैंड, और परफॉर्मेंस नहीं लगे. लाइक होता है ना लक ऑफ ड्रॉ. इस बार इंग्लैंड को आप देखोगे अथॉरिटी से खेल रही है. द मिडफील्ड इज लुकिंग सॉलिड. राइस, आपके बेलिंगम, आपके फॉरवर्ड लाइन में ऑप्शंस कितने हैं. आपका बेंच प्लेयर 3 गोल मार चुके हैं मार्कस रैशफोर्ड में, फोर्डन है, ग्रिलिश है. लाइक टीम इज सो स्ट्रांग, लाइक पीपल आर अंडररेटिंग मेरे No, पॉइंट ऑफ व्यू से. let me tell you, Shrey, England. Please, if someone disagrees, please bring it on. Yeah, I think 25-man squad. England have the best squad in the World Cup. एब्सोल्युटली. They are so well covered. They are so well covered. You और know, उनके भाई एक इतना तो सबसे नहीं बड़ी कर बात सकते. बोलूं, लाइक पीपल, स्केरी बात है, इंग्लैंड ये वर्ल्ड कप ना भी जीते, इंग्लैंड का जो स्क्वाड है ना, उनकी यंग यूथ आ रही है,
for the next 3 World Cups और जो next 3 Euros है, this team can win a lot of them. But यही है कि अगर इस generation में 2030 के World Cup के बाद they have no one, then I think football ही बंद कर दो यार. इस generation के बाद 8 साल बाद नहीं जीते, then it's embarrassing. नहीं मतलब देखो, यू कैन नॉट इवन से दैट एट द सेम. वही हम बात करते, मैं फतेह से बात करता उस दिन, आई रिमेंबर यार सेम थिंग हम बोलते हैं 2002 से 2010 का. ऑनेस्टली वी हैव सीन दैट लाइव वेरी मच यार. एट दैट सेम टाइम देयर वर पोटेंशियल गोट्स इन अदर टीम्स एज वेल. तो आप मतलब स्पेशली ब्राजील मैन बिटवीन 2002 एंड लाइक फतेह ने बोला 2002 2006 2010 ब्राजील इज अ फैंटास्टिक टीम. फैंटास्टिक. एक और नहीं हो रहा, चलो कॉर्नर है. Not just Brazil, I think I don't know, France. You can also argue France was also like wow, No, so see, well stacked. Ankit, the history of Brazil, if you look at Brazil, every World Cup they go, they are favorites. They have a great team. I mean, remember 1982, we've not seen it, but everybody talks about it, the great team of Socrates and Zico. Yeah, and that they team, say exactly. the best team that has never won the World Cup. 86, they had a good team. 90, they had a good team. 1994, they didn't have a good team. When they went into that World Cup, people were saying they're negative, they're this, they're that. But, you know, they stepped up. 98, they, 3-0. By Richarlison, bro, R9. I know Oh, come R9 on, doesn't. R9. He would want himself to be called R9, but the guy is a Ronaldo star anyway यार. भाई ये तो मतलब 3-0 जो बोला था भाई, हाफ टाइम का स्कोर बोला था आपने कमेंट्स में. किसी ने 5-0 भी बोला था. 5-0 5-1 है ना, हाँ, मुझे बोला था बोला किसी था ने 5-0, पर वो मेरे ख्याल से आफ्टर सेकंड गोल बोला था. 1 hour बस बोला था. Kane with assist, Rashford quick in form, Maguire channelizing in Maldini. अंकित भाई आपको ये कुछ याद जो है डांस हाईएस्ट कर रहे हैं ना राउंड बहुत अच्छा लग रहा है, क्या लेकिन रही है? हाँ अगर रिकॉर्ड में चेक करना हाईएस्ट स्कोर लाइन क्या रही है आज तक राउंड ऑफ 16 टाई की, एक बार नेट पे. राउंड ऑफ 16 में फतेह विल प्रोबब्ली नो दैट, आई एम अज्यूमिंग. नहीं, मतलब I remember 3-2s. I remember a 4-0. ब्राजील का ही वही ब्राजील एंड अरे टीटे भी वो भाई कोच भी डांस करने लगा. व्हाट इज दिस रबिश भाई, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा. ज्यादा But हो that's रहा है the आप Samba कोरिया को boys, हरा you रहे हो know. मैं यार. मुझे अच्छा नहीं लग रहा भाई. पीपल आई एम नॉट लाइकिंग इट. No, but they dance. सॉरी ब्रो, That's आई एम वेरी their नेचुरल, thing. दैट्स हाउ इट इज. That's their I think I we'll thing. see Yeah. them in the semi-final. तब will they dance or not? भाई Guys, I will guys, Fateh on this. I can see a 2014 coming here again for Brazil. no, but But please they remember, were क्या ही. don't talk about semi-final. My team Croatia still there in the quarterfinals. They'll still. By the way, the goal was fantastic, I must say. The The goal goal was was really fantastic. good. Two, What a that. move. What a But move. I love Croatia to beat Brazil, but वही है बस. हाँ, yeah, I गोल get नहीं it. मारेगी. गोल नहीं होगा, पर अगर पेनल्टीज पे ले गए, and imagine, you know, like the Neymars are missing, the pressure is getting to them, and the Croatians, they keep winning on penalties, so they'll be high. Like, अंकित मैंने आपसे I क्वेश्चन think, पूछना था, लाइक हम गोलकीपर्स के पीछे लगे हुए हैं चेल्सी, शुड वी नॉट गिव अ लुक एंड लेवाकोविच, लाइक मैं जाग्रेब से भी परफॉर्मेंसेस देख रहा हूं पिछले 1-2 yes, साल yes, से. yes. I इज अ was, फैंटास्टिक Livkovic. कीपर. yeah, but yeah, absolutely. I think, and he's मतलब वो very young. presence नहीं, वो he's more like a Kepa kind of a goalkeeper in terms of presence. नहीं, So we केपा से आई already have a थिंक Kepa. शॉट स्टॉपिंग थोड़ी बेटर है केपा से उसकी, जितना मैंने देखा ना हाँ, उसकी but परफॉर्मेंसेस. Kepa is good यार. I would say Kepa is good. मतलब what I'm trying to say is अगर हम जो goalkeeper देख रहे हैं, we should look at someone with a presence like Mendy who actually does, you know, consistent performances like Mendy used to do in last year. वैसे what I would say. मतलब अगर हम जा रहे हैं someone in the mold of a Kepa, we already have a Kepa जो इतना expensive है. Unless Kepa के लिए हमें profit मिले, why would you want to sell him? Because he's in Okay, form right so now. Shrey, one game that I remember, 1998 round of 16 is Denmark Nigeria 4-1. So that is 5 goals. Because that Nigerian team was very hyped because they won in the group of that. They beat Spain 3-2. And you know, everybody was talking, and then they had pay issues. The Nigerian team demanded money, and there was 7-1 Croatia. Went, no, man, that's never going to happen. Ashish is very fond of predictions, which I love as well. Yeah, He gets many right, by 2002. the way, but 7-1 there, I bhai, come on. and I think 5 गोल तो देखे हैं, 3-2 मैचेस भी देखे हैं, बट कोई कुछ अगर याद आ रहा हो अंकित, 2006 2000 and some round of 16 game which was just, you know, like this, like 3-0 नहीं, at 30 मुझे तो minutes. ब्राजील का याद आ रहा अंकित है यार. एंड भाई फॉर मुझे एलिसन सिर्फ भी वो तो नहीं लग रहा, लाइक गोल्स के मामले में नहीं, बट ओवरऑल थ्रैशिंग मामले में, लाइक थ्रैशिंग मामले में, आई लाइक गेट योर अगर पॉइंट. 5 या 6-0 खत्म हो. अच्छा मीनवाइल भाई एलिसन में भी माता आ गई ना. ये भी नहीं गोल्स, मतलब देयर डिफेंस इज आल्सो गुड. दे हैव हार्डली टेकन शॉट्स ऑन टारगेट दिस वर्ल्ड कप.
Wang is playing well actually. He's playing really well. Son is missing. But coming to Shrey's question, I think by वही 20 2006 था क्या round of 16 Brazil Hmm. 3-0 3-0 was that, but I said, like, Denmark beat Nigeria 4-1. 4-1. Okay. So that I Well, remember. basically difference of 3 goals is what I remember as well. Again, मैं देखना check करना पड़ेगा. If That's anyone knows another. in chat, let me know. We are talking about round of 16. Round of 16 heaviest defeats. I know 7-1 comes to mind in terms of knockouts, obviously. लेकिन round of 16 का बोलिए. I can't even imagine this Croatia who had struggled against Japan can win against Brazil. But Putin, वही है, their strategy should be that hope for 0-0 at after extra time or get that odd goal in extra time or towards the end of 90 No, minutes. see, it's easy to sort of say that, like, I think Japan is really good. Like, I think a lot of people are, Of course, they're good. मतलब beating स्पेन और Spain, जर्मनी को बीट beating करी भाई. Germany. Today they were making Brozovic, Modric, and Kovacic look very ordinary, like for broad They periods of were the match. invisible, bro. They Invisible. were एक shot, invisible. Yeah, एक shot exactly. and But one run. That's all. All the three included. yeah, and I've never seen something like that happen. And like, I'm really excited to see what this Japan team This can guy achieve in the Endo, future. भाई स्टुटगार्ट का एंडो जो है ना भाई, he Yeah, had a game of his life. yeah. Awesome he was. And so I हाँ think आशीष मजाक, got it. So I think, Spain. just because that happened, let's not Hmm. underestimate Croatia. If you are telling me that, Casemiro versus Modric is not some battle that you want to see, I'm telling you, like, नहीं नहीं, it is a battle, it's but going to be, भाई yeah. goals कहाँ से आएंगे यार, मतलब I'm struggling to think Goals. about goals. That's the only thing. But अंकित भाई यही है कि एटलीस्ट दे कैन लाइक जिस तरह लोग अंडर एस्टिमेट करे क्रोशिया कैन टेक इट टिल द एंड और 1-0 हार जाए बट दे कैन पुट अ मच बेटर फाइट जो दूसरे अपोनेंट ने डाली है लाइक एंड ब्राजील का मेरे को अटैक का देखना है कैन दे ब्रेक क्रोशिया लाइक अगर उस मैच में दे बीट कंफर्टेबली तब मैं सोचूंगा नहीं यार ब्राजील आर लुकिंग डिफरेंट लाइक इफ दे ओवरप्ले ब्रोजोविच कोवाचिच मॉड्रिच लेकिन अगर वो स्ट्रगल करे देन वी विल सी द क्रैक्स लाइक अगर है कोई क्रैक्स तो और अंग्रेज जैसे आपने कहा ना फॉल ऑफ मैं ये देखना चाहूंगा 60 मिनट हो ब्राजील नील क्रोशिया नील और तब ब्राजील क्या करेगी दैट विल वेरी इंटरेस्टिंग अंकित भाई Yeah, it is absolutely. But and again, you never know. Again, what the reason why football is never done this is done because yeah, you never know. There might be injuries. We don't want injuries. There might be some injuries. Still, you never know. तो that's aspect as well. भाई ताहा खान, मैं बोल रहा हूँ आप कोपा अमेरिका जीते थे लास्ट ईयर, अर्जेंटीना ने जीता था और Yeah, दैट ब्राजील टीम वाज इट वेरी डिफरेंट? नो, नॉट रियली, राइट? it wasn't. And also Argentina versus Brazil is not about, like, they're not going to get this sort of space. Like, no team is going to give them this space. I assure you, Croatia is not going to give them any of this. And if you're telling me that this guy Richarlison is going to enjoy himself against Perisic, or the wing back is no, I think, and as नहीं, Shrey said, Perisic chap, yeah, that I agree. Perisic against Militao, I can see Perisic being more trickier and यहाँ पर absolutely, या तो absolutely, fight होगा या तो fight Perisic hoga, will and, get the better. and yeah, I mean, I'm not still, and I think if you remember the Switzerland game, Brazil were made to sweat a lot. And Yeah. that's exactly how Croatia are going to play. That's exactly how anybody from here onwards is going to play. But And I like think, Croatia don't have a right winger, bro. yeah, they don't have a right. That's the main problem. वो one trick pony वाला चीज है ना, where you know what to expect. लेकिन हाँ, जीशान जो बोल रहे हैं, I still believe Morocco can beat Spain. This is the only upset. To be very honest, I think badly Switzerland. required for world football. Badly required. Imagine North America, Asia और Africa के teams बाहर हो जाए तीनों ही. It's badly required, bro. This thing to happen. Not that I hate Spain people. एक और गोल हो गया भाई. Wally. भाई Paqueta with his right foot. South Korea, honestly. Yeah, I think they've. And I'm sure the headlines will be Brazil is going to win the World Cup, etc. But I hope football was so easy, right? I hope this doesn't turn out. But congratulations, man! Great, बहुत sad होगा performance. कोरिया के लिए. But I don't know, yaar. Sorry, yaar, guys. I know Brazil fans. I know I'm not liking the celebrations, man. I think these are they're overdoing it. But I can understand being the players. That's great racism from Putin. He's saying which Japan lacks today. Brazil has that. He And means मुझे ये South लग रहा है Korea. like Brazil were very angry जो जर्मनी ने like celebration that thing आज Brazil भी are disrespecting थोड़ा मुझे लग रहा है मतलब सबकी अपनी ओपिनियन है बट आई थिंक थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल है अपोनेंट्स की तरफ ना the way they are doing this थोड़ा नहीं, डांस now तो I'm कल्चर feeling a का bit पार्ट है, angry. लेकिन I want them to get out of this World Cup. But they always dance. Like whenever they win, like whenever they score, they Yeah. always have that dance. That Bebeto dance. Yeah. All that. I think the They manager always getting do that. involved थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है like हाँ, manager man, भी वो involved वाला last week. डेफिनेटली थोड़ा सा
वो सरप्राइजिंग बट एनीवे वो इमेजिन सिचुएशन जैसे इफ यू आर द मैनेजर द प्लेयर्स ऑल कम टू यू मतलब आप 3-0 बीट कर रहे हो like you cannot like kind of say no to that like one of those things वो peer pressure बोलते हैं ना kind of that is what happened. But Lucas Paqueta really looked good. He's looked awesome in fact. The We best shall thing is see. Fred We is not shall. playing. And he's taking Fred role ना because आप देखो he's a central midfielder who's getting this box like anything. Brazil was not in form at that time. Yeah, that's a good point. उस समय I think Brazil was more defensive than Argentina. भाई त्यागो सिल्वा दिखे भी नहीं है क्यों नहीं दिखे बिकॉज जरूरत नहीं पड़ी ना हवांग का 2 मोमेंट से बस आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट इज एलिसन हैज बीन सीन हैप्पी फॉर त्यागो सिल्वा गेटिंग असिस्ट मिला त्यागो सिल्वा को असिस्ट मिला क्या हम्म? हाँ यार रिचार्लिसन वाला गोल उसका था मैं भाई साहब त्यागो सिल्वा का असिस्ट था दैट वाज अ ब्यूटीफुल रन बाय त्यागो सिल्वा ब्रो देन वाओ मैं तो अभी रियलाइज किया नाइस वन यार थैंक्स पुदिन टू शेयर दैट चलो समथिंग टू बी हैप्पी अबाउट डिस्पाइट नोइंग दैट ब्राजील आर इन नेदरलैंड्स ब्रैकेट How बक्सा much ब्राजील did Brazil beat North Korea by in the 2010 World Cup? 7-0 था क्या नहीं वो पोर्चुगल थी 7-0 था। वो तो पोर्चुगल थी हाँ, 7-1 पोर्टुगल थी। Portugal. आई थिंक पोर्चुगल थी रोनाल्डो ने भी गोल मारा था उस मैच में। हाँ हाँ रोनाल्डो हिट ब्राजील का नैरो विक्ट्री था जहां तक मुझे याद है अगेन 3-0 वो था. ग्रुप में था ना Group, yeah. Ivory हाँ Coast was the other team. it was Portugal North Korea I think you're आई remembering थिंक it बिगेस्ट वर्ल्ड कप correctly विन तो नहीं होने वाली, आज वो हंगरी की है ना? 9-0. मैंने अभी चेक करा था 10-1 हंगरी 10-1. की विन है 10-1। 1954. आशीष वाह, बोल रहे बट मेरे को सर ब्राजील एग्जैक्टली मेरे को अपने नहीं याद गलती है। से सीख के आए हैं उन प्लेयर्स को ज्यादा ट्रेन करके लाई है जिन्होंने इतना प्रेशर नहीं झेला है आई डोंट नो यार मतलब अगेन नेमार कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी प्लेइंग लाइक दिस एक्चुअली साउथ इट्स बीन कोरिया कुड हैव डन बेटर, लाइक थोड़ा बेटर फाइट कर सकते थे साउथ कोरिया ना। लाइक मेरे को लगता है पूरा जैसे फर्स्ट गोल हुआ ना, उन्होंने पूरा ही हार माने, लेकिन थोड़ा डिसअपॉइंटेड कोरिया से ना मैच, लाइक But they've शुड हैव बीन also been बेटर। so open, like defensively, that structure has just not been there. They've just been opened up. Like, you don't expect this in a round of 16 game at and all. Like, especially South Korea is yeah, known to kind of have the structure press as a yeah, team yeah. very surprising आई very थिंक यूरुगाई surprising होती ना शायद, यूरुगाई एंड ब्राजील वुड हैव बीन मच बेटर। लाइक यूरुगाई कुड हैव रियली डिफेंस को टेस्ट कर सकते थे विद हाँ नूनेज एंड इटली से वो क्रोएशिया वाला टोरेस। सीन थोड़ा उस टाइप का परफॉर्मेंस जैसे हम बात कर रहे थे क्रोएशिया के बारे में इमशे बोल रहे हो क्रोएशिया विल बीट ब्राजील ऑन पेनल्टीज Yeah. stop आई the विल लव count इट। 8-0 no loading you think Croatia will give Brazil a tough fight impossible Messi is good बोल रहे चलो I'll start that and keep भाई impossible is not there अंकित भाई, पर in आपकी football सेलिब्रेशन चाहिए अगर नेदरलैंड्स जीत गई ना अर्जेंटीना से, आपको एक सेलिब्रेशन वीडियो चाहिए। यार वो बोल दिया वही जिंक्स हो गया मेरे लिए तो लेकिन आई नो श्रेय वांट्स बेस्ट ऑफ मी ऑल लव टू श्रेय नहीं लेकिन सच्ची, आई विल ऑनेस्टली लव मुझे इट बिकॉज लगता नहीं होगा यार और लगता अंकित नहीं भाई, होगा बिकॉज मैं चाहता हूँ थोड़ा सरप्राइज हो, लाइक पोर्टुगल पहुंचे फाइनल में, नेदरलैंड्स आई पहुंचे, आई लाइक डोंट वांट टीम्स डोमिनेटिंग ब्रो कम ऑन भाई हो गया भाई ब्राजील सॉरी ब्रो आई एम लाइक आई नो लॉट ऑफ पीपल माइट बी हेटिंग मी दिस क्योंकि मैं पॉइंट जब मैं पोर्टुगल का डायरेक्टली बोल रहा स्क्वाड हूँ देख रहा हूँ ना, लाइक इंग्लैंड एंड पोर्टुगल कुड हैव अ वेरी गुड वर्ल्ड कप 4 ईयर बाद, लाइक दोनों पे यंग प्लेयर्स है एंड इट कुड बी स्टार्ट ऑफ डोमिनेंस इन दोनों टीम्स की। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरी टीमों को ना अंकित भाई लग रहा है एरा खत्म हो रहा है, अनलाइक फ्रांस। फ्रांस एक ऐसी टीम है, फ्रांस के पास है प्लेयर्स जो यंग है, लेकिन उनकी मिडफील्ड पोग्बा कांटे तो इस वर्ल्ड कप में मोस्ट प्रोबब्ली शायद नहीं बैकअप्स आर खेले, नॉट देयर बिकॉज ऑफ इंजरीज और फ्यूचर में भी यंग प्लेयर्स ज्यादा बहुत एक्सेस टैलेंट में नहीं आ रहे एज कम्पेयर टू इंग्लैंड एंड पोर्टुगल के जो आ रहे हैं। ये भी एक पॉइंट है एमशे का देखो ब्राजील पीक्ड अर्ली नॉट विनिंग द वर्ल्ड कप एज अ नेदरलैंड्स फैन आई विल जस्ट होप दैट But honestly, I think Netherlands also lack a striker that's how's Gakpo. Obviously, I think lots of goals, but बहुत बहुत but होल्स no, है यार नेदरलैंड्स में बहुत होल्स है इट्स टू मच yeah, exactly. Like मिडफील्ड इट्स ऑल फ्रैंकी it's. I remember that I saw the Ecuador game, and like there were moments when Ecuador they were we just didn't deserve to tossing draw them. that game we didn't deserve Yeah, to you draw didn't that game deserve to get anything there. Ecuador, if they were here, I think that was a team that deserved to get out of the group stages that did not. पता नहीं यार
ये क्या बोल रहे हैं भाई? नो फतेह, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग जापान, आई एम अप्रिशिएटेड देम, एज अंकित भाई आल्सो सेड जापान लैक्स दैट फिनिशिंग क्वालिटी इन फाइनल में। मजाक कर रहे थे भाई, फतेह वाज No, no, जोकिंग I बट thought when you were talking about Brazil and Japan in the same because it's a Brazil versus Korea game. Like I didn't know why, Brazil and Japan were ओके being. ओके So that's why I thought नहीं that that was some sort of racism. Just I was kidding with the racism, but yeah, no, I think Japan. Yeah, we've already talked about it. Forward, everybody needs a good forward, and I think Real Madrid showed that against Liverpool in the Champions League final also. Like that one forward that you have who's going to, and even I think Korea, do they have that guy who scored 2 goals? He's there, right? The guy who scored जो 2 goals. जो नाम है ना Yeah, उसका, yeah. हाँ इज देयर। अरे वो तो ऑनेस्टली द गाय हु कैन ओनली होल्ड इज हेड हाई इन दिस कोरिया परफॉर्मेंस ऑफ 43 मिनट्स इज वैंग। वैंग बहुत बढ़िया खेला है ऑनेस्टली। जब भी वो, आई थिंक देयर वर 3 मोमेंट्स, 2 तो आई थिंक वर ऑलमोस्ट चांसेस एलिसन ने सेव किया, और एक डिफेंड अच्छा किया था ब्राजील ने टू काइंड ऑफ नॉट गेट हिम, लेट हिम गेट पास्ट हिम। आई थिंक इट्स probably, if I'm not wrong, Militao. बिगेस्ट वर्ल्ड कप विन लोडिंग, फेयर इनफ। मुझे भी लग रहा है ब्राजील प्लेइंग कैरम विद साउथ कोरिया। हकीम जी भाई इतना वन साइड होता तो मैं आराम से थोड़ा रेस्ट लेता, मच नीडेड यार, और अच्छा अच्छा डिनर लेता भाई। यहाँ पर एज यूजुअल हमें लेट रुकना पड़ेगा, एंड इतना इंडिया में क्वार्टर्स बहुत डोमिनेंस। अच्छे हैं। क्वार्टर्स एक स्पाइसी बहुत ज्यादा, लाइक बहुत जैसे हमें ज्यादा। चाहिए ना, नेदरलैंड्स अर्जेंटीना, लाइक अच्छा मैच। इंग्लैंड फ्रांस, इंग्लैंड फ्रांस पोर्टुगल आई और थिंक विल स्टैंड आउट, इट विल स्टैंड आउट। इंग्लैंड, और अगर मोस्ट प्रोबेबली जो कल होगा, अगर हम लेके चले पोर्टुगल वर्सेस मोरक्को, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है वो इंटरेस्टिंग मैच होगा। एंड फिर ये Portugal ब्राजील versus क्रोएशिया, Switzerland. एक डिफेंस वर्सेस या अटैक, अच्छे इधर मैच है। इवन पोर्चुगल स्पेन इज आल्सो ब्रिलियंट, क्योंकि वहां भी हिस्ट्री है काफी, मतलब देयर विल बी लॉट अच्छा, ऑफ आप सच स्पेन लॉट्स। को एक्सपेक्ट कर रहे हो मोरक्को के ऊपर? मैं Yeah, yeah. एक्सपेक्ट कर I रहा हूँ, am. आई नो Yeah. मोरक्को बहुत ही फेवरेट है, लेकिन मैं चाहता हूँ मोरक्को, लेकिन आई थिंक स्पेन आएगी। आई Who थिंक did I बिग मोरक्को see विल बिग विन Morocco पेनल्टी। against? मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है पेनल्टी Who से जीतेगी defeated मोरक्को। Morocco? Who defeated Morocco? हाँ Who defeated? आई थिंक मोरक्को मोरक्को तो तो, कोई 7 नहीं डिफीट points. किया। Nobody क्रोएशिया, defeated Croatia. Draw. They beat हाँ Belgium, and then they beat who else? हाँ, दे बीट कनाडा, Canada. या सो अनबीटन हकीम है अभी तो, जियश। लाइक मोरक्को। I feel like Spain will turn on the style tomorrow. The only people who can really pull on an upset is Switzerland, because I saw all their 3 games, and as you know, I'm not an Arsenal lover. I don't know whether you guys know, like I really hate them, but Shaka keeps impressing. Like, and for him to hold his own against Serbia in that grudge match, yeah, I mean I was वहां hoping for तो थोड़ा Serbia. ये भी था ना, मतलब आई थिंक इट्स अबाउट पर्सनल Yeah. स्टोरी एज कुछ वेल, ज्यादा राइट? ही हो गया अबाउट, था। हाँ नहीं वो जो किया वो तो पता है मुझे, लेकिन मैं बोला क्यों हुआ ना, मतलब आई थिंक यहाँ पर आई थिंक शाका इज नॉट एक्चुअली स्विस, राइट? वी ऑल नो दैट। बट अंकित Yeah, भाई, yeah, मैं क्वेश्चन पूछना absolutely. चाहूंगा आप दोनों से, लाइक चाहे स्पेन, मैं खुद मानता हूँ स्पेन विल डोमिनेट मोरक्को, लाइक पूरा फील्ड पे उड़ा के रख देगी, लेकिन गोल्स का ना चाहे एक मैच में जरूर आए, लेकिन उनकी फाइनल बॉक्स में ना फिनिशिंग नहीं है। चांसेस विल बी हैपनिंग, पर वो फिनिश नहीं कर पाएंगे। तो But आपको ये Morata लगता है has कि, been Morata is in form right now. Suddenly, बट he's scoring अंकित goals. हाँ भाई, मैं एट आपसे वन वैसे ही पॉइंट पूछूंगा, गोल्डन बूट, मोराटा फॉर्म में है, बट डू यू ट्रस्ट मोराटा गोल कमिंग, पूरी तरीके गोल से? लोडिंग, गोल लोडिंग रफीनिया पकेटा। अरे बचा My लिया God. साउथ कोरिया के गोलकीपर ने, जस्ट अबाउट। इफ ब्राजील डांस सेलिब्रेट, सुआरेज वुड बाइट देम ऑफ द पिच। आई लाइक दैट। I जस्ट agree इमेजिन। that like Spain, but I somehow feel like Spain probably took the Japan defeat. Like I have a feeling that because when I saw them against Germany, they were good enough. Like okay, Germany played well too, but the way या Spain were bossing that game too. स्पेन वर गुड एक्चुअली, मतलब इट जस्ट अबाउट, और वो रिमेंबर इवन दैट वाज द थर्ड गेम ना, तो आई थिंक Yeah, देयर वाज स्टिल वन और टू चेंजेस, आई रिमेंबर देयर वाज स्टिल वन और टू चेंजेस। yeah, तो yeah. हाँ यार, मतलब आई नो लॉट ऑफ ब्राजील फैंस विल बी लविंग इट, बट अपन वही, मतलब ऑनेस्टली आई नो मैन सिटी फैंस हमारे चैट में आते हैं, और मैं हमेशा यही बोलता हूँ दैट गिवन अ चॉइस आई वुड लव टू सी लाइक अ स्टोक सिटी देन अ मैन सिटी। पीपल लाफ एट दैट, बट दैट्स व्हाट आई एम। आई डोंट लाइक एनी साइड You love डोमिनेटिंग, the दैट्स व्हाट। underdogs. अरे फिफ्थ गोल आना था यार, दैट probably deserved it. What a move by Vinicius Junior, man, the guy is like crazily good. Crazily good. It's crazily, look at that भाई, that Rafinha थोड़ा हाई था बस, that was superb outside of the boot, wow.
what a pass that would have been, right? आई थिंक हम जिस तरह हाइप कर रहे हैं, लाइक एम्बापे तो मेरे ख्याल से है ही We- वर्ल्ड का लाइक नंबर राइट नाउ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर वर्ल्ड का, आपके हालैंड हो गए, लेकिन विनीशियस जूनियर, लाइक हम बेलिंगम की बात करते हैं, लेकिन एक ऐसा लड़का है, लाइक विनीशियस जूनियर का नाम नहीं आता किसी की टंग पे सबसे Right. पहले, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर रहा है वर्ल्ड का, लाइक परफॉर्मेंस के एम्बापे से भी ऊपर, अगर हम लीग्स अरे चैंपियंस लीग इसलिए को भी मैं बोल रहा गिने। हूँ ना, श्रेय, मेरा तो प्रेडिक्शन था कि गोल्डन बॉल वो ले जाएगा, लेकिन अभी यार अभी लगता है विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट इज गोइंग टू बी बिटवीन मेसी एंड एम्बापे ओनली। आई कांट सी एनीवन एल्स टेकिंग द गोल्डन बॉल। मार्कस रैशफोर्ड नहीं ले सकता, लाइक अगर 2-3 गोल और मार दे। नहीं यार, हाँ यार, कम ऑन, वो सब्स्टिट्यूट अपीयरेंस किया है, एज मच एज ही गॉट द गोल्स। गोल्डन बॉल इज द बेस्ट परफॉर्मर बाय द वे, फॉर पीपल वंडरिंग, नॉट द हाईएस्ट गोल स्कोरर, which obviously मेसी को बांटा गया था 2014 में, as much as he's a goat and he deserves it this time more, arguably even now, but 2014 में him getting the golden ball was the biggest farce of the entire world, and everyone knows it, it's a fact. But anyway, it is what it is. Brazil को कोई बोलो, it was Germany who did 7-1, not Korea. Football kick, good one यार, कहीं ना कहीं। That's interesting. Football kicks, how are you? मैं Long जब time देखा no था ना see. राउंड ऑफ 16 के टाई, मेरे को सब पता था सबसे गंदा मैच ये होने वाला, लाइक जो मैंने देखे थे ना टाइज, Hmm. सैली यही था जो सबसे वन साइडेड लग रहा था जब सारे मैचेस देखे थे ना, लाइक सारे मैच मैं कहूंगा फ्रांस पोलैंड में मात्र इतना अच्छा नहीं हुआ, इंग्लैंड सेनेगल भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसमें क्रेडिट भी जाता है जिस तरह इंग्लैंड फ्रांस खेली है। Where are पांचवा they? गोल आने वाला है। Where What a is their? save! What a How are they save! giving so much space to their wide men when everybody knows Richarlison and Vinicius Junior are so dangerous? Like, Their dream is over, bro. They are like mentally not नहीं, there. अंकित भाई, पर फतेह भाई की ये बात सही है, लाइक स्टार्टिंग में भी आप थोड़ा डिफेंसिवली स्टार्ट करते, गेम को 0-0 रखते, लाइक कहीं ना कहीं टैक्टिकल नाइविटी दिखी है मैनेजर की ना, लाइक ऐसा लगा कोई काम ही नहीं करके आए, बस ये बोल हाँ रहा है पूरा लाइक ही यार, बच्चे मतलब जाओ खेल के आओ, बहुत बड़ा कर लिया बस, अचीवमेंट कर ली, लाइक सैडली बहुत डिसअपॉइंटमेंट करे कोरियन ना आज, एक वही लीडर बोल रहे टैक्टिक्स हैं नहीं ना, दिखे यहाँ पर अंकित बहुत भाई। ही ओपन लगी है, बहुत ही ओपन लगी है। बहुत open. They're too open. I think even at 2-0, they needed to take it to halftime at 2-0. I mean, they were 2-0 down against Ghana, like at least score now, at least score now, at least score one, चलो like before. कर दो गोल, कम ऑन। नहीं नहीं। I mean, at मैन, वी आर least, ऑल सपोर्टिंग साउथ कोरिया, प्रीटी श्योर। exactly like. हु इज नॉट अ ब्राजील सपोर्टर यहाँ पर, प्रीटी श्योर। मोरक्को हमेशा अटैक करती है और उनके स्ट्राइकर तगड़ा है, स्पेन को बीट कर देंगे। आई फॉलो अफ्रीकन फुटबॉल, मोरक्को इज ओनली टीम जो क्लास पे खेलती है, नॉट फिजिकल। नहीं, मोरक्को इज वेरी गुड। द रीजन आई सेड स्पेन इज ओनली बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। आई थिंक इट बी अ क्लोज गेम, और जस्ट लाइक इट हैपेंड इन जापान एंड क्रोएशिया, I feel it'll go down that way. I can see that going to extra time as well, actually. कल आएंगे हम live again. We will discuss the video as well. Bruno might win the golden ball if they reach in final. Yeah, Bruno is also a contender. गुड Sorry, शॉट। Bruno. I missed Bruno. लेकिन Bruno third match he didn't play, ना? Did he? नहीं, थर्ड मैच में नहीं खेला था ब्रूनो, आई थिंक पोर्टुगल ने बहुत प्लेयर्स को रेस्ट करा था जो लास्ट मैच था ना, लाइक Hmm. दे एब्सोल्युटली रेस्टेड एंड, बट अंकित भाई वही है, ब्रूनो हैज बीन प्लेइंग वेरी वेल दिस टूर्नामेंट में, जिस तरह लाइक हम क्रिटिसाइज करते हैं ब्रूनो को, बट द वे ही प्लेड इन दैट मैच, लाइक और बहुत अच्छा खेला टूर्नामेंट में ना, लाइक Yeah, ब्रूनो everything बहुत is flowing through Bruno only, यार। मतलब he's very crucial to that team. फर्स्ट मैच में भी Uh, याद है कि भाई गाना के जो गोल मारा था वो पास भी ब्रूनो फर्नांडिस ही निकाला था, जो पोर्टुगल का hmm. गोल हुआ था, ही हैज हैड Yeah, अ फैंटास्टिक बिल्कुल। टूर्नामेंट। इवन जो बाबा रहमान ने एक मिस्टेक किया था, वो भी आई थिंक ब्रूनो का पास था। इट हाँ, लुक्स लाइक द क्लब टीम वर्सेस इंटरनेशनल टीम, मतलब ऑनेस्टली इट लुक्स लाइक जो संडे लीग टुनीशिया टीम। ब्राजील का मैच होता ना, मैं बोलूंगा, आई डोंट नो इफ यू गाइस वॉच्ड इट, एवरीवन, बाय द वे हाफ टाइम इज 4-0 टू ब्राजील। कांग्रेचुलेशंस ऑलरेडी टू ब्राजील फैंस। अब आप लोग वेट करोगे कल के लिए। अब आप लोग बोल सकते हो दैट, डू यू थिंक टुनीशिया वर्सेस ब्राजील जो एक फ्रेंडली मैच था 3 महीने पहले हुआ था, शायद 2-3 महीने पहले, उसमें शायद 5-1 या 6-1 हुआ था। I think that was, in fact, a better performance of an opposition in a friendly match than what Korea has done. Korea, I don't know, yaar, apart from Wang, no one has stepped up even. मतलब आए नहीं है पिच पर, ऐसा लग रहा है. Maybe the goalkeeper also. Arguably, I know, Fateh, would you say any of the goals were the goalkeeper's error? I think probably not, right? Probably not. Probably not. I mean, I हाँ, think तो you can't goalkeeper भाई blame them. दो जन को दे रहे हैं It's a हम लोग quality credit. thing. They needed to sort of, just play 11 men behind the ball, but I don't think that's their style completely. They're very. Hmm. I mean, they were very good against Uruguay. I thought, they were so good and they were so physical. But you're playing 4 games in 10 days. I think that also takes a toll, especially if you're a physical team. And I don't think they have a bench or any of that. They have decent players, and I just don't think they have
the pace or anything right now. So that's कोरिया okay. कैसे खेले मालूम है फतेह? कोरिया, I'll tell you how. Like let me explain. Like you had sometimes मतलब I know people might not agree, but I actually have a very different opinion. Marcelo Bielsa knows football inside out. I am not denying it. लेकिन I think his philosophy for the Premier League in the long run wasn't ideal in Hmm. my personal opinion. ठीक है? Hmm. Because when you have a team coming, say who are like not your favorites and doing what he does, is there you're inviting pressure, you're Yeah. inviting कि यार आपको concede करोगे. Literally Korea was doing that, Just and in fact not even with press. So that's even worse. तो but anyway, uh, श्रेय, over to you यार. मतलब क्या बोल रहे हो? मतलब is it good enough this performance from Brazil to say that? I'll just be back in 5 minutes, हाँ guys. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. श्रेय क्या बोल रहे हो? मतलब is it the performance of the World Cup as of now? Would you मतलब which is the performance of the World Cup as a team? One half अगर बोलो तो I would have to think यार, लेकिन मुझे लग रहा है that it is right up there. It is right up there in the. अगर हम परफॉर्मेंस में जाए, लाइक अगर हम मार्जिन से देखें तो शायद हम स्पेन को भी देखें कि कोस्टारिका के साथ जिस तरह लाइक द थ्रैश्ड, एंड वो भी 8 या 9 या 10 नील भी खत्म हो सकता था. बट अंकित मैं भाई अगर मैं कॉन्टेक्स्ट भी देख रहा हूँ परफॉर्म थोड़ा, बिकॉज इट्स राउंड ऑफ 16, बिकॉज ब्राजील इज हैविंग नेमार कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी. थोड़ा वो देखकर. लेकिन हाँ, स्पेन वाला है डेफिनेटली. सऊदी कैन नॉट बी रूल्ड आउट. सऊदी जो अंकित भाई पता नहीं कमबैक मैं है. क्यों, मैं आई थिंक लोग सरप्राइज हो गए इस चॉइस से, बट मैं राइडर कहूंगा बेल्जियम और मोरक्को का. दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि दैट उसने वाज मैप पे वेरी डाला मोरक्को को. लाइक मैं यहाँ पे सच बोलूंगा, मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी मोरक्को विल बीट बेल्जियम. मेरे को लगा बेल्जियम विल बाउंस बैक, विक्ट्री करके कंफर्म करेगी. उन्होंने ये नहीं कि सिट बैक करके हराया बेल्जियम को. दे वर द बेटर साइड. वो 3-0 भी जीत सकते थे, वो 4-0 भी जीत सकते थे. इवन मैं कनाडा का भी कहूंगा, कनाडा डिस्ट्रॉयड, बेल्जियम. एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड बेल्जियम. Like they don't बिल्कुल deserve to be on the losing side. भाई, वो They were पेनल्टी ना cheated. अगर There should जाती have ना been two डेविस की. penalties. हाँ, और रेफरी आल्सो मिस्ड इट एब्सोल्युटली. इट्स फर्स्ट वन साइड डोमिनेशन इन दिस राउंड ऑफ 16 यार. इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ अनमोलदीप, इतना डोमिनेशन मैंने राउंड ऑफ 16 में ही, मतलब अगेन, मतलब मी फतेह श्रेय हमारे बीच में वी हैव सीन 8 वर्ल्ड कप्स यार. मुझे याद नहीं आ रहा इतना डोमिनेशन मुझे खुद कहीं नहीं देखा याद है आ रहा मैंने. कि इतनी डोमिनेशन नहीं देखी मैंने. राउंड ऑफ 16 में आई डोंट रिमेंबर इतना डोमिनेशन एट ऑल, टू बी ऑनेस्ट. मतलब द ओनली सी व्हाई इज ब्राजील 7, सॉरी ब्राजील 7 बोल रहा हूं, जर्मनी 7 ब्राजील 1, व्हाई इज इट फेमस? फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर टू टॉप टीम्स. सेकेंडली दैट लेवल ऑफ मार्जिन, और वो एक इम्पैक्ट किया था ना इन सेमीफाइनल, दैट वाज ह्यूज फॉर जर्मनी. इनफैक्ट ये अगर अगर टॉप टीम कर होता ना, तो दिस वुड हैव बीन राइट अप देयर इफ इट वाज लाइक, नो डिसरेस्पेक्ट टू कोरिया, बट व्हेन आई से टॉप टीम, आई टॉकिंग टॉप से टॉप 10 रैंक टीम्स उसमें से रहते ना, तो यहाँ पर आई वुड हैव गॉन एज फार टू से सो गुड. बट हाँ, अगेन ओनली थिंग मैं बोलना चाहूंगा, या आप सोच सकते हो कि यार मैं एक नेदरलैंड्स फैन भी हो, श्रेय ऑब्वियसली हैज पिटेड जस्ट लाइक मी पोर्चुगल जीतेगी. कहीं ना कहीं मुझे लगता है ब्राजील विल मीट दीज टीम्स. और जो सेलिब्रेशंस हुए वाइल 3 गोल्स के, मैं अग्री करता हूँ. एक पॉइंट श्रेय का ही था कि भाई जो कोच के साथ सेलिब्रेट किए वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आई फील दैट्स अ लिटिल बिट ओवर द बोर्ड. ये ओल्ड स्कूल बोल दो, मुझे कुछ भी बोल दो, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है. बट मुझे एंड ऐसा प्रॉब्ली शेयर. ओपोनेंट्स का लगा, लाइक वो हार रहे 4-0, लाइक व्हाट्स द नीड कि यू आर पुटिंग फायर. अगर आप 4-0 हार रहे होते, कोई कर रहा होता, यू गेट ऑफेंडेड. लाइक जर्मनी से मैंने इतनी बार देखा ब्राजील प्लेयर्स ऑफेंडेड फील करते हैं, तो व्हाई आर यू डूइंग दैट यार? वो प्लेयर्स हार रहे हैं. एंड मैं एक और बात बोलूंगा, आई अंडरस्टैंड उनकी कोई रीजन होगा सेलिब्रेशन का, बट यू आर बीटिंग साउथ कोरिया यार. फाइनल नहीं है, सेमीफाइनल नहीं है, लाइक यू आर बीटिंग साउथ कोरिया. लाइक नो डिसरिस्पेक्ट, ये अंकित में वही बात होगी कि चेल्सी पीटरबर्ग यूनाइटेड को हरा रही है 4-0 और हमारे प्लेयर्स वहां पे डांस कर रहे हैं. लाइक अगर चेल्सी का मिशन में डांस करो पीटरबर्ग यूनाइटेड को हरा के, लाइक आई विल स्विच ऑफ, मैं सर मारूंगा दीवार पे. यार कल्चर है लाइक. नहीं, वो कल्चर की बात हो जाती वहां, तो थोड़ा सा मतलब समझना पड़ेगा सांबा जो, इसलिए मैंने सब्जेक्ट में सांबा से सॉल्व लिखा था मैं, जस्ट सो पीपल नो. भाई चिन्मय, आप अगर हो तो बोलो यार, अगर फ्री हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अभी यार. विल बी ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू. अगर आप थके हो तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड इट्स वीकडे, बट विल बी ग्रेट टू हियर. चिन्मय हम हमारे बात नहीं हुई थी कल इंग्लैंड के परफॉर्मेंस के बाद में. वी कैन टॉक अ लॉट, लेकिन इफ यू कैन बी हियर इट विल बी ब्रिलियंट. फतेह इज आल्सो हियर, श्रेय इज आल्सो हियर. और अगेन भाई, जो भी लोग देख रहे हैं, प्लीज लाइक कर दीजिए स्ट्रीम. आई नो there will be people who will be watching the stream जो expect कर रहे हैं यार मुझे to be absolutely neutral. I cannot be absolutely neutral all the time, because यार मेरी भी एक टीम है, श्रेय की भी एक प्रेफरेंस है somewhere down the line, और फतेह के भी सेम है. I feel that Brazil, while they are absolutely bonkers, बहुत ही अच्छे खेल रहे हैं और they are one of the best. अभी to call them, just चिन्मय बोल रहे ना one finalist confirmed, I don't believe in that. I don't believe in that, because
देखिए what you do on that day is important, और ब्राजील आर द बेस्ट एग्जांपल कमिंग बैक टू 2014. आई नो 2014 में सेमीफाइनल में यू डिडंट हैव नेमार, यू डिडंट हैव थियागो सिल्वा, आई नो दैट, लेकिन फिर भी यू नेवर नो. सेम चीज अगेन, मैं चाहूंगा नहीं इंजरीज हो, लेकिन यू नेवर नो, बिटवीन नाउ एंड देन हो सकता है कि कुछ इंजरी हो जाए और समवन डजंट परफॉर्म वेल. डू यू थिंक ब्राजील वर्सेस क्रोएशिया विल बी द सेम? नोवेयर क्लोज. आई होप सो. नो, नोवेयर क्लोज. क्या बोलोगे? एक्सपीरियंस जो है क्रोएशिया का, इट विल स्टैंड आउट, राइट? दैट मिडफील्ड यार, ऑनेस्टली, मतलब इट इज वन ऑफ द टॉप 3 मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड, क्रोएशिया का. आज परफॉर्म नहीं किया, वो अलग चीज है. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मिडफील्ड, और साथ ही जो उनके सेंटर बैक्स है, एक्सपीरियंस उनके पास, कीपर इज आल्सो लुकिंग इन गुड फॉर्म. तो वो टीम ऐसे, लाइक क्रोएशिया की सबसे बड़ी क्वालिटी है, क्रोएशिया यहाँ पे दे वोंट गिव देम स्पेस जो कोरिया ने दी. वो यहाँ पे आके वो फुटबॉल नहीं खेलने वाले कि जहाँ पे आपको स्पेसेस मिलेगी काउंटर करने के लिए. और साथ साथ अगर आप क्रोएशिया को देखोगे, क्रोएशिया इज अ टीम जो हमेशा ओवर पुल करती है, जो उनसे एक्सपेक्टेड है. डिटर्मिन टीम है, जैसे हम बोलते हैं रिजिड टीम है, लाइक वेरी टफ. आप उम्मीद करोगे अब ब्रेक डाउन करेगी, नहीं करेगी. तो वी हैव टू गिव देम प्रेज वेयर इज ड्यू, और उस तरीके का मैच नहीं होने वाला अंकित भाई. बट जस्ट क्वालिटी का डिफरेंस ना पड़ जाए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड अगेन यार, जो लोग बाई चांस हैव नॉट बीन फॉलोइंग द वर्ल्ड कप वेरी क्लोजली, एंड आई नो दैट कपल ऑफ पीपल माइट बी वाचिंग. भाई यहाँ पर देखिए, ब्रैकेट अगेन वो अर्ली ब्रैकेट है, बिगिनिंग ऑफ राउंड ऑफ 16 का. तो यहाँ पर वी ऑलरेडी हैव नेदरलैंड्स एंड अर्जेंटीना, जो टॉप लेफ्ट का आपको दिख रहा है, तो दे आर वन क्वार्टर फाइनल्स. द सेकंड क्वार्टर फाइनल लुक्स लाइक इज गोइंग टू बी क्रोएशिया एंड ब्राजील. और टॉप बॉटम लेफ्ट का, टॉप राइट का आपको पता ही है, इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस इज वन क्वार्टर फाइनल. एंड बॉटम राइट का जो बाकी है, कल देखते, मेरा ओपिनियन में तो इट बी पोर्चुगल स्पेन. बट अगेन स्विट्जरलैंड मोरक्को अगर हो जाए तो आई वोंट बी सरप्राइज, क्योंकि अभी तक राउंड ऑफ 16 में कोई अपसेट नहीं हुआ है. यू कैन आर्ग्यू दैट इट्स नॉट एन अपसेट ईदर ऑफ द रिजल्ट्स. तो यू कैन से दैट कल माइट बी द डे, बिकॉज समवेयर ऑन द लाइन आई थिंक वो एक मन में रहेगा फॉर द टीम्स दैट आर प्लेइंग. बट अगर ब्राजील जाती है, ऑब्वियसली जा रही है अब तो क्वार्टर फाइनल्स में, तो ब्राजील अर्जेंटीना हो सकता है, व्हिच आई नो दैट इज द बॉक्स ऑफिस, एवरीवन वांट्स इट, नो टू वेज अबाउट इट. मैं पर्सनली चाहता हूँ नेदरलैंड्स, बिकॉज आई एम नेदरलैंड्स फैन इंटरनेशनली, जस्ट टू लेट यू नो, आफ्टर इंडिया. और यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको लग रहा है इंग्लैंड फ्रांस. मैं बोल रहा हूँ इंग्लैंड. आई नो पॉपुलर चॉइस फ्रांस है, श्रेय बोल रहे इंग्लैंड, फतेह, इनफैक्ट हम तीनों बोल रहे इंग्लैंड. लेकिन कल के परफॉर्मेंस के बाद में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, सच में बोलो तो. इट्स बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस. मैं फिर भी आई स्टिक टू द प्रेडिक्शन. और बॉटम राइट का इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से राइट नाउ, बिकॉज हमें पता नहीं. तो देखिए, यहाँ पर लग रहा है दैट जो चिन्मय ने बोला था, आई फील दैट यस, पॉसिबिलिटी ब्राजील है ऑन फॉर्म दैट दे विल विन दिस मैचेस. बट लेट्स सी. या आई नो दैट मुदित, आपको शाउट आउट दिया था यार, आप पता नहीं शायद बीच में थे नहीं. आई डिड गिव अ शाउट आउट एंड सेइंग दैट यू डिड प्रेडिक्ट 5-1 टोटली इन ब्रो. चलो चिन्मय, मैं आपको भेजता हूँ. कहाँ पे भेजूं भाई? इंस्टा में भेजूं? लेट मी जस्ट सेंड द लिंक टू चिन्मय. थोड़ा हो जाए चिट-चैट चिन्मय से भी. थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ही सरप्राइजिंगली 4 लोग अभी पैनल में आने वाले हैं. चारों लोग फ्रांस इंग्लैंड में बोल रहे हैं इंग्लैंड, व्हिच इज सो नॉट पॉपुलर, आई नो दैट. लेकिन समटाइम्स दैट्स व्हाट हैपेंस, राइट? लेकिन भाई अरे अगर ब्राजील, ओवरऑल डिफिकल्ट होते ना, तब आई थिंक इंग्लैंड बहुत पहले हार जाती है. लेकिन मिडफील्ड इज अ वीक पॉइंट फ्रांस के. अगर लेकिन मिडफील्ड, लेट्स टॉक अबाउट ब्राजील अभी थोड़ा सा. विल कम बैक टू इंग्लैंड कपल ऑफ मिनट्स. मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ भाई. अगेन रिमेंबर, नेमार इज कमिंग फ्रॉम इंजरी, श्रे. सो 4-0 है. उसके बाद क्या है, तो मतलब आई थिंक आई वुड हैव जस्ट टेकन ऑफ नेमार अभी, इफ आई वाज टीटे. व्हाट डू आई यू थिंक थिंक? ही शुड हैव बीन टेकन ऑफ. एंड नेमार के साथ मैं कहूंगा आप इवन विनीशियस को भी रेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि वो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है. विनीशियस को भी इज मच बेटर सेकंड हाफ में थोड़ा रेस्ट दे दीजिए फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैच. और साथ ही साथ अंकित भाई, उनको फुल बैक्स में भी ना, जैसे डेनिलो है, डेनिलो फुली फिट नहीं है लाइक अभी भी ना, तो डेनिलो को भी कोई रिस्क करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डेनिलो बहुत बड़ा पार्ट है इस टीम का. और अगर वो इंजर्ड हो गए अगले मैच के लिए तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी. तो आई थिंक इन 3 प्लेयर्स को तो जी शुड टेक ऑफ, एंड उसके बाद आप बीच में चेंजेस करते रहिए जैसे करना है. ओके देव, थैंक्स फॉर द रिकमेंडेशन यार. मैं स्टार करके रख रहा हूँ. आई विल कम बैक टू इट. आप अब मुझे डीएम कर सकते हो तो ब्रिलियंट रहेगा. बट टॉकिंग अबाउट डीएम्स, यहाँ पर अगेन भाई, एवरीवन वाचिंग, देयर इज अ गिव अवे हैपनिंग. So I would expect you guys to participate and get a free jersey for yourself without any cost, without any investment. तो why aren't you doing it? Let me know in the chat, everyone. क्योंकि यार यहाँ पर all you have to do is you have to just put my particular post आपके स्टोरी में, और आपको प्रेडिक्ट करना है. अभी भी ये टाइम है. You have just a couple days, लेकिन यार go for it. All you have to do is just predict who is going to be the winner, who is going to be the second team, and which is going to be the third team. मैं अभी दिखा भी सकता हूँ आप लोग के लिए, लेकिन लेट मी जस्ट पुट इट राइट नाउ. आई नो चिन्मय इज वेटिंग. चिन्मय, जस्ट अ सेकंड.
मैं एवरीवन वाचिंग ध्यान से देखिए, ये मेरा ऑलमाइटी ब्लूज एफसी का इंस्टाग्राम अकाउंट है, लिंक ऑलवेज इन द डिस्क्रिप्शन है हर एक वीडियो में। आप मेरा इंस्टाग्राम का इजी टू फाइंड ऑलमाइटी ब्लूज एफसी विद नो स्पेसेस ऑन इंस्टाग्राम। दिस इज द पोस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट along with sportshub.in. You have to just put this in your story, second picture of this post, उसमें विनर, रनर अप और थर्ड डालना है। और आई होप इवन पैनल आप लोग भी यार प्लीज पार्टिसिपेट करें, इट Yeah, विल surely. मीन अ लॉट। ऑफ कोर्स यू कैन विन अ फ्री जर्सी यार। मैंने ऑलरेडी ले लिया फ्रॉम sportshub.in, so they have actually given me a Netherlands jersey which is absolutely fantastic quality. You have to just put in your predictions, that's all। ठीक है, स्टोरी में आपको टैग करना है sportshub.in और ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, इतना सा है बस। ठीक है, तो 24 आवर्स के लिए आपको स्टोरी रहेगा, यू नो दैट हाउ, दैट्स द ड्रिल। तो भाई सब लोग मिस मत करना, दैट्स माय पोस्ट, मैंने किया था 2 दिन पहले। लेट्स ऐड चिन्मय। चिन्मय भाई साहब, क्या क्या हाल है? All happy. Hello, Mr. Shrey. All happy. Hi, Chinmay bhai. England is in the quarters. मेरे लिए और क्या खुशी की बात है. You know, हाँ, yesterday I was on the we'll channel. come to England, we'll come to England, we'll I just take think, a but couple of आज comments। I've been listening to, you know, ये stream में सुन रहा था, you know, while watching the match, मैं commentary बंद कर दी थी, मैं stream सुन रहा था. And first of all, I agree. वो जो coach के साथ celebration था, थोड़ा over the top था, because it kind of, you know, puts a little bit of negative mentality, not only for this game, but even for the next game, you know, coming up. They start Yeah, it feeling, could be overconfidence also, a thin line। of course, because, you know, I agree with Shay what he said. I did not see, honestly, वो जो 7-1 thrashing था, I did not see Germany doing a lot of dancing and all, you know, even at the home of Brazil. Against South Korea, look, they've been amazing, नहीं, but I वहां don't तो लेकिन कल्चर हो जाता है ना, मतलब चिन्मय कहीं ना कहीं। I don't feel they deserved, you know, after that particular goal, first goal फिर भी, second goal फिर भी, Vinicius is known, Paqueta is known, but the dance with the coach and all, I think it was unneeded. Now, of course, it won't come back to bite them in this game. देखते हैं आगे क्या जाके होता है। या अगेन, मतलब ऑनेस्टली, मतलब मैं तो ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ। मेरा व्हाट आई फील इज व्हाट आई से, एंड दैट्स व्हाट यू नो वी हैव मेंट फॉर। बाय द वे भाई, सब लोग जो भी देख रहे हैं, मैं शाउट आउट देना भूल गया, सॉरी, बट भाई श्रेय एफसी को चेक करिए एवरीवन। श्रेय एफसी, भाई ही नोज स्टफ। श्रेय, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं हो, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब टू हिम। Let's get him to 1K as soon as possible. That's Shrey FC. And of course, by chance, if you are new to the channel Almighty Blues FC, do subscribe to us as well as Almighty Sports Plus. आप देख रहे हैं बैनर चल रहा है आपके स्क्रीन पे नीचे, as well as there are links in the description, पहले ही आपको मिल जाएगा लाइन में, एब्सोल्युटली। लेकिन हाँ, काफी सारे यहाँ पे कमेंट्स रहते हैं, बट अगेन कमिंग टू दी लाइनअप, आई कैन सी नेमार कमिंग आउट। सो भाई श्रेय, वाज नेमार रियली इंजर्ड? क्या हुआ ये? आई थिंक मैं ये कहूंगा he's coming off की सही कॉल भी अंकित भाई, बिकॉज आई थिंक नेक्स्ट मैच के लिए he's going to be the most important player for them। और साथ ही साथ I will love to see Danilo भी and Vinicius भी I think substitute हो, क्योंकि वो नहीं, इनकी बट important he's player है। coming back to play। नेमार is coming अच्छा, back, there's coming no back to play। substitution। मेरे को हाँ, लगा that's what I पहले meant, शायद he's substitute हो रहा coming out है, from the dressing room back to the playing ground। क्योंकि मेरा आपसे पीछे चल रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, ही इज कमिंग, आ गया है ग्राउंड पे, और रफीना के साथ पता नहीं क्या चुम्मी उम्मी ले रहा है, और उसको कुछ सीक्रेट बोल रहा है, जो बेलिंगहम और कल भाई चिन्मय क्या कर रहे थे भाई बेलिंगहम और I don't know, हेंडरसन? मुझे वो देख के सबसे ज्यादा ये डर लग रहा है कि क्या इनने कंफर्म तो नहीं कर दिया ये लिवरपूल जा रहा है। सबसे बड़ा डर मेरा वो था, you know, even during हाँ, the वही game I तो was मैं बोला thinking, इतना भाई, ब्रोमांस। रीस जेम्स इंजर्ड है, नहीं तो वो भी पटा लेता। हाँ, नहीं, ये हुआ है, और उसके एक दिन पहले ही कल, you know, ट्रेंट ने एक पोस्ट डाला है, ब्रोमांस, एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला है कि वो घूम हाँ रहा हाँ, है आई नो विद दैट। बेलिंगहम। सो आई थॉट कि अरे, you know, ये काफी ज्यादा लिवरपूल इन्फ्लुएंस हुआ जा रहा है इस पे। अच्छा, और चिन्मय इज यार ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन। बाय द वे सेकंड हाफ शुरू हो गया भाई, पीपल सेकंड हाफ प्रेडिक्शंस इन द चैट, कम ऑन कम ऑन। एंड यस, डेफिनेटली लाइक द स्ट्रीम, मच लव ब्रो। मुझे टू रिमाइंड पीपल, यस एवरीवन, भाई मॉड्स, अगेन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भाई, जो भी मॉड्स है ना, आई नो इट्स नॉट इजी टू काइंड ऑफ बी देयर फॉर एवरी वीडियो। यहाँ पर एक गोल होने लगा रफीदिया का, नहीं, जस्ट अबाउट सेव्ड भाई। ऑल द मॉड्स यहाँ पर, आई डोंट नो इफ इट्स पॉसिबल, बट डू लेट मी नो यार, जो व्हाटएवर वीडियो प्रीमियर्स we do usually at around noon or before noon or just after noon. I would like all the mods to let me know, yeah, matlab, what is the possibility of you actually being there modding, you know, the videos, because those are like short videos of 10 to 15 minutes, not really long. So it'd be great if we can get some, you know, support on those videos. I'm talking about mods here. I need some mod for those videos in particular. That'll be absolutely brilliant because we do premieres. लेकिन चिन्मय, come on भाई, रोनाल्डो क्या है यार भाई, कल पोर्चुगल की मैच है, आज न्यूज आ रहा है रोनाल्डो का, क्या हो रहा है ये? They're saying he's not going to start, you know. So and Fernando Santos is, you know, he's not impressed with Ronaldo's attitude.
गोलन वाला है। So अरे no man, come on man, how can you miss that? Son bro, how could you miss that goal? एक गोल तो मारो भाई, 7-1 था वहां पर, एटलीस्ट गेट 5-1 जो मुदित ने बोला यहाँ पर। Come on man, that was Yeah. but bad defending from Marquinhos, very bad defending in fact. He was like literally fair and square beaten. 9-0, 7-0, 9-0. But tell Brazil. me, Chinmay, like how happy were you last night, man? 3-0. very, 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 very happy. बहुत And ही, now what happens with France? Like what happens now is but the but game. the thing is, yesterday was not 100% performance, which I expected actually. I expected, but I actually thought thoda better hoga from whatever I saw. So, but it does not change my mind. I still feel we're going to get the better of France. There is Yeah. no, I mean, because I think from our perspective, our group, the kind of group we have, Spain, Portugal, and England and France, the big teams which we have in Oh, our that's a save, man. No wonder. in our Allison made a bracket. save. Allison made some terrific saves already, I must say. 3 terrific saves. But yeah, as in Chinmay is on cloud nine. I know that I France hope supporters we get are. the better of France. I hope we get the better of France. And I'm very confident for the first time. But ऐसे I feel if you talk only on right back ability, I feel if there's one right back in that bracket who can take on Mbappe and who's done it before in the last 2-3 seasons, it's Kyle Is Walker. Reece James. From fit, from fit right backs, from the right backs we have available, I think it would be But Kyle honestly, Walker. भाई चिन्मय सुनो, ये वो I would have started मैं James. खुद ही I बोला would हूँ, have काइल started वॉकर James. मजाक कर रहा था। I would have हाँ, started James. Honestly, ऑफ I'm not कोर्स even. फिट होता तो। And लेकिन I don't know. चिन्मय, बड़ा on a call ये serious है note, कि I don't know why Southgate has not gone with him. If you could have trusted Calvin Phillips, he was not going to play for the first अरे 1 or 2 weeks. कैलिन फिलिप्स का तो छोड़ो यार, वो तो But मतलब so no I'm one actually understands what he's done to Southgate I'm यार। very नहीं, angry about the Reece James call. But as long as he's getting it अरे right, अरे he सुनो तो सही, I want to ask you one thing. बोलो. As an England fan, I understand Kyle Walker. मैं खुद बोला हूँ, Kyle Walker is that one guy who can stop. मैंने कल बात ही किया था आपसे। But don't you think Kyle Walker had an underwhelming game? He did. He did. But game time, at the end of the day, game time is important. And I feel it will, a good 3-4 days of rest. I think he's Hmm. coming up against an opponent he knows. And that is why, because of maybe the underwhelming game, as I said yesterday too, you never know Southgate will go 3 at the back with the 2 wing backs. You never know. France is a team which will play on the wings, and he might just revert back to it to help support the likes of Walker. I feel it will be a good game for Walker against Mbappe at least. Kal tha, it was not his best performance, agreed. I'm pretty sure Kyle Walker, if he watches his stream, even he'll agree. But I honestly feel that he'll have a good game against Mbappe. Okay, I heard you. You need to have a very solid and organized defense to stop this Brazilian side. बिल्कुल यार, मतलब साउथ कोरिया ने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारा। I don't know what happened. मतलब actually the first goal itself ना was I think was I think they thought they probably played like this against Portugal, and they thought that because Portugal, Brazil, maybe they can be as open, they can go for the victory. But look at yeah, that no, pass, man. भाई you have साहब, to Brazil are really looking good. I'm telling you, they're yeah looking you really you, good. ha- you have to nullify Brazil first and then get into your game. I Goalkeeper. think the Koreans never even tried nullifying them, Yeah. which By the is way, please someone tell me यार who put that diagonal pass to Rafinha? I think it was Casemiro. Casemiro. Casemiro Casemiro. ही था। भाई मैं हमेशा बोलता हूँ, ये कैसेमिरो की पासिंग है ना, Very it's underrated. awesome man, Very underrated. awesome, very People underrated. talk about the defensive side. His attacking side is kind of, and his And you know what distribution. it reminds me, Chinmay, I think Shoaib might relate to this. भाई मैकेलेली जो थे ना, people think he only did what say what DM is supposed to dirty do. work. Makelele ke passes to Lampard, bro. I remember the kind of passes that he used to have with Lampard in the box. It's absolutely brilliant passes that he used to have. And Casemiro is probably in The that assist for league. Richarlison, I think the team goal was also Casemiro, if I'm not wrong. I don't know if Thiago Silva. Thiago Silva tha? I'm not sure about Thiago that. Silva tha. I just checked. Okay. But Casemiro is right up there. 31-0. Oh my god. Oh, पता That नहीं was यार, मतलब Australia beating those islands, the record 33-0 or something. actually you're right. But And then they decided that, being in Oceania wasn't आज तो just वर्ल्ड कप वाली फीलिंग ही नहीं आ रही भाई फतेह। yeah, I mean, this match definitely. I think the Croatia Japan game was really good. Like,
हाँ, that Both goal, are that very one also. balanced. Yeah, but this, yeah, I mean, it's sad for Look at Korea. this. Getting out of a group, is in itself. I mean, we may keep saying that okay, they think they've achieved a lot. It should not be like that, Mhm. but like considering the quality, so many of these players play in the K League, so it's okay. I think It they've was a achieved group a of lot. death. South Korea were in the group of death, with Yeah, Portugal and and Uruguay. So everybody predicted Portugal and Uruguay were going to be coming out of that group. Yeah, So मेरे लिए तो अभी भी ग्रुप ऑफ डेथ was Spain, Germany, Japan, bro. yeah. That was like wow. all But the all the legends are there, but like we keep talking about what happens to Brazil when they lose in this. It'll be something when we'll be watching and they'll be in the tears or dance what. stops. The dance मजा आएगा stops. मुझे तो बहुत वापस से. लेकिन अब लग रहा है it'll all backfire to me. I know that this clip is going to go to people, but anyway, probably that was not an official match. Yeah, even I guess. So भाई 149-0 कैसे हो सकता है? मतलब literally every minute you literally scored what? Literally 2 goals. Shrey, if your maths is good, please help me out here. Where is AS Edema and Emeryne? Are they a North It's like African team? 1.5 goals per minute. Like Malta? that's not going to ये happen. क्या What? मतलब ये अपने उसमें जो बोर्ड गेम नहीं होता है फुटबॉल वाला प्रेस करो. Yeah, but what हाँ, country is not this? even football. Malta? Is it Turkey? It doesn't look like it's Turkey. It could be Algeria or Tunisia. What देखना country is पड़ेगा. that? But good stat that one of us. This Brazilian side is breathtaking, man. They are playing immaculate and scintillating football. Yeah, cannot disagree with that. And obviously, I'm not liking that fact. You can make out by my facial expressions here. Messi is good. Uh, I think this is it's a bit too far fetched. लेकिन वही at the same time Southampton भी इतनी गंदी ना. Messi is good इस गेम में. They are like वही school boys against men वाला चीज हो रहा है ना. Literally वही हो रहा है. I don't know. चलो anyway, let's get a little bit of conversation around England now that Chinmay is also here. Uh, लेकिन I don't know where Shrey was saying Rashford is probably going to be starting. लेकिन what do you think? Like Rashford deserves क्योंकि he's a golden Why boot not? Why possibility. not? Why not? I think अभी golden boot तो Richarlison भी काफी aim कर रहा है. The way he took that shot, the way he did not go for Neymar, there was a little bit of greed in that shot because he's already got 4 goals. So he's also one हाँ. silent runner तो है एक एम्बापे के हाँ, पीछे. he's one of them. Actually, Richarlison kind of players, ना, they have become the players they are because of that thing which they have. What a Rashford goal होता है यार. Rafinha, man, Rafinha is balling, bro, in this game. Even Vinicius का जो गोल था ना, Rafinha ने बहुत ही अच्छा किया था, absolutely. तो क्या बोलोगे आप? मतलब I don't know. I'll start with Shrey. Rashford for who? Rashford for England who? France में are you seeing basically Foden playing right hand side and Saka resting, or do you see नहीं you see the same as वो जो खेले थे और Rashford should come in? I think Saka will have to play. Like Saka, I think वो required होगा as compared to Foden क्योंकि Foden can come from the bench और impact डाल सकता है लेकिन Saka जो overall provide करता है ना I think that's just one Defensively. above like Foden defensively भी provide करता है I think pace wise भी आपको ज़्यादा provide करता है and साथ साथ मैं चाहूंगा रैशफोर्ड के लिए क्योंकि रैशफोर्ड आपको काउंटर पे थ्रेट देगा जो उनको थ्रेटन कर सकती है फ्रांस को लेकिन जितना मैं उनका साउथगेट को कौन जानता होगा? हूँ कुंडे होगा उनका राइट बैक. हाँ कुंडे होगा आई थिंक रैशफोर्ड पूरा टारगेट कर सकता है लेकिन जितना मैं साउथगेट को जानता हूँ साउथगेट ज्यादा चेंज करता नहीं है बट क्योंकि सैडली जो स्टर्लिंग के साथ हुआ है होप उसके साथ सब अच्छा हुआ बट अब शायद रैशफोर्ड को लाना चाहिए क्योंकि इनकी असली है साका स्टर्लिंग एंड केन लेकिन जितना मैं साउथगेट को जानता हूँ सरप्राइज ना होना कि मेसन माउंट लेफ्ट विंग बना खेले लाइक साउथगेट को जितना मैं जानता हूँ लाइक वो कर सकता है ये लाइक 3-4-3 खिला के वो मेसन माउंट को बेलिंगम और साथ में आपके राइस को मिडफील्ड में खिला दे मेसन माउंट को थोड़ा हाइब्रिड रोल में खिला दे और साका केन थोड़ा आगे जाके तो आई वोंट बी सरप्राइज कि वो ऐसा कुछ कर दे एंड आई होप ना करे क्योंकि इंग्लैंड कैन बीट फ्रांस लाइक इंग्लैंड को इतनी रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है इंग्लैंड एट द मोमेंट मिडफील्ड वाइज बेटर है फ्रांस से अटैकिंगली दोनों टीम्स अच्छी है डिफेंसिवली मैं अभी भी इंग्लैंड को ज्यादा एज दूंगा स्पेशली फुल बैक्स का जो थ्रेटन है तो आई थिंक इंग्लैंड को इतनी रिस्पेक्ट ले नहीं जाना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से I think Fair the enough. time is over when we respect the big teams or we play back or we sit back. I think it is time to agree for Southgate and for England. Wait. That's a horrible comment because Maldini used to attack very well. I don't think Taha Khan has seen Maldini attack down the left. Yeah. Come I on, don't Taha. think. Taha is a regular watcher यार. मतलब थोड़ा सा better expect करेंगे आपसे. तो मैं तो पढ़ा भी नहीं तो मैं तो highlight कर लिया honestly. Southgate doing defending like Messi and attacking like Maldini. Bro, as in Maldini could defend and he could attack. I mean, if you see his game, yeah, that left wing exactly. back,
He's played left wing back. He's played left back. He's played I think left. probably he meant to say that as Yeah, but in yeah, attacking yeah, like a I defender and understand. Yeah, defending like an yeah, attacker. Chalo, koi nahi. I'll give that benefit of doubt to Taha. Till now, yeah. which team, according to you guys, have faced a formidable opponent in the round of 16? In my opinion, Croatia and Argentina. They both have faced two of the most determined and solid teams in this World Cup till now. भाई USA चूड़िया बंद करनी आई थी. USA काफी अच्छी थी यार नहीं, उस I time think पे. Netherlands USA were the best one. Like I think Argentina Netherlands. Australia, like वो lucky goal था अंकित भाई, deflected वाला. हाँ, but I think the energy was even in that game, na. I think they were there. But honestly, apart from this game, all the round of 16 games have been fairly close. ये मेरा opinion है. I don't know. ऐसा I one thought sided नहीं Poland रहा was है. never. Poland had their chances in the first half, but by the second half, it हाँ, was. पोलैंड चलो, sorry, yeah, Poland and South Korea. I think Yeah. these two teams मैं बोलूंगा. बाकी सभी formidable रहे यार. ऐसा formidable is what you're asking, right? But most formidable, I don't know. चिन्मय क्या लगता है तो आपको? No, I would agree. I think apart from this game, and I think the Poland game, because the Poland game, the first half at least they had one or two chances there, but finish करने के लिए कोई नहीं था. But I feel apart from that, all the games there have been chances for, even yesterday. Don't look at the scoreline. Senegal had England worried. एक handball shot था. They were attacking in the first half, and in the second half, well, England in the last part of the first half they managed to get through. So I think scoreline को ना देखा जाए, if you look at the performance wise, I think every game apart from this and probably the Poland game have been good games. Yeah, but again, I must say Croatia, Japan was probably the closest. मतलब probably क्या पता ही इसलिए तो गया penalties में. Kane will be the key for England against France. भाई Kane का performance ना, wow man, मतलब Kane का थोड़ा बात कर लेते हैं. I know यहाँ पर game चल रहा है, people who are joining. Kane play was amazing yesterday. Ooh, he was coming back and he was almost everything was going through him यार, मैं बोल रहा हूँ. Hold up play and being dropping back, be the person वो प्री असिस्ट देना वाला, प्लस ही गॉट द गोल. मतलब आर्गुबली मैं बोलता हूं, आई नो बेलिंगम की चर्चा चल रही है. आर्गुबली मेरे ख्याल से तो आई मतलब यू वर ऑन द स्क्रीनिंग राइट, हम डिस्कस कर रहे थे. आई एक्चुअली पुट केन एज माय मैन ऑफ द मैच कल. ही वाज एवरीथिंग वाज गोइंग थ्रू केन. Kane had a very good game, but अब वो थोड़ा I think I don't know why there's suddenly so much of hype again. I think Bellingham का rate और बढ़ेगा because everybody is suddenly talking only about the Spanish midfielders, and I think that is now starting to creep in. I think the fact that Bellingham did not win the golden, the young I think गोल्डन boy बॉय. the golden आई boy award. थिंक मुसियाला, बेलिंगम, पेड्री, गावी, राइट? दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग. I think Bellingham feels he was hard done by, and I think the point of it is that everybody, and I'm not joking, everybody in the football fraternity is talking about Spain's midfielders, the young midfielders. But I feel Bellingham now is here to take it. I think yesterday was a solid performance. He got the assist too. I think I think in Kane's goal, he was the one who intercepted the ball. He with his head, made the run, gave it to Foden. So I feel Kane had a very good game, but yesterday I would give it to Bellingham. I feel. भाई ये वाला फ्रांस बेकनबाउर को लाइव नहीं देखे यार अपन. मैं तो नहीं देखा हूँ. माल्डिनी को देखा हूँ एंड बीइंग अ मिलान सपोर्टर एज वेल, भाई एनी डे माल्डिनी. फ्रांस बेकनबाउर वाज वन ऑफ हिज ओन यार, वो तो बोलना पड़ेगा. बट आई नो पीपल, भाई श्रेय हैज टू गो राइट नाउ. तो श्रेय, थैंक्स यार आने के लिए. ऑब्वियसली यार आई वाज होपिंग फॉर अ मच क्लोजर मैच. और Predictions for tomorrow. क्या चीज? Predictions for tomorrow, because Shrey says Spain will lose. हाँ श्रेय प्लीज. Morocco- यस I say Spain will lose. Morocco. चलो. I think Morocco 2-1 जीतेगी, एक्स्ट्रा टाइम भी इंक्लूडेड. एंड जो दूसरा मैच, आई थिंक मैं थोड़ा सा डिसएग्री कर रहा हूं. आई थिंक पोर्टुगल अच्छा नहीं खेलेगी, बट आई थिंक क्योंकि गोल स्कोरर्स है उनके पास, आई थिंक 2-0 पोर्टुगल एज कर लेगी मैच. चलो. अगेन मैं भी एक्चुअली वेरी सिमिलर रख रहा हूँ, लेकिन हाँ स्पेन वाला आई काइंड ऑफ फील दैट एक्सपीरियंस. बट अगेन ग्रेट यार. श्रेय ऑलवेज कम्स. पीपल डू चेक आउट श्रेय एफसी, लाइक आई ऑलवेज से. मिलते हैं भाई श्रेय. होपफुली विल बीट यू टुमारो. Thank you Ankit bhai, absolute pleasure. And people do like this stream, and big up to Chinmay bhai and Fateh bhai and Ankit bhai. Thank you so much. चलो, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन इन द चैट. आप लोग भी बोलिए यार कल के प्रेडिक्शंस का क्विकली वी कैन डू. फतेह विल गो अराउंड द टेबल यार. लेट्स गो फतेह. No, I'm with Spain. Spain will beat Morocco, probably 3-1 or something like that. Maybe even if it's over 120 minutes. But Switzerland will beat Portugal. But Morocco will not let in. Very difficult to score 3 past Morocco, I must say. Huh? Yeah. But Roma, happens tomorrow. Saiz has been absolutely brilliant. Yeah. So, but yeah, that's a World Cup knockout. That's a prediction. Chinmay?
I have this feeling Spain will go out tomorrow. The reason being, I said it before, वो रशिया वाला जो Yeah. परफॉर्मेंस जो मुझे याद आता है 4 साल पहले का, the way they But took that it was to a 1. very different team. This team I is, agreed, Luis Enrique. but I feel even against Germany, I mean, of course, there's a difference in quality, but against Germany, there were at times where I thought actually Yeah, Germany could have defeated second Spain. half. Yeah, And at that point, I think with Morocco, the way they run, have the engine on, I feel they Hmm. could be one of those teams who could actually cause an upset. Portugal game, I'm scared. I'm not going to. I can't predict that game. I want them to go through. I want Ronaldo to score, But but that is रोनाल्डो नॉट that is स्टार्टिंग यार, मतलब एक गोल yeah, होने वाला था exactly. यहाँ पे बाय द वे, Exactly. But that is रफीनिया. exactly a game where I can't actually predict. I could even agree with Fateh to a point. I could even say that, the Swiss have it in them. They knocked out France, yeah, last time. So, I mean, it's not like they've not knocked out a big giant before. And and then Portugal, the way they're playing is not very convincing as of now. हाँ, Switzerland यूरोज में knows तो how to defend. Yeah, I get it that Portugal have good attackers, and okay, Rafael Leao can come on and do whatever. But Dani Alves uh, coming on, people. Eder Militao going. Dani Alves coming on. I saw Switzerland against Brazil, and I thought that like they kept. I mean, they were in the game throughout, and it's a very tenacious team. That's the word for them. Like Mhm. and yeah, I mean, I have a feeling that Portugal tomorrow. Mikhail is saying Portugal If going to Portugal goes to penalties. penalties, I just have a question for both of you, actually, to be honest. If Portugal goes to penalties and just say if Ronaldo starts, yeah, what are the chances he gets subbed off He before will. extra time penalties? Yeah, he I will. mean, that would be a huge miss, in But terms of experience. I think Yeah, but against Serbia, Switzerland didn't have Sommer, Jan Sommer, the goalkeeper. He didn't play. Is he playing tomorrow? Think I'm not sure. I have to check it up. लेकिन If it goes to penalties, then that's big. आज का Like देख लो ना फतेह चिन्मय. आज मॉडरिच was taken off, Kovacic was Model taken is off. taken off, exactly. Yeah, Perisic was taken off. Yeah, So you can say that both were potential penalty takers, but it's just that Croatia on the bench they had so many attackers compared to maybe what Japan had. हाँ दे उनका भी था लेकिन experience हो जाता है थोड़ा. आदित्य आप पूछो Argentina somehow managed to go through semis. It'll be very difficult for them to defeat Brazil. Thoughts everyone difficult, but not impossible. I don't know Brazil, यार. Brazil, Netherlands over semis. I feel Netherlands defense हाँ have नहीं, said it before. let's see. Let's take Aditya's question. Let's If it's hypothetically Argentina, say. Brazil, number one thing on Brazil's mind will be revenge of Copa. And Brazilian mentality वैसी है that they want to get the But better of. should it be? Should it be? Because I think the way they're playing, at least this match, and of course, I think in fact in the entire group apart from the third game, I think they should just play the game and then go with it. And honestly, they are enjoying it. As in, if they see revenge, etc., I feel that it might just shift the focus. I don't know. Fateh, what do you think about Brazil ka? Brazil versus Argentina. No. I to हाँ. have Croatia knocking Brazil out next round. अरे नहीं, अरे hypothetically क्वेश्चन ले रहे हैं भाई चैट का तो भाई. Hypothetical है ही नहीं. Perisic, Brozovic, फतेह तो भाई Modric, तैयार ही नहीं है. Kovacic. देखते हैं. I'm going to be with you. I think I'll try and watch the Brazil Croatia game if it's the night game with you. And हाँ, definitely, yeah, definitely. definitely, I Uh, think we are with the Croatians. So, और but ये hypothetically, I think what happens from what I remember in the Copa and that Brazil don't get this sort of space at all against Argentina. And like I don't know, somebody nobody mentioned it, but the Argentinian defenders are just going to go after Neymar's ankles. There is no chance that he is going to have this space or this. And it's going to be a bloodbath. That game, like the cards that the Argentinians are going to get, the physicality that they're going to treat the yeah, Brazilians with. Lisandro Martinez, If I you can saw the imagine him Copa being there. America final, ये like गोल आने वाला है by the way people. yeah, अरे don't get what rubbish fooled, man. Rafinha is too unselfish bro. Come on. but don't Was get it fooled Rafinha? by this game. The Yeah, physicality that the Argentinians will give the Brazilians. If you think that it's going to be a bloodbath or anything, no, absolutely not. And yeah, pray for Neymar's ankles because if you saw the Copa game, it was there was no football being played. It was just Yeah, exactly. yeah, that was what was happening, and that will be very dirty. That game will be very dirty. Yeah, I hear you absolutely, but I'm just seeing there was a substitution made by South Korea, and that was interesting. I thought there was a change made, and okay, which Wang has gone here? I'm just looking at it. Okay, the other Wang is gone, the midfielder. Okay, fair enough. The attacker is still there. I mean, it doesn't sound right with four Kims and two Wangs, but it is what it is, right? Come on, They had five fact बोल रहा games. हूँ यार.
Or 5, All yeah. Sorry, I missed the goalkeeper. Yeah, defenders and the sorry. goalkeeper was But by the also. way, the Napoli guy is really good, huh, I must say. आज वो भाई आज वो भी नहीं चला यार, क्या है ये? But But anyway, Portugal always does this dirty game, but somehow they manage to win. भाई Portugal, Uruguay, Argentina, आपको Italy, मिलेगा भाई ऐसे गेम. They are known for yeah, it. but that's how you have to win. I think Yeah, that's part even of the game, man. I'm okay with it. मैं तो बोल yeah रहा हूँ, it's even a fact, but it's there, and you cannot disagree. Like for all the people who think that these are teams which have like great footballers and they play only like sexy stuff. Let's be real. Again, I'm going to brag here that between me, Chinmay, and Fateh, we have seen 8 World Cups. I'm telling you that Argentina have been one of the most dirty teams, and so have been at times. As in the other team that we mentioned about it, and every team has their phase, right? Because sometimes they don't have those phases in game, or tournament football is like that. आपको yeah हर एक element चाहिए. yeah. Here Okay, I with the agree with this report. भाई चिन्मय ये ले लो आप. With the disagreement between Ronaldo and Portuguese coach, I think the dressing room being affected will find it very difficult to beat Switzerland. What do you think about this comment? I mean, yesterday there were very good training videos coming out. Everybody is playing with Ronaldo and flexing his muscles. Today there is this नहीं disagreement. actually हुआ क्या यार? Yeah, What a goal. save, man! Come on, man. एलिसन में माता आ गई यार, माता आ गई भाई. बच्चा भाई एलिसन को ले जाओ भाई, उठा के ले जाओ कहीं प्लीज. एलिसन, यू हैव डन इट. यू नीड दिस परफॉर्मेंस इन वर्ल्ड कप फाइनल ब्रो. व्हाई आर यू पीकिंग सो अर्ली? No, I think he'll continue to make good saves. Wow, what a What a keeper, man. save that was. मतलब मैं तो बोलता हूँ, मतलब आई नो शेज़नी गोल्डन ग्लव, बट आई थिंक ऑन दैट सेव अलोन आई विल गिव. ओ अच्छा, सेव किया ना जो जो नीचे पड़ा हुआ प्लेयर था ना, जो वाज It इट? hit him. It Yeah, it hit hit him. him. Wang now, this guy I Wolves was, का जो player है Wang, he has had a tremendous game. भाई अकेला खेला है भाई, अकेला खेला है कोरिया के लिए. And I know this will not be Son missed it as well. No one will remember about this. Wang has had a tremendous game. Korea has actually had 4 proper chances, I must say. ठीक है, I know Brazil has had 19, वो अलग चीज है. लेकिन Korea has had 4 proper chances, and I think all of them have come from Wang. Uh, but yeah, I don't know. तो यार रोनाल्डो का क्या एग्जैक्टली क्या हुआ था? दैट व्हाई इज ही I think number one, the thing when he was going off against Korea, he was अच्छा ही signaling a player to stay quiet. So apparently Fernando बट टू Santos did whom? not टू द क्राउड? no to a player. So a player was telling him to hurry up. I don't remember which player that was in Korea, but a player was telling बट him अभी to. आज आज सडन से कैसे आया ये न्यूज़? He's not. He was asked about it today. So apparently there's a little bit of disagreement about that. And then today he was clearly asked, that is he going to be there? So he even refused to confirm that he's going to captain the side. So if he's going to play or not. He said, we move on from the next question. That is what he said. So maybe it could be very unnecessary speculation. Ho sakta hai, he just didn't want to answer पता it. नहीं यार ये But देखो with देखो him, यार, with him, चिन्मय I think it's just a देखो very यार, यू आर अ bad stage. मैनचेस्टर यूनाइटेड अल्ट्रा. आई नो दैट यू आर अ मैनचेस्टर अल्ट्रा. ओके, आई नो. मतलब and you know my views on that. While I respect the stats, I respect the ability to get stay so motivated, I respect the fact that he has so much confidence. Why does he always make it about himself, yaar? Always. And this season, the the thing is, he's done it before, but at least performances were also speaking. This season, only it has been the bad mouthing that is coming out, and it does not help his cause, does not help the team's cause, team का confidence. You see, हाँ, team में और वो साथ अंदर में अल अल नसर का मारसा ने भी आज निकाल दिया, वो भी एक और न्यूज़. he's agreed, but his best friend Mr. Piers Morgan ने confirm कर दिया है that he's not going. I don't know, Ronaldo ने text किया होगा उसको. Please मेरा tweet. कमेंट में आया था, मैं कमेंट लिया नहीं, मैं सोचा वो एक ऐसी स्पैम कमेंट है. No, so honestly. Piers Morgan ने कंफर्म कर दिया है कि no, अच्छा it's not true. यार, मैं तो नॉन स्टॉप लाइव ही यार शाम से. More बट than Fabrizio Romano, if you want to know about Ronaldo, please follow Piers Morgan on Twitter now. I think वो दोनों best buddies हाँ, नहीं बन वो गए. मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन वो ना लिटरली बीन नॉन स्टॉप स्ट्रीमिंग ब्रो. तो आई लाइक डिडंट हैव टाइम. बट एनीवे, ताहा बोल रहा है यस्टरडे ट्रेंट शुड हैव गॉट सम मिनट्स बिकॉज़ अगर कहीं वॉकर इंजर्ड हो गए. भाई ट्रिपियर है ना उसके. Kieran, बट आई आस्क let's ask Fateh. He will probably be neutral in this case. Fateh, so if you have to play Trent, what kind of situation will you play Trent if you're an England I'd play manager? him against South Korea. I'd totally play him against a team like South पत्ते Korea. एकदम फॉर्म में आज भाई, एकदम मतलब अलग ही फॉर्म एकदम, में. मैं सोचा आई वाज द ओनली वन गिविंग इट प्रॉपर्ली आज. But you cannot play him against France because I saw that game where Perisic was going at him अरे for नहीं नहीं, if Inter you're Milan. chasing the game kind of thing, I meant. Yeah.
Yeah, if that is the case, you're a goal down, you need to attack. But But उसमें भी Trippier is the better set piece taker, for But example. yeah, 2-1, exactly. exactly. The problem is you bring him on at 2-1, it will end up being 3-1. Problem हो It जाएगा. could be, More than exactly. chasing the game, one counter, Mbappe अच्छा will यहाँ take. पे no secrets man, no secrets everyone watching. There's absolutely no Liverpool fan in the panel और वो clear दिख रहा है अपन तीनों में से. I You all would, know that. अगर if need be final Substitution था by the option way. अगर लाना ही है किसी को, शायद मैं डेक्लन राइस की जगह लेके आ जाऊँ midfield में. But as a right back, I would never put on Trent Alexander-Arnold. Yeah. Yeah. By Vinicius Junior going off and Danilo going off. By interesting, Danilo is going off. Left back कौन आएगा? Is it Alexandro? Is he fit to kind of come on? Dani Alves is there, but let me just see क्या किया है उन लोग ने. I believe यहाँ पे Danilo Bremer आए है. Bremer आए है. तो I don't know. Thiago Silva Marquinhos Martinelli. back three. Think so. अच्छा. No wonder. Thought यहाँ पर Anthony would get in, honestly. I thought Anthony might get in by this point of time for Rafinha. एंटनी का लास्ट वाला गेम में ही काइंड ऑफ फेडेड अवे ना. I think But Rafinha has had a fantastic game, yeah, without a goal. exactly, If I'm Anthony if do the best, that, today would be a good chance. As he come on, he can do that. he can do the 360. The Anthony ball, whatever you call that. Yeah, man, Messi's got. I remember that. Bilkul. Yeah, exactly. No problem, bro. No problem. Argentina will play dirty as they did in 2014, too, very roughly in high tackles. Always. यार वो with you have DePaul and Lisandro Martinez ना and Otamendi also to some extent, you will expect that यार. Come on. कोरिया यार ऑफ एलिसन भाई वॉल ऑफ ब्राजील. अरे काफी कमेंट्स में मिस कर दिया हो. ट्रिपियर स्टिल अ गुड ऑप्शन. कम ऑन, आई पुट हिम अबाउट ट्रेंट. बट ट्रिपियर का ऑनेस्टली यार आई डोंट नो यू गाइस, आई फील दैट ही वाज अंडरवेलमिंग बोलूंगा. हाउ डू आई से दैट ही डिडंट kind of give his all. ऐसे लग रहा था almost in the two games that he played, right? He wasn't like his normal self what he is in Newcastle. Like he's like stands out, you know. There's nowhere that, you know. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं I don't know, is it the fact that he's starting now versus last World Cup में? I don't think he was starting last World Cup में, right? He No, he was came on. starting. He was starting. Oh हाँ, wing back खेले थे ना. हाँ, of course he scored that great. Ashley left wing back and Trippier right wing back. हाँ, and that crazy goal he scored, yeah, in the Croatia. semis, obviously. Croatia, yeah, of course. How can I forget? Totally Wing missed back that. हमारे crazy गोली मारते हैं whenever we get knocked out. Biggest example, Luke Shaw against Italy. Scored ये within the- हर्ष बेनीवाल है कौन भाई? He's a यूट्यूबर है ना? हाँ, I think हर्ष बेनीवाल. देखा है शायद, गेमर है क्या? no, ये शायद देखा है उनके वीडियोस देखा है मैंने पूरे दिन. भाई आई थिंक फतेह इज लाइक हर्ष बेनीवाल इट सीम्स. भाई हर्ष बेनीवाल है फतेह जैसे, उनको जाकर बोलो भाई पुदिन. Let me see Harsh Beniwal and then comment. अगेन यार मैं शाउट आउट दे रहा हूँ फॉर पीपल वाचिंग यार. इफ यू गाइस हैव नॉट फॉलोड फतेह चिन्मय येट, डू लेट मी नो यार. आई विल हेल्प यू आउट टू फॉलो देम. एंड ऑफ कोर्स श्रेय as well. भाई सब लोग they know a lot of stuff. I think talk about people underrated, yeah. These are some panel members who are really underrated in my personal opinion, including myself, I would like to say. Just put it that way. लेकिन Ronaldo making decision in between the World Cup tournament just doesn't make sense. नहीं लिया है. It is not very professional of him and नहीं लिया है. It is impossible for him to. हाँ यार वो newspaper selling itself. And the mere fact of it is, even अगर आप एक logical sense से सोचो, for him to give an interview, such a big interview, 90-minute interview against Ten Hag in United, only for him to join Saudi, it will end his career. Anti-climax यार. हाँ, it's an anti-climax. Because it would be कि मैंने इतना, I want to play at the top league, they're not letting me play and to go and join Saudi. He's going to play at a top club in some top 5 league. So just wait for the news to die down. It's Ronaldo, paper बिकता है. आज पेपर बिक गया फर्नांडो सैंटोस की लड़ाई में. और बात खाली पेपर की नहीं है. बाय द वे आई रिस्पेक्ट मार्सा, लेकिन द रियलिटी इज दैट देखो, every person has a role, be it in any newspaper, any channel, तो there is a certain role which is only for transfers. तो आपके पास अगर न्यूज नहीं है तो आप बनाओगे भाई न्यूज. That is how it is. Or when you're Manchester United, when you're Chelsea, certain clubs, you're What a always. goal! Oh, what a goal! Oh, this was the moment of the game, bro. What a superb goal out of nowhere by Brazil sleeping. लेकिन वो ये second string Brazil है. After all, My prediction, Ankit, was 4-2, right? And I said that it will not be a close contest, but 4-2. So Fateh and Mudit को shout out बनेगा यार. 4-2 and 5-1 मुझे याद है.
What a goal, bro. ये बंदा कौन है? बता दो कोई. One of the Someone. Kims, I'm Oh, they assuming. better not give it offside. Pike, I don't know. SH Pike. Anyway, uh, deflection था. Deflection. But anyway, it's a great goal. Thiago Silva, bro. लेकिन it'll go to the player who scored, obviously. I don't Offside तो think नहीं लग रहा फतेह. they were seeing the corner का offside. I get it. Nice celebration by the fan. I like that. हाँ यार, मतलब आशीष, always, what a goal. Brilliant. 4-1. Okay, so if they can get one more goal, Fateh gets his prediction right. yeah, Like the comeback is not coming. Is it some good? respect. अच्छा, किसको याद है भाई? Newcastle, Arsenal 4-0. Newcastle came back 4-all. 4-all. That was a legendary of a game, bro. As in, that was something. But unfortunately, it's World Cup knockouts. Martinelli, yaar, that's a bad tackle. That's a bad tackle by the Korean. Martinelli also बहुत injury prone रहता था यार. मतलब it's for a change he's having good season यार. मतलब honestly. भाई ये वैंग वुल्स के लिए ऐसे क्यों नहीं खेलता वीक इन वीक आउट. व्हाट अ परफॉर्मेंस ही हैड यार, आउट ऑफ द ब्लू. ओके, वी हैव, आई थिंक. I think one of the things that I feel about Korea is that they have a huge number of players playing in the K League. I think Japan has more European-based players, and I think the Koreans need more players going out, like you said, Wolves. Like at such clubs, and हाँ. that does affect. Like obviously the K League is a good league. They're doing very well in the Asian Champions League. John Book Motors, they're the heavyweights when it comes to the Asian Champions League, but still somewhere, and if you guys say that Cristiano Ronaldo is coming to Saudi Arabia, I mean, if it's true that he's making 500 million, yeah, why would you say no to that? Like tomorrow, he could be buying a football club in Portugal or whatnot, and I mean, Yeah. you don't say no to that, that sort of money. I mean, David Beckham, I think, went to the MLS. He came on loan, to Europe throughout. He came to PSG, Milan throughout that See, time. but And that's the thing ना. Cristiano Ronaldo, he's, वो कल को कुछ भी सेटअप भी करेगा ना खुद का, हाँ, he'll get takers, bro. yeah, तो he'll but get वही है, takers. that money is No, something so else. my, And my my point is, you take the Saudi deal, and then like Beckham managed, he was in come on, the goal. Oh, oh, say, Allison, bro, what a save. Allison, man, this guy is had. Well, man of the match, arguably, मैं बोलने वाला था Allison, bro. Can you believe it? Game's just 4-1. That's how good Allison has been. Allison and Wang, ironic. But talk about irony. Wang or Allison have been two better players on the pitch. But पता नहीं यार, I know almost 80 minutes हो गए. Let's actually show what is happening. भाई जो भी लोग अभी तक बने हुए ना, first of all, thanks a lot for being here, because I cannot imagine, me being in your place and me being staying online till 2:30 for a YouTuber like me. So it means a lot, and of course you value the is panel as well. So Allison it's being brilliant. substituted? Oh yes, he is. Waverton. Neymar And also. not Edison. Where is Edison? नहीं, वेवर्टन को एक अपीयरेंस देना था. एडिसन ही प्लेड द लास्ट मैच, नो. सो जस्ट Okay. मतलब दे आर थिंकिंग दैट वी आर गोइंग टू विन द वर्ल्ड कप एंड एवरीवन रिक्वायर नीड्स वन अपीयरेंस. दैट्स द वे दे आर थिंकिंग, ना, मेंटालिटी. बट अगेन आउटफील्ड प्लेयर को नहीं करके स्ट्रेंज. और ये 3 क्वेश्चंस आ रहा है. रौनक, नाइस टू सी क्वेश्चंस फ्रॉम यू. 1 सेकंड, मैं आई एम जस्ट स्टार्टिंग, कमिंग इन जस्ट अ मिनट. रौनक, यहाँ पर देखिए, ये है भाई चिन्मय. हु वाज योर मैन? एवरीवन इन द चैट, आप लोग भी बोलिए यार, किसको दोगे आप मैन ऑफ द मैच? I think Vinicius was good in the first 10-15 minutes, as I could see. But I think coming back from injury or whatever you call it, Neymar, very good game. But I think I didn't leave stats all alone. I feel for me the standout player was Rafinha today. I think एग्जैक्टली, मतलब it was one मैं of तो those बोलूंगा. games नहीं हो पा हो रहा था. साउथ कोरिया But I बच think गई. Rafinha for me हाँ. was a standout.
Yeah, I'll go with that. Rafinha has been superb. He's been unplayable at times. Fateh, for you, as in Vinicius with Rafinha, matlab, close for me. But Yeah, I think I'll agree with the panel. Rafinha. Yeah. okay. अरे वर्धन राठौड़ यार, मच लव टू यू यार. मैं आ रहा हूँ आपके कमेंट्स में, आ रहा हूँ सब एक एक करके. अगेन भाई, डेफिनेटली लाइक द स्ट्रीम. अगेन इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी. Ankit bhai, three questions. Do you see Manuel Neuer starting in further Germany games? Let's go with Fateh first. I think so. I think they have said that he wants to play the next Euro. I was hearing, I think Rafael Honigstein talking on the football that It's sports like show. केविन ट्रैप और टर स्टेगन को भी वही हुआ है जो टोल्डो और अबियाटी को हुआ था. Yeah, absolutely. And और Neuer अपने will कुडिचिनी. for the Buffon, yeah. So, and I think Neuer will play the Euro. He will, I think, probably be the captain of that side. The second question, Muller definitely retired, but now I'm very worried for Barcelona next year. You know, if you got that meme, I sitting on hear the you. screen. Now he has all the focus on that. People, भाई Messi is good. सुन रहे हो आप? आशीष सुन रहे हो? Germany's There are next Barca steps in fans in your the opinion. chat. I think भाई Germany, आपने see, they're hosting the Euros. They are a good team, but I'm so surprised with the mentality because I've seen German teams who don't have half the talent of this team. But the moment they would reach a tournament, like the World Cup '98 team, okay, they got out in the quarterfinals. They were not all that great, but the mentality that they had, I mean, they were not favorites for Euro '96, and suddenly yeah, Bierhoff came on the yeah. stage. They were not. They had a horrible Euro 2000, and suddenly, World Cup 2002, In they made fact, the final, and that team was very bad. But it was just team spirit, the mm, ethics, the and so I'm so surprised to see Germany in this state. And I don't know, do you keep Hansi Flick? Do you go for somebody like Thomas Tuchel? नहीं, I think You know, Hansi Flick stays, bro. Come on, The long fix term में he has proven. the thing with Germany is they don't sack, and they don't Yeah, sack they soon. don't. So Flick is going to stay. I feel. I think some players. I think the first is obviously, Muller. Neuer stays, Muller retires, Gundo will play. I think Gundo will carry on. And How old yeah, is Gundogan though? I think even Gundogan might go, 31. but they have a No, I he'll think stay he because didn't he's have. not played much for Germany. He's not played much for Germany. That's also one but point, no? even if he hasn't played, I think who are the options that like they have coming up. Like Uh, I know that Florian Wirtz is one guy who was doing so well for but, uh, Liverpool. but but he's again a number 10. Really, Yeah, he's a he's a number number 10. 10. Yeah, but like somebody to come into this team, like Number maybe. 6 slash number 8 में I think Musiala can do the job, but again उसका भी Yeah. ideally I would have him as a number 10 given a Hmm. choice. That's a good point actually. I don't think there are a lot of midfielders out there who are at that level or do it consistently. Hmm. Well, starters, so they have great starters in Kimmich and Goretzka. But Yeah. after There that, is. who? That's Yeah. a big question. Anyway, let's see. Next कर लेते हैं. अब ओन गोल आएंगे. आशीष बोल रहे हैं. Again, thanks, यार. This again, it's more like the passion, hard Yeah. working है definitely, but साथ साथ में passion जोड़ दीजिए, because for me this is what probably is one of the objectives of life here for me, and I'm just glad I'm living it right now. But hopefully it continues with all your support and of course panel support. Yeah, like again, these are two members along with Shrey who have been with the channel from like God knows when. You know, so big up उनको भी absolutely और आप लोग को भी सब लोग को. No, it's just a start, to be very honest. Argentina was a Brazil final and the score is 1-1. And then 90 plus minute, Messi steps up to take a free kick and produces the same free kick he scored against Liverpool at Camp Nou, top left corner. Wow, dreams! What dreams are made of Messi's goal? But But actually, फाइनल हो ही नहीं yes, सकता, फाइनल हो ही नहीं सकता, तो हाँ, वो सेमीज हो वो रहा है, होगा टूर्नामेंट ना. को फाइनल लेके जाएगा, बट हाँ, तो ओके. ड्रीम ही बना. एक सेकंड गोल होने वाला लग रहा है. एक और नहीं हुआ, नहीं है भाई. कोरिया डिफेंडिंग वेल सेकंड हाफ में, बोलना पड़ेगा. जस्ट अबाउट लास्ट डिफेंडिंग. हाँ सर, सुन रहे हैं. अब हम हर्ष बेनीवाल की वीडियो देखेंगे. Yeah, because I think he's some parody guy, but like you have to like think about Thomas Muller in Barcelona anyway. Like I was on a stream with you when I was wondering why is it that Bayern suddenly have a problem with Barcelona. Like I think you and I saw the group, the Inter Milan group. Yeah, it's basically I the still don't aim to. understand that rivalry, and yet now I've started enjoying it because it's just such a meme rivalry. Like the moment that match happens, the memes that come out the next day is just Yeah,
No, it's Next level. simply because of firstly 8-2 and Muller himself, kind of enjoying it himself. So Yeah. it's taken it to the next level, I guess. Rafinha needs a goal. Messi is good. हाँ, मतलब that's the point. The guy actually in terms of finishing. मतलब I'm surprised. Messi is good. मैं बहुत surprised हूँ क्योंकि यार लीड्स में ना हम लोग देखते हैं प्रीमियर लीग यार लीड्स में he literally single handedly saved Leeds भाई last season. He was one of the Robin type players, cut in short, हाँ and बिल्कुल वो एग्जैक्टली you're right वैसे शॉट्स इसलिए मैं बोल रहा था रफीनिया रियली वांटेड इट चेल्सी बैडली हम ट्रांसफर स्टोरीज किए थे मेसी को रिमेंबर आई एम लाइक रफीनिया विल बी ब्रिलियंट लेकिन अगेन जिएश इसलिए वन ऑफ देम दैट आई ऑलवेज फेल्ट दैट आई एम काइंड ऑफ Yeah. डिसअपॉइंटेड हिज फेलियर Generally, इन after चेल्सी the World Cup, you become a star, then you get a big move. So guys like Richarlison and Rafinha, I think they should be the ones that are looking at moves to कम ऑन very big दैट्स अ clubs. फाउल but the problem is Richarlison and Rafinha both moved 2 months back. Yeah, हाँ too वो much तो back. I But think if Richarlison would have stayed at Everton, yeah. अरे Everton would have मोहम्मद कुडूस यार मोहम्मद कुडूस he would have profited a lot. Kudus will now and he's at a selling club. I think Ajax, if I'm not wrong, Kudus is at हाँ Ajax. एग्जैक्टली तो So इनफैक्ट वो Ajax will ऑलरेडी आई थिंक टॉक्स आर अंडरवे आई एम प्रीटी श्योर नोइंग कुडूस एंड नोइंग अयाक्स बिकॉज दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप ना गाना सो आई थिंक दैट इज वन आई डोंट नो मतलब स्काउटिंग में इट्स अ गुड टॉपिक लास्ट ईयर हमने किया था यूरोस के लिए स्काउटिंग के लिए और कौन यार बोलोगे मतलब दिस गाय इज द जापानीज सेंटर बैक वाज मिसिंग टुडे ही इज गुड Hmm. इटकारा क्या नाम है उसका वो बंदा अच्छा लगा मुझे but Guardiol is an obvious choice everyone that is Guardiola, yeah. Chelsea are already going for him Croatia का Is, but is the deal done? Gakpo, नहीं who is going to be on the move, we don't know where, but Gakpo, mostly Man United people are saying Gakpo's stock is only risen. Timber, who was said to be on a move, his stock, he was nervous, of course, on the first game, as we discussed yesterday, Ankit bhai, but his stock is risen. Kavi sare players hai, he's keeping Delict out of the team, that credits for something. Yeah. yeah then again मतलब I'm assuming that Todd Bowley will do some madness let's see what he does सर आई वुड से 2013 और 2015 में बारसा और बायर्न की हमेशा टक्कर की लड़ाई हुई है और अब आप सबको पता है आफ्टर 2017 बारसा के कंडीशन क्या है और अब हर टीम देखती टू गेट देम मतलब honestly Bayern Barca का तो 8-2 है यार simple as that his finishing needs to improve he has insane pace Rafinha his work rate is very high he has that footballing intelligence and can create great chances the only ability he lacks is finishing मतलब honestly I don't think he lacks it oh भाई गोल होना चाहिए था I think it's about him just not having that confidence in Barca colors same चीज वही बोल रहा था ना अब देखो प्री सीजन इज प्री सीजन बट ही हैड सम ब्रिलियंट शॉट्स इन प्री सीजन रफीनिया प्लस लीड्स के लिए मैंने बताई है he actually had a good finishing ability in Leeds as a Barca fan I was so happy when Germany were knocked out it was like winning the World Cup oh my god this is not Yeah, getting I good mean, yaar they did get like some sort of revenge because a large number of those Spanish players do play for Barcelona, and yeah Luis yeah Enrique. you The can amount of I, memes that came in. I get You it. lost Like, to Japan. You lost to Japan. So there was a photo of Busquets. You lost to Japan, but you know that come you on knocked out. score yeah, अरे नहीं exactly. यार That's why I say that let's not judge Spain on that Japan game. Maybe like they just knew that they were going to get an easy opponent, and yeah, I mean, they avoid this part of the group, and but yeah, it's a very interesting rivalry, and I think somewhere down the line, I have a feeling that Barcelona are going to get back at Bayern. Like they, बारसा और बायर्न का एक टू सिंपल एज दैट अंकित अ टिपिकल चेल्सी फैन अरे भाई ऑफेंड हो गया क्या आशीष कोई नहीं भाई वो बहुत सारे लेकिन 8-2 वाला जो But चीज था ना मैं बोलो इसीलिए 7-0 इसीलिए चलो मुझे मैं एक बोल देता हूँ मेरे को 7-0 याद है. I remember 7-0 which Barca did to Bayern. So when ये Messi कब हुआ when Messi I think it was MSN थे नहीं MS था when he took Pep for a ride. Pep was at Bayern टू and लेग्स में था ना टू लेग्स 2 में legs 4-0 that was 3-0 no, it was not 7. They won the first leg 3-0, 4-0 and then 3-0 Bayern 4-0 won the second leg 3-2. 4-0 3-0 4-0 पता 3-0 नहीं if I'm मुझे तो not याद नहीं है लेकिन एनीवे 7 हैविंग सेड दैट ये तो 8-2 तो वाज अ सिंगल गेम है ना आई थिंक 4-0, टॉपिक इज 3-0. डिफरेंट नहीं यार, Chinmay. The
Bayern made a comeback in the second. याद है मुझे वो एक मैच है जो एक्चुअली मेसी वेंट ऑफ ये आई एम सेइंग PSG वाला याद है मुझे 6-1. No, 3-0 they won the first game where he uh, Boateng fell, but the second game was 3-2. 7-0 आई रिमेम्बर मैं बोल रहा हूँ ना आई रिमेम्बर इट वाज Let दैट me गेम let me 3 and 4. let me Google this. Let me see. हाँ. रौनक बोले 7-0 बायर्न स्कोर किया था 2013. बायर्न What? तो it was the other way around. Bayern, sorry, I just had a brain fade. I remember there was one game हाँ. in 7-0. वही I मैं बोल रहा हूँ remember यार बारसा ने again I'm not trying to prove Barca is bad or something. Yeah, people don't get me wrong. I'm just trying to get the facts right. so When did I this happen? so 7-0? Pep so I remember the other way around. I'm very sorry, but the Pep got Messi then because I remember that was the one game I don't know why I remember Messi against Pep, but Okay, this was a 3-0 and 4-0, like 3-0, Bayern 4-0, 3-0 and 3-0, 4-0. 4-0, yeah. Yeah, and that season हाँ Bayern won. Martino era exactly now I remember exactly हाँ exactly the guy was shit यार Tata Martino. But he had a very successful 2010 World Cup. Then, हाँ मतलब you बारसा know, के साथ मैं बोल रहा हूँ जनरली तो ही हैड बट मेक्सिको was interesting ना this time they actually yeah, and played for the Argentina. first time since I don't know when that they've gone out in the group stages. Otherwise, they never go out in the group stages. So that's another Yeah, problem with exactly. Tata Martino. And I think they're not going to keep him on. His contract is over this month or something. Yeah, he himself told no that automatically contract is over. वो खुद ही Yeah. बोल दिया. That is part of the contract or something कि अगर नहीं जाते तो it is what it is. By people, by finally we are there. One more minute of stoppage time. So we will be very surprisingly, there has been only one goal in the second half, and that has come to Korea. So Korea has won the game, bro. Halftime wala game. Which all we all play football, right? We know that वो होता है, it's a battle of halves also, But right? I think We are told that as credit to Brazil. They didn't really go all out to embarrass the Koreans. हाँ और plus they made all the changes very early. I know that. Yeah. Especially being the goalkeeper changing and all, man. Come on. Yeah, हाँ exactly. यार Messi was And always good. it's in the rivalry the way I remember it. I remember it from a time when Barcelona beat Klinsmann's Bayern 5-0 at the Camp Nou. I think Klinsmann just got sacked there, or he was just sacked before that game, and that's everything just collapsed for Bayern Munich for that season. They didn't even make the Champions League the next year, and I think that was the year when Wolfsburg चलो हो won गया the यार league. by the way match. By Neymar coming unscathed, Vinicius Junior scoring, assisting, Rafinha playing great. Yeah, not getting that particular goal, but I think he got an assist. Thiago Silva getting an assist. Casemiro being fantastic as a passer. Lucas Paqueta, I think, had a fantastic game in itself. Fantastic. But पता नहीं यार मतलब is there even a question mark? लेकिन I'll come to Fateh first. Fateh, I told about Wang के chances आए ठीक है there were a lot of moments जहाँ पर थे I know Brazil were far better there's not even in comparison in terms of attack लेकिन in terms of defense मतलब are you still convinced with this Brazilian side defensively? No, I'm convinced with them everywhere, but for Mhm. mentality. Like that's my. I don't think they have a good defense. Thiago Silva, they have Bremer on the bench. There's no problem. I think even in defense. Okay, the white backs maybe. Mhm. That could be a. I mean, that's a good shout out. Like I think Shrey was saying that whether Danilo and Militao they have it in them to go against. For example, Perisic in the next match. But for me, it's just that do they have that elite mentality? They haven't won anything. Like Mhm. they didn't win the Copa America. We've seen like it was this team, and now they're going to start playing against those sorts of opponents where within 15 minutes everything can change. And I just don't think Brazil have that elite mentality. Tite is a very good guy. They say they've got a great spirit in the dressing room and all of that. But I think is he hard enough? I just don't think so. I think he's just not that guy who like I talk about Jose Mourinho all the time. Like he's just not that guy, and I think to win that World Cup, you need that. एग्जैक्टली बट अगेन ये वेबसाइट तो दे रही नेमार को यार मतलब वही है
Bhai, let's be honest. Neymar coming back from injury, none of us anticipated that he's going to play. Like, kitna 1 hour he played, right? Almost. Uh, Yeah, I so think that's fantastic, bro. Lekin, again, Rafinha, Vinicius Junior, Paqueta. Do you see Chinmay, your Mr. Fred coming in this team? no, I don't. I don't think so. Honestly, uh, and Anabiniji, I think the midfield is not an issue. I think the only one issue which all of the panel has really highlighted is going to be the makeshift role which Eder is playing, Eder Militao at right back. You don't know, how long it will last or how it will last against elite left winger. So you don't know how that will shape up. Apart from that, I think the team picks itself. Maybe Shayad there might have been something, at the start of the tournament had Richarlison not performed, but now that he's actually running, I don't think there's an issue. Yeah, fair enough. But yeah, Allison. भाई लिवरपूल फैंस इन हाउस एनीवन एलिसन भाई मैं तो बोल रहा हूँ एलिसन द काइंड ऑफ सेव्स ही इज मेड मतलब दैट प्रूव्स द मेंटालिटी जो हम बात करते हैं आई थिंक एलिसन as an individual has some fantastic mentality. Talk about Thiago Silva, assist from him. Then you had Alisson making those saves. Uh, मैं थोड़ा सा वे बोलूंगा Marquinhos had a difficult time against Wang. I must say that Marquinhos, the Milito actually did well. Surprisingly, again, yeah, I don't agree with the website's rating. I thought Marquinhos has a slightly difficult time because I thought Wang was like superb, superb. I'm not saying Son यहाँ पर because Son actually could have been done better in my personal opinion, but Wang did absolutely brilliant. But again, Richarlison, the mentality is right there. So I think overall, I would say this team looks very balanced. Only thing is, what I agree with Fateh is on the fact that when they are against the wall, ये अभी तक हुआ है क्या? In that game against Cameroon, come on, we all know it was not really of that importance because you know that deep down you're going to top. So मुझे वही लग रहा है that if things go against you, how will be their persona, कैसे वो react करेंगे? And I know celebrations मैंने काफी बोला यार I was surprised that they went overboard celebrating with the coach. I still I'm not for it, but again वो naturally आता है. I know I understand the culture everything, but कहीं ना कहीं मुझे लगता है that it is the round of 16. You're beating South Korea, so I feel that it might be a little bit early. That's just my personal opinion. ये मेरा viewpoint है. कोई disagree करता तो absolutely fine है. But South Korea, man, Fateh, where do they go from? And Asian teams in general, man, where do they go from here? No, I think Asian teams have done very well. You don't expect Asian teams to get out of the group stages anyway. So the fact that both Japan, all three, in fact, Japan, Australia, and South Korea got out, and Japan were probably the best. Australia really fought well. Korea, okay, today they didn't really, they didn't deliver, but they did well enough, I think, in a very difficult group stage. So I think they can all go back. Even the Saudis, they won a game. Iran won a game. Iran took it right down to the wire. So I think all five teams for Asia, they've represented Asia very well, and they can all hold their heads high. I don't know whether the Asian Cup is in when is it like is it because Yeah, it so used as to in be. अभी अभी तो फिर भी टाइम है आई थिंक राइट नाउ एज इन the idea right now is to kind of just play some matches. I feel that Asia may most of the countries are missing out on those matches against top teams, so that is happening because of Nations League being there, in my personal very opinion, वो जो है हर रोज almost share कर रहा हूँ. Yes, Sagnik, I hear you. Absolutely, people hyping Argentina with most easy opponents. Brazil always do this type of celebration, they enjoy. Exactly, मतलब वही है. देखो, I'm not saying about the celebration. मैंने बाकी सब celebration नहीं बोला. Only thing was that one with the coach. वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से थोड़ा सा early था. But again, it's my point of view यार. मतलब maybe I'm old school, आप सोच सकते हो. लेकिन just me. और हो सकता है they just uh, gone with the flow, and that doesn't affect them. क्योंकि यार same चीज when it happens to them, how will they feel? I'm just looking at that point. अगर things go against them, that we don't want that as well, right? It can happen. It's football. वो हम देखते ही है. Uh, एक सेकंड देखते हैं आप. अरे दानिश, कैसे हो भाई? नाइस टू सी यू दानिश, बहुत दिन हो गया यार. आफ्टर फर्स्ट हाफ ब्राजीलियन मैनेजर जस्ट सेड वन लाइन टू हिज प्लेयर, फट गई है उसकी, जाने जाने दीजिए. ओह माय गॉड. फीलिंग सैड फॉर साउथ कोरिया विद 69 others. Do you think ब्राजील का डिफेंस कैन बी अ स्लाइट इश्यू लुकिंग एट द चांसेस कोरिया गॉट टुडे? एग्जैक्टली वही मेरा पॉइंट था अबाउट द डिफेंस ऑफ ब्राजील, बिकॉज फॉर मी I don't know, but साग्निक मैंने पढ़ा यार भाई, मैंने डेफिनेटली पढ़ा है साग्निक, डोंट वरी.
And like I said about, I thought I answered that already, Sagnik, about mentality. I did talk about certain individuals, about what mentality they have, what others don't have. And again, Sagnik, much love to you. I know that you're a regular watcher of the channel. यहाँ पर I don't think there's a rule of taking every comment, with all due respect to you and every subscriber here. Again, बहुत अच्छा लगता है आप लोग आते हो 2:30 बजे, ब्रिलियंट है. बट क्या आप बोलिए यार, हर एक यूट्यूबर लेता है आपका हर एक कमेंट? प्रीटी श्योर मैं कैन गारंटी कि कोई इतना कमेंट नहीं लेता जितना मैं लेता हूँ. तो भाई, मच लव टू यू, एंड आई नो दैट यू सपोर्ट मी, एंड आई सपोर्ट यू एज वेल. होप फॉर दैट. मैंने आंसर कर दिया है, सो आई डोंट थिंक आई विल टेक दिस क्वेश्चन द वे दैट यू आस्किंग मी. टेक माय कमेंट्स अबाउट द मेंटालिटी. ओके, सो लेट्स नॉट क्रॉस द लाइन. सांगने, मच लव टू यू. प्रेडिक्शन फॉर स्पेन एंड पोर्चुगल गेम. चलो, लेट्स मूव ऑन. ब्राजील का, अगेन वी ऑल अग्री, मैन ऑफ द मैच. एवरीवन इन द चैट, आप लोग बोलिए who is the man of the match in the chat. Sagnik, Gaurav, Messi is GOAT, Rivaz. Who would you give for? You would give it to Neymar, or you would give it to, as in, I don't know, maybe even Richarlison for the mentality. Talk about mentality. I'm just saying it. लेकिन चिन्मय, हमने स्पेन पोर्चुगल के बारे में बात की है. अगर जाता है वहां पर, अभी के लिए तो स्पेन मोरक्को पहले बात करते हैं यार गौरव. स्पेन मोरक्को है. मतलब व्हाट्स योर गट? हमने प्रेडिक्शन कर ली है, लेकिन व्हाट्स योर गट अबाउट द वे द मैच विल गो, स्पेन मोरक्को? I feel Morocco win, and I want it for football. I want it for the way. Keeping a low block and kind of go with the Hakim. The only reason I want Morocco to go through is that at least एक upset होगा, one upset. And if not Morocco, if Spain go through, I really feel, suddenly somehow I feel that all the onus is on Switzerland to cause that upset. I feel round of 16 without one upset is not a World Cup round of 16. एक upset तो होना चाहिए मेरे हिसाब से. That is why I feel tomorrow one upset is on the cards. Let's hope. Portugal Spain would be a very 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 good clash, but वो Nations League में हो चुका है and I got bored for 90 minutes. So I don't want to see that game again. Honestly, they are not the two most entertaining teams to watch when they play against each other. That is why I would actually not want that match to happen in the quarterfinals. Yeah, Rafinha बोल रहे Messi is GOAT. By the way, and again, जो भी join कर रहा है, do not forget to like the stream, भाई. We have a certain like target. Let's get to that. Hopefully, यार, you can even encourage us, and really like the fact that we are still trying to produce content, be it any hour of the day. And yes, daily हम कर रहे हैं भाई. आजकल literally we are coming with 3 videos, with 2 being live and 1 video, and plus we are doing literally 7-8 घंटे हम live होते हैं रोज. Hopefully you guys are liking the content. But I know it's pretty late in the night, and I know it's been a long day for the panel. It's great to actually always see you. But quickly, यार, before you go, but I know Portugal का थोड़ा हम बात कर लिए. But Fateh, as a neutral, what would you say, यार? मतलब Portugal, Switzerland, what is the reason that you're going for a certain team? The reason I'm going for Switzerland, I think, is that they have this tenacity about them. Like every time they play a big team, when they played Brazil as well, they were very difficult to play. Like yes, Brazil had their chances, but it's like Switzerland just they knocked out Italy, right? Okay, we missed penalties, whatever, but they just know how to play against the big teams. If you saw the last tournament, they neutralized France. Even before that, I think Euro 2016, World Cup 2018, they always have these results against the big teams because Switzerland is a team that is very happy playing for the 0-0 and getting on the counter. And like you said, the Portuguese coach has been experimenting with his defenders. He's making some weird changes here and there. So I just feel like I think Switzerland will take Portugal tomorrow. And there's some unease in the dressing room. Ronaldo claiming a goal, Ronaldo this, Ronaldo that. The longer that game is at 0-0, the worse I think it'll get for Portugal. And also, I think Switzerland and Portugal have played each other a lot in the past around 6-7 years in these qualifiers. They've. I feel like Portugal always get the same group. It's always Serbia, Russia, and Switzerland. Like I've been watching this for the last 10-15 years, so I have a feeling that I think Switzerland will take it. I also have a feeling that Spain will really make up for that defeat to Japan tomorrow against Morocco. Okay. Let's see how this Brazil team will perform against the likes of France, England, Netherlands, Portugal. Not going to be easy for them. Yeah, exactly. That's also a point. देखो, there have been so many times, like come on, all of us, even in the chat, मैं तो बोलता हूँ भाई, panel यहाँ पर है, Fateh and Chinmay, they have seen like for a couple of decades, if not more, right? So for me, I know that
it's not about weeks or months also, it's about 2 different days, and you can get totally 2 different performances, and that's football, and that's why we love football. एक unpredictability होती है, whether you're the best team or not. I know that they have been preparing this for like last 4 years, but some days it's just not your day, and football is so fast ना, when especially defense जो बोल रहे Messi is good, कि एक दो defensive mistakes होते हैं initially, you get 1 or 2 goals, bam, and then that's it. And then you have a tactical and a, kind of a procedure going forward by the coach, and you kind of cannot come back. So that's why it's very important to kind of even uh Portuguese coach is a clown. Okay, Switzerland for win. uh okay, But Sani, there is. I want to mention this. इस बार काफी कम hate मिला है Gareth Southgate को. You know, Yeah. as तो खेली as है ना इंग्लैंड, अपार्ट फ्रॉम यूएसए गेम खेली है अच्छे से. the most hated coaches in the world football, international football, is Santos and Southgate. Santos hate still continues, but Southgate का actually थोड़ा कम हो गया है. So I don't know, maybe he's winning the fans over finally. बिल्कुल. अच्छा, यहाँ पर ना एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ ना, वो कि देखो काफ़ी बार सी वाइल आई विल रिस्पेक्ट ऑल द व्यू पॉइंट्स, ठीक है, आई नो आई एम गोइंग लिटिल बिट ओवरबोर्ड यहाँ पर जो बोलने वाला हूँ. आई रिस्पेक्ट ऑल द व्यू पॉइंट्स, ठीक है, 100%, एंड इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल, इट रिमेन दैट, इट ऑलवेज हैज बीन दैट वे. लेकिन द मोमेंट आई सी दैट एनीवन इन द चैट और एनीवन इन द को पैनल इज काइंड ऑफ disrespecting any of my panel members, that I will not accept it, be it the tone, be it anything. And I know आप लोग assume कर सकते हो किसके लिए बोल रहा हूँ भाई. There is one thing that I saw in the chat today which I did not accept it. So that's something that I would like to say, because again मैं यहाँ पर मैं clearly बोल रहा हूँ, I'm not talking about myself. यहाँ I will want to stand big time for Fateh and Chinmay यहाँ पर, ठीक है. I know as a matter of fact Fateh knows more than even me. Let me be very honest, ठीक है. So people who have followed me know what I'm talking right now. Hopefully you guys trust me, and that's why I'm saying. So if you guys are questioning that, fair enough. You can have a viewpoint, that's different. But as in there's a certain way that you communicate things. That's all I'm saying. Like, much love to everyone. Again, I understand it's close to 3 and certain tone goes overboard. So fair enough. That's why मैं किसी को मैं block नहीं कर रहा. I'm keeping all the chat open. Very much so. Like, much love to everyone. Argentina beat this Super Brazil team last year in the finale. वही है फॉर्म, मोमेंटम बात कर रहे थे चिन्मय, वही चीज है ना कहीं ना कहीं. तो बिकॉज ऑफ द मोमेंटम, They were on an unbeaten run, by the way, है ना. हाँ, काफी चीजें और हो और रही और मेसी did not perform काफी. in that particular game. DePaul turned up, DePaul and Di Maria turned up. So again, So आज के दिन में you Brazil cannot have those cover-ups. you cannot compare two different years to do. If these teams played last week, I would not compare a result from that to this. You cannot have that, and this is the World Cup finally. You never know who turns up on what day. Mario Götze, biggest example. Who knew he would turn up, right, to score that one goal? So हाँ, I नहीं mean, उस समय तो फिर भी ठीक था वो, लेकिन हाँ, आई He गेट योर was, पॉइंट. yeah, Andre Schürrle Mario और Götze, मारियो गोट्से. you can that you can never predict who turns up on what day in a World Cup, and that is the अरे beauty of एडर वाज Grosso. इट 2016 यूरो Eder 2016. 2016. I can bet you, 90% of football fans did not know who Eder Yeah, was. He scored the winner. Euro 26, 2016. Yeah, exactly. Where Or even Ronaldo Grosso wasn't on coming the up. pitch. Ankit, I don't know. Like, do you remember 2006? Like, Grosso just came out of nowhere. आज बहुत अच्छा बोला. You know what? Someone asked me in the chat, which was your all-time बोलते ना dramatic Favorite kind moment. of a penalty Yeah, shootout. मैं बोला I will go yeah, for 2006 final in particular. क्योंकि I yeah. know that the way Fabio Grosso came on, मतलब who would have imagined that the way his run was? I think he was literally as in doing what as in previous Italian teams had done. I know that. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है those are moments that will stay with you. And again, मतलब that is inspiration for maybe a team like, say for example, Asian teams हम बात कर रहे थे, that maybe they can take inspiration from. You don't need to be the best all the time, as in it's just that you have to have the mentality, and that is why the best are the best, because they have that mentality on that particular day. And something that which maybe hopefully Asian teams will be better on, African teams will be better on. But again, Morocco, I think, correct me if I'm wrong, they are the last African team left as well, right? So Yeah. that's something that's great. My question for panelists: what do you think Germany should do to do good in 2026? Oof, I think they have a decent set of youngsters, right? But what is missing? I think, I don't know, striker. I cannot see if a young striker who's like coming through from Germany. They need to basically. I think Hansi Flick
he will eventually need to change something, the way that they are set up. He will. I don't think they can score enough goals with the way they have. I don't know if anyone in the panel agrees or disagrees with me, but I think I think Flick uh, needs to get a little bit above his Bayern Munich mentality. exactly. He's expecting the same personnel to do what Bayern Munich does. I don't want to, no disrespect to any German fan, of course, but I feel that when Flick took over, he easily thought it would convert from Bayern to Germany, which is not the case. And I feel he needs to get above that. Number one thing, have a good run up to and in the Euros 2024, because you are the host. If you can gain confidence in that tournament, at least kuch na kuch, you will be able to build on that during No, the, I think they'll be favorites for 2024 because they are the I would host. not. I would not count them as favorites. But if this is the team I'm looking at right now, I predicted if I was called on the show before the tournament, I would have easily said Germany is going out. I have no hate for Germany, but it was for someone like me, it was written. Germany is not going to Yeah, do they were well. not looking good for a while actually. Look at look at the talent. Agreed, बहुत talent है. But for some part of me, I never thought Germany was going to do well this World Cup. Let's see, मतलब we would like to see Germany do well because मतलब talent इतना है ना, तो मतलब I'm like Musiala is probably the unluckiest person on in this World Cup यार. मतलब how can is the way he played him No, going out so early, but going forward, there is a lot of talent like Sane, Musiala, Florian Wirtz, like I said, words, yeah, Havertz. Havertz, But yeah, again, an out and out striker who, like somebody like Miroslav Klose, who's, you can have great wingers, but that one yeah, striker who's just there to yeah, put even the like a champion Mario away. Gomez type, who's just Yeah, there, exactly. there or Yes, yes, thereabouts. yes, Finish, absolutely. that finisher, the poacher Yeah, touch. that finisher. So that they don't have that. I also think that okay, Rudiger is a great defender, but partnering him somehow No, in that is defense. Hansi Flick has got it totally wrong. Nicholas Sule is not even a top level defender in my personal opinion. With all due respect, I don't rate him at all. I'm so glad Yeah, so Chelsea were linked to him and we didn't get him. But I think I have to say this for Mukuku can be that guy. One thing again, Mukuku, वो बहुत ही yes, rigid है. yes, बंदा yes. actually use ही नहीं किया भाई बंदे को कहीं ना But कहीं. he's too young. He's what, 17, 18? Yeah, but But you see, never know. You could have thrown him on to make a difference. yeah, These are the kind of tournaments where people somehow make a mark. But they didn't expect that against Japan, because at 1-0, they thought that the game was The just, game was under wraps. I हम्म. think in the yeah, post, they thought that. I think अरे यहाँ early in शाउट आउट देना चाहता हूँ मैं क्विकली. फोर्सा बारसा भाई, शाउट आउट है एब्सोल्युटली. आपका भी चैनल है यार. आई होप यू आर गुड यार. आई नो दैट लॉन्ग टाइम यू हैव टू डू पेंडिंग टॉक्स, बट लेट्स सी. वर्ल्ड कप इज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल थिंग दिस ईयर टू. या बिल्कुल एब्सोल्युटली. बट अगेन वही है, मतलब अभी यार एज थिंग्स स्टैंड क्विकली यार ऑन द परफॉर्मेंसेज, आई नो दैट राउंड ऑफ 16 में वी स्टिल हैव 4 टीम्स टू प्ले गाइस. But as things stand on performance of the round of 16, will anyone disagree that Brazil and France and England, probably these three are looking like, with all due respect to Messi, who's probably the best player, again as a team, I think Brazil, France, and England, I think for me are really, really Yeah. looking good, यार. मतलब they're uh, there at at एक डिफरेंस लग रहा है ब्राजील, फ्रांस और they're at इंग्लैंड का. level. I feel with Messi, it's always going to be this tournament or any tournament. It's always going to be Messi being better than the other 10 हाँ. players of his team. And somehow, this tournament too, it's Messi has shown why he's still in the reckoning for the best player in the world. I just hope for his sake that Argentina can come up with a plan B game plan, because I'm pretty sure Van Gaal will have Messi covered big Yeah. time in that quarterfinal. अच्छा, ये Messi is good पूछ रहे. We'll just take a couple of questions. People is really late, I know, for the panel as well as you guys as well as me. By the way, कल हम रिव्यू वीडियो भी निकालने वाले हैं. Everyone do hit the bell notification icon और like दबा दीजिए सब लोग. Which are the teams that beat this Brazil side or at least give them a tough fight? Croatia. फतेह सिटी विद क्रोएशिया. चलो, तो क्रोएशिया इज वन आंसर. यार मुझे तो लग रहा है, आई No, डोंट नो only मतलब. Argentina in the Copa. I think only Argentina in the Copa final looked हाँ, better. That game, the I team saw which that gets game. better of the wingers of Brazil have great wingers, but any team who has better wingers, I think probably gets the better of them. Like, would it be fair? Because for me, I think again, like I would go back. Like Yeah. honestly, मैं बोलूँ, अगर फ्रांस का एम्बापे ले लो और इंग्लैंड का आप ले लो, for example, साका, that will be a good balance. Put it that way. That could probably beat Yeah, I that mean, weak one. on paper, Croatia don't really have much of a chance. Like if I look at
the हाँ way things have gone. Like Croatia has that one victory. I think they've had a draw against Japan, a draw against Morocco, a draw against Belgium. Who did they beat? They beat Canada. you know so हम्म, honestly, yeah, it should not be a Croatia win at all. But see, again, for me, the only point for Brazil is how do they deal with adversity. If they deal very well with adversity, then yeah, absolutely, they can, they'll go all the way. But somehow I just feel that, like I said, like Tite, just a very good guy. They've got a great spirit in the dressing room, but they will have to face adversity somewhere, I think, हम्म, in this. And maybe right. it'll happen in the semi-final, maybe it happens in the quarterfinal. But I think that will be a bridge too far for them. Yeah, absolutely. But हाँ मतलब a lot of discussions यार. Again, congratulations to Last Brazilian time, fans. last time Brazil Hmm. faced a Belgium. big European team, Belgium. They Hmm. lost. So I Yeah. actually, even though Brazil might be the best team, most stacked team, I want to see Hmm. them face a big European team because एक they've टेस्ट proved प्रॉपर टेस्ट मतलब. they've cruised Proper. past challenges. Agreed. They will, who knows what happens in that Argentina game if they do play Argentina. I want to see them actually face a Netherlands or a France or a England. I हाँ want to जो see them टैक्टिकल टीम होती है प्रॉपर. a stacked European team versus a Brazilian team. That would be, I think, my test for Brazil. Because the thing with Brazil is they're an amazing team. They've always been an amazing team. They faced Germany the last time I remember in 2014. They got whipped. They faced Yeah. Belgium. They got beaten 2-1. And But 2010 that's what Netherlands. Chinmay. इस बार maybe they're 2010 more Netherlands. prepared. so it's always been amazing, amazing, amazing. European team were not. Hmm. So I want to see Maybe how यार I इसलिए want to see. मेंटालिटी बोल रहे फतेह मतलब आई गेट मतलब अगेन वही है मतलब आई स्टिल फील दैट दे आर मच बेटर प्रिपेयर्ड प्लस रिमेंबर हम लास्ट डांस बोल रहे हैं भाई थियागो सिल्वा का भी लास्ट डांस है एंड ही इज द लीडर ऑफ ब्राजील फॉर ऑल वी टॉक अबाउट नेमार. I think that is much underrated. The guy is a legend, bro. The guy is a legend. I cannot just believe how much, as in, I don't know what is it. It's a coincidence by people like Thiago Silva, Giroud, and people like them, don't get the, praises that they do. I have no idea why. I cannot understand this from football sometimes. And Thiago Silva तो भाई सोशल मीडिया पे भी काफी गए तो आई एम वेरी सरप्राइज विद दैट. आई कैन अंडरस्टैंड सम प्लेयर्स नॉट बीइंग देयर बट एनीवे. हाँ ये पढ़ा था मैसी इज गुड एंड द किवीज भाई. Schlotterbeck, for me, I forgot that guy. Actually, he's a Yeah. really good prospect. Good He prospect. can play left back, he can play center back. बट हाँ डेफिनेटली यार. चलो आशीष भर आशीष यार स्पेशल शाउट आउट है एब्सोल्युटली. और कोई आशीष नहीं, मेसी इज गुड भी काफी लोग मैं देख रहा हूँ. Sagnik, there are a lot of people who have been on my streams, on multiple streams for so long. मतलब that is hats off, bro. Hats off. It's not about my dedication; it's our team dedication. Everyone in the chat, our panel, yeah, panelists have had a very long day, but they still come and spend time. And अभी तो शुरुआत है फतेह. अभी तो और आना है आपको और चिन्मय को भी. But let's see. यार चांस तो दिव्यांश 100% सबको है. लेकिन मैंने बोला ना जैसे हमने पैनल ने भी अग्री किया है दैट फ्रांस, इंग्लैंड और ब्राजील थोड़ा सा. मैं तो नेदरलैंड्स काउंट भी नहीं कर रहा. मैं तो बोलो फ्रांस, इंग्लैंड और ब्राजील थोड़ा सा दे आर लुकिंग लाइक दैट क्रीम वाला quality at this point in time. But again, not always the best teams win. We know that. Uh, assuming they beat Netherlands, I know this is coming. But anyway, much love to everyone यार. हमें भी love दीजिए by liking the stream and remember we will be coming back with a review video in the morning or by noon max. Of course हम आने वाले हैं आज रात को वापस because last two fixtures of this round of 16 is left and then बवाल मचेगा और भी. And of course Messi is good as everyone यार. Thanks a lot for the comments and फतेह, चिन्मय यार बिग अप यार. थैंक्स फॉर कमिंग. देखते हैं कल परसों हम मिलेंगे जब भी व्हेनेवर यू आर फ्री. बट लास्ट वर्ड यार ओवर टू फतेह. क्या बोलोगे? व्हाट्स योर Last फील लाइक? words, so far the round of 16 hasn't had a lot of drama, I think. So I hope tomorrow we get a lot of drama, like ओके विद penalties, red दैट cards, yeah, fights, whatnot. and that includes Chinmay's as in Ronaldo. Let's be honest, Ronaldo है तो ड्रामा तो होगा. I hope red card ना हो रोनाल्डो के साथ, but I hope एक penalty shootout हो जाए. One penalty shootout tomorrow. I predict हाँ. one of the two games, one penalty Yeah, shootout, and I hope it yeah. अच्छा happens. बाय द वे मेरा I अभी don't तक want चेंज नहीं किया मैंने. I मेरा don't वही want है to. पोर्चुगल टू विन द वर्ल्ड कप. अभी तक मैंने चेंज नहीं किया है. Just saying. Let's end with that. I know it's I ironical, but that's how it honestly, is. listen, no disrespect, but honestly, जो भी टीम अगर अगर यहाँ से पोर्चुगल, स्पेन, इंग्लैंड या फ्रांस अगर जीत जाती है, they will have deserved the World Cup, whatever you say, because they will have to go through one of each other in the first rounds.
then go through, probably again the France, the whole thing, and then face maybe an Argentina, Netherlands, or Brazil in the final. So if you win it from this side, I think it would be one of the greatest runs in World Cup history, because having a look from the quarterfinal now, quarterfinal, semi-final, and final, the only from this part of the bracket, only tough teams are coming up, so it would be a deserved win. या अच्छा बाय द वे सब लोग मैं एंड करने वाला हूँ स्ट्रीम यार बिफोर एंडिंग प्लीज चेक आउट माय इंस्टाग्राम अकाउंट नीचे है लिंक गिव मी अ फॉलो बिकॉज यू हैव अ चांस टू विन अ फ्री जर्सी देयर इज अ प्रेडिक्शन कॉन्टेस्ट गोइंग ऑन इन फैक्ट इट्स अ प्रॉपर गिव अवे नो इन्वेस्टमेंट नथिंग भाई चाहिए फॉलो करिए प्रोसीजर एंड put up a story of your predictions as well you will win a free jersey जो मैंने already ले लिया है hopefully we see you tomorrow everyone and अभी के लिए good night congratulations Brazil of course congratulations Croatia लेकिन यार हारनी तो दो टीम तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम चलो मिलते हैं सुन सी यू गाइस ऑलवेज अ फैन चैनल फॉर टू सी